right if I can get an audio check.
setting up my stuff here. This camera I can hide, I think. I think this looks good. Let me see if YouTube is okay. We'll get started around 1 o'clock, guys. I'm just setting up my stream. So I got a few guys coming in person, and we'll figure this out shortly. Audio is coming through what? Audio is coming through what? Settings. Audio. You guys can hear me okay? Testing. We'll get started around 1 o'clock, guys, with your questions and everything else along the lines. Okay.
मैं देख लेता हूँ। पेमेंट हो गई इनकी 3 महीने इनकी फाइलें करनी है अकाउंट पे रिन्यू करना है अभी। अच्छा इस पे भी वो ऑप्शन ही डालें जो मैं आपको दूंगा ना। ठीक है आज मैं करता हूँ। तो उसका कर दें फाइलें कर लें। तो ये अब चलेंगे कब मंडे को? ये अभी चलवा देता हूँ ना थोड़ी 10 मिनट्स में। ठीक है। तो अब इन्होंने ज्वाइन कर लिया तो इनको दे रहे हैं हम क्या दे रहे हैं 3 महीने चल लाइव है। हाँ तो जो सैटरडे का पैकेज है ठीक है कि सैटरडे को जो मैं ला देता हूँ आपको। हाँ नहीं पेमेंट इनकी कस्टम हुई हो गई है मैं आपको फ़ोटो भेज ठीक है नो प्रॉब्लम। मुझे आप इनका नहीं अभी क्या करते हैं सिर्फ फाइल नहीं है निंजा शिंजा फाइलें नहीं है ना। नो प्रॉब्लम फाइलें मुझे निंजा हो जाएगा। नो वरीज। इसका फिर ये ऐसे क्या मंडे को आ जाए? नहीं शिक आए कि नहीं क्योंकि अभी ना इनकी आई क्लाउड ड्राइव बंद करें ये मंडे आ जाएं मीन वाइल वीडियोज़ देख लें वो गायब है ओके पहले आ गई नहीं है। नो चलो क्योंकि ताकि इनकी आई क्लाउड करवा के ना ठीक है तो आप सेट कर देंगे और मुझे फिर सेट बता दें इनकी एक्सपायरी क्या सेट करनी है अकाउंट नो प्रॉब्लम। Let's see if I can move this to a new open a new container tab. Show fried areas view show उसको म्यूट कर लेना एक बार। मैं उधर आता हूँ। First time I did it? Yeah. Okay, no problem. जी sir. No, I'm good, thanks. So just get started in about 5 minutes. Yeah, meanwhile I'll give her do. Sure. Right. All right, guys, if I can get an audio check on YouTube, TikTok, Telegram, yes, you can send me a WhatsApp or, I don't know, the number is 647-228-0694.
that screen. Thank you, Ji. Audio is okay, Ji, on TikTok? Is everything is fine? No problem. So we're broadcasting on TikTok today, Instagram, Telegram, and YouTube. 4 particular platforms. Because I don't have a moderator, so I'm going to turn off the comments on here that normally people come in. Hello, Ji. Welcome. Anywhere. No problem. Yes. Now, first time आ रहे हो? last week से वो आ रहा Okay, मिलेंगे. सेमिनार तो पहले सुना होगा शायद मेरा कि नहीं? नहीं मेरा आई आपसे ही मिलने अच्छा नो प्रॉब्लम थैंक यू मैंने गाड़ी देखी ट्रेडर थी लेकिन मैंने ये नहीं की होगी ओह नो प्रॉब्लम अभी बस 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं क्विक क्वेश्चन आपसे कि ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है मैं ना जो डैनियल है ना अपना मकसूद साहब हाँ जी उनका पुराना खिलाड़ी उनके साथ अच्छा साथ तो नहीं था ठीक लेकिन जिसको जानते हैं उनको जानते मुझे ना ऑलमोस्ट 20-25 साल हो गए ये ट्रेडिंग करते हैं ठीक है वेरी नाइस और क्वेस्ट ट्रेड है ना क्वेस्ट ट्रेड हाँ जी ये फंडेड अकाउंट तभी आया ना हाँ ये तो अभी 2023 में मेरे पास था प्रॉपर अकाउंट क्वेस्ट ट्रेड के साथ ओह नया थे जानना अच्छा अच्छा तो उनके साथ मैं करता था ठीक है लेकिन मैं फिर वहाँ क्या हुआ था उन्होंने ना मैं करता हूँ स्टॉक्स ठीक है तो समझ मैं मार्केट में करता था फिर लिक्विडिटी ओ वेरी नाइस यार क्वेस्ट ट्रेड के साथ आपसे तो अच्छी डिस्कशन रहेगी हाँ भैया आपका एक्सपीरियंस है ओके वेरी गुड तो क्या मैं आपका ना क्योंकि ऑडियंस उस तरह का हो ना तो मैं उस तरह की कॉन्वर्सेशन में ले जाऊंगा रेदर देन कि आपको एक्सप्लेन करूँ ट्रेडिंग है क्या कई दफ़ा तो बिल्कुल बिगिनर्स आते हैं ना उनको बताना होता है यार 22 साल क्या है ये सारी चीज़ें तो वो पहले क्योंकि ये जो सेमिनार है हर सैटरडे में लगाता हूँ और नो प्रॉब्लम लेट्स गेट स्टार्टेड सो जस्ट इट डज गो नॉट ऑल द टाइम लेकिन इस वक्त जा रहा है ये तो इस वक्त हाँ क्योंकि हम लोग इस वक्त आज 4 प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहे हैं तो आप मैं भी डैनियल के साथ ही काम करता हूँ I know हाँ that. ना But अच्छा I never met you there before. ओके ओके नहीं मैं अब उधर ही बैठता हूँ हाँ, मैं मुझे पता है। 2023 से उधर बैठता हूँ सो अभी 4 साल हो गए हैं तो नो प्रॉब्लम आपको अपने बारे में बताते हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन करते हैं तो थैंक यू फॉर कमिंग इन गाइस फॉर इन पर्सन और थोड़ा सा आपको फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दूं अपने बारे में देन आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट इन केस आपको कोई क्वेश्चंस हों ये नंबर ले लें या कि बाद में कोई चीज़ मैं मिस कर जाऊं कोई चीज़ आपने क्लैरिफिकेशन करनी है तो नाम है मेरा राफे RAFAY और मेरा फ़ोन नंबर है 647-228-0694 सो जस्ट इन केस कोई चीज़ भूल जाऊँ ट्राई टू कवर करूँगा एज मच स्पेशली आप दोनों का एक्सपीरियंस है तो एक्सप्लेन करूँगा मैं क्या हूँ क्योंकि स्पेशली हम लोग स्किप कर सकते हैं अगर कोई आ गया जिसको बिल्कुल ही ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता so I'll rewind and start. So today is Saturday, May 2nd, 2026 and मैं अपनी presentation हर Saturday की
तो हिंदी उर्दू में कोई मसला तो नहीं है ना, क्योंकि वो कई दफ़ा होता है आ जाते हैं ऑडियंस, और क्योंकि हमारी ये साउथ एशियन ड्रिवन कम्युनिटी है, कई दफ़ा होता है कि वो कहते हैं यार आप तो वेव कर रहे होते कि हमें समझ कुछ नहीं आ रही, तो मैं पहले पूछ लूँ कि मेरा टाइम ना ज़ाया। हाँ नहीं नहीं, ऑनलाइन हम उतनी टेंशन नहीं पे करते, जिन्होंने सुनना हो इंग्लिश ओनली भी सेमिनार सुन सकते हैं, देखिए मैं तो 3 साल से ये कर रहा हूँ। सो ऑलराइट गाइस, सो मैं हमेशा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अमाउंट ऑफ मनी जितना मूव होता है ऑनलाइन डे ट्रेडिंग में, $23 ट्रिलियन है, तो कोई 1000 बनाए 500 बनाए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 10,000 भी बनाए। थोड़े से डिस्क्लेमर्स हैं, डिस्क्लोजर हैं जो मैं पढ़ता हूँ हर सैटरडे को। थैंक यू फॉर कमिंग, आज आने के शुक्रिया। इसमें आई नो हार्ड टू रीड है, लेकिन 3 मेन चीज़ें कवर करना चाहता हूँ कि यार मैं आपके अकाउंट मैनेज नहीं करता, मेरी कंपनी नहीं मैनेज करती, विन लाइफ टाइम नहीं करते, हम आपके पैसों को टच नहीं करते, हम आपको ये नहीं बताते यहाँ इन्वेस्ट करो इससे पैसे निकलेंगे, कुछ ऐसा नहीं होता। आपका पैसा आपके पास रहता है। हम क्या हैं, कुछ टूल्स बनाए हैं जो डैनियल ने और हमने उसको इम्प्रूव किया है उस टूल पे। सो ये एजुकेशन बेस्ड कंपनी है, और कुछ नए ट्रेडर्स हैं जो इसको सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग को, तो ये हमारा मेन पर्पस है ना। हम आपको फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं तो अपना लेके चलते हैं। तो एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग कंपनी के तौर पे हमने इसको चला रहे हैं, क्योंकि लीगली विदाउट लाइसेंस आप यही कर सकते हो। अगर आपने किसी को फाइनेंशियल एडवाइस देनी है तो आप लाइसेंस ब्रोकर बनो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एग्ज़ाम होते हैं। तो हमने चूज़ किया इस साइड पे रहना, क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। आप क्या कह सकते हो क्या नहीं। हर सैटरडे 1 बजे स्टार्ट कर लेता हूँ, पिछले 3-3.5 साल से करता आया हूँ डिफरेंट ऑफिसेज़ में। 3 बजे थोड़ा सा यहाँ रश शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कुछ अरसे से, उनके टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं यार, डाइवर्जेंस क्या होती है, मूविंग एवरेज क्या होती है। तो 3 बजे हम ज़रा थोड़ा सा एडवांस में काम टेक्निकल में चले जाते हैं। फंडेड अकाउंट का किसी ने पूछना होता है यार, एपेक्स को कैसे निकालें, लूसेड से कैसे पैसे निकलते हैं। तो 5 घंटे में चलाया, लॉन्गेस्ट मैंने इसको 9 घंटे भी चलाया, डिपेंड करता है ऑडियंस कितना बैठा है, क्वेश्चन क्या है एक्सेट्रा। और आज भी सोशल मीडिया पे जा रहा है, टेलीग्राम, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और सारा। और ऑफ कोर्स स्क्रिप्टेड थोड़ा सा है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन के, लेकिन क्वेश्चन आंसर में ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है। डोंट फ़ोन कर लेनी है, बस स्टेप आउटसाइड कर दें, वॉशरूम है, ताकि वो फिर मेरा ट्रेन ऑफ थाट ना ख़राब हो जाए। तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, 46-47 का होने वाला हूँ, और ये काम में कनाडा में आया था 96 में अपने पेरेंट्स से। तो 30 साल होने वाले हैं। पेरेंट्स मेरे फादर मूव हुए इधर मिडल ईस्ट से, तो इमिग्रेशन उनको मिल गई किचनर वालडू के साइड पे। और मेरे फादर का मेन बिजनेस कारोबार तो नहीं, जॉब रही है फोर्कलिफ्ट को रिपेयर करना। तो होता है एक इंडस्ट्री उसी में रहे हैं, तो अगर उनको कभी कोई क्वेश्चन फोर्कलिफ्ट का हो तो उनको सारा पता है। तो वहाँ पर ग्रो अब हुआ किचनर वालडू में, और फिर मेरा दाखिला हो गया कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज में एज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एनालिस्ट के प्रोग्राम में। तो ग्रेड 9 यहाँ से किया, ESL में लगे रहे, क्योंकि आप 16-17 साल में आते हो तो यहाँ की बोर्ड नहीं है, तो इंग्लिश पहले सीखनी है। ESL किया, ग्रेड 9 किया, ग्रेड 10 किया, 11-12 किया, कैमरन हाइट्स से मैंने लिया। उसके बाद कॉलेज चले गए। कॉलेज किस प्रोग्राम में गए, क्योंकि ग्रेड 10-11 में ही पता लग गया था यार सॉफ्टवेयर राइटिंग में मेरा इंटरेस्ट है, IT में है। तो कुछ लड़के गए हार्डवेयर में, मेरे कुछ दोस्त, और कुछ मैं चला गया सॉफ्टवेयर में, और इस साइड पे यूनिवर्सिटी की जगह हम गए कॉलेज में। और लकी इनफ जो मेंटर्स थे, जो टीचर्स थे, इनफ सिखाया कि वहाँ उस वक्त लोकल कंपटीशन होते थे हाई स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, सिटी लेवल, स्कूल लेवल। उसके अंदर मुझे मौका मिला कनाडा में गोल्ड मेडल लेके सॉफ्टवेयर राइटिंग में, डेटा एनालिसिस में। उस वक्त का जो 26 साल पहले ये सारा काम था। तो मैं लकी था कि बहुत अर्ली स्टेज से सॉफ्टवेयर में चला गया, और उसके मैंने फिर एवोल्यूशन देखे, ब्लैकबेरी का सॉफ्टवेयर देखा, लाइक आईफोन के देखे। तो मैं सॉफ्टवेयर में एटलीस्ट 2 डेकेड से काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा इसका बैकग्राउंड है। तो ट्रेडिंग उस वक़्त जब मैंने स्टार्ट की, तो ट्रेडिंग की जो फॉर्मेट था ना, वो बड़ा क्रूड था। क्रूड का ये है कि
आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाते हो, आप स्टॉक्स लोगे, उससे पीछे चले जाएं, लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अखबार में आता था यार माइक्रोसॉफ्ट की वैल्यू क्या है, शेयर मार्केट प्राइमरी होती थी। एनीवे तो हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स लिए, एज ए हॉबी हम काम ये कर रहे थे, और हॉबी में हमने एक स्टॉक ख़रीदा हांगकांग की कंपनी का alibaba.com, वहाँ गए, फ्लाई किया हांगकांग में, IPO जब आया हमने 20-30 हज़ार डॉलर US साथ ले गए। अब देखें IPO कहाँ खुल रहा है, हांगकांग में, एक्साइटमेंट है, न्यूज़ आ रही है, इंटरनेट, वेब क्रॉलर था, नेटस्केप था, नई नई चीज़ें खुल रही थी, इंटरनेट था, तो एक्साइटमेंट थी कि यार इस मार्केट को स्टडी किया, लेकिन ये मेरा मेन बिजनेस नहीं था। सो हुआ ये कि इसको पढ़ते पढ़ते फिर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में चला गया। प्रोग्रामिंग चिप्स के अंदर सॉफ्टवेयर डिफरेंट टाइप्स का होता है, और डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ के अंदर मैंने सॉफ्टवेयर में काम किया है। लेटर देखिए, सैटेलाइट से जो सिग्नल आते हैं उसकी लोअर नॉइज़ ब्लॉक के अंदर क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रीक्वेंसीज चल रही होती हैं, ट्रांसपॉन्डर क्या होते हैं, वो मैंने एक 10 साल उस इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद के आपके जो LNB के नॉइज़ ब्लॉक्स होते हैं उसकी स्विचिंग कैसे होती है, तो अगेन हार्डवेयर मिक्स, हमारा काम सॉफ्टवेयर का था कि AVR के कार्ड्स कैसे प्रोग्राम करने हैं, Xbox के चिप्स को कैसे, तो प्राइमरली मशीन लर्निंग और वो सारा कुछ नया नया डेवलप हो रहा था। फिर लेटेस्ट काम कुछ सैटेलाइट रिसीवर्स पे भी किया। आजकल आपके घरों में IPTV का बॉक्स चलता है, तो लास्ट तो अगर 26-25 साल तो 10 साल सैटेलाइट में, फिर उसके अगले जो 10 साल थे वो मोस्टली कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के सॉफ्टवेयर पे काम किया कि डेटा सेंटर कैसे चलते हैं, आप सिग्नल ये कैमरे का कैसे लेते हो, उसको अपने घर कैसे पहुंचाते हो, उसकी एक पूरी एक ना इकोसिस्टम है। जिस तरह आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, यूट्यूब है, घर में IPTV का बॉक्स है, तो एक 10 साल का स्पेल इस इंडस्ट्री में रहा। कोविड आ गया, चीज़ें मैंने डिफरेंट बिजनेसेस वेराइजन के साथ काम किया, बड़ी हाई विंड्स के साथ कॉन्ट्रैक्टिंग में रहा। तो कोविड के बाद कुछ नहीं था, मैंने घर बैठे हैं, कुछ क्या करें भाई, तो ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ा सा ज़रा इंटरेस्ट लेना शुरू कर लिया कि अब बाहर ना जा सकते हैं, ना प्लेन उड़ रहे हैं, ना पर खाना कर रहे हैं, ऑनलाइन देखते देखते एक दिन मैं 410 पर ट्रैवल कर रहा था, तो कंपनी का ऐड सुना विन लाइफ टाइम का, और डैनियल भाई का ऐड आया। उन्होंने कहा यार मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ, कोई भी आ सकता है, 10 साल का बच्चा भी आ जाए तो मैं सिखा दूँगा, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। अब वो इंस्टीट्यूट 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था, और वो इसी तरह का निंजा ट्रेडर, फ्यूचर्स, ये सारी चीज़ें फिर हमने 5 साल पहले मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया ज़रा सीरियस तौर पे, क्योंकि ठीक है अपने काम चल रहे हैं, आप कंसल्टेंट हो, आप कितना सॉफ्टवेयर लिख लोगे, कितनी आपके पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स फिनिश करते हो, फारिग बैठे होते हो, आप स्टडी कर रहे होते हो कि यार। तो 5 साल पहले अराउंड 21-22 में मैं सीरियसली इस फील्ड के अंदर स्टडी किया, यार ये फ्यूचर्स की ट्रेडिंग क्या होती है। स्टॉक्स की देखी थी, ऑप्शंस की देखी थी, थोड़ा बहुत क्रिप्टो का पता था, लेकिन मैं सीरियस नहीं था। तो 2021-22 में कोविड के बाद जब इसको पढ़ा कि यार अच्छा डैनियल भाई की जाके मैंने प्रेजेंटेशन ली, मुझे समझ आ गई कि भाई हो क्या रहा है, फ्यूचर्स की ट्रेड क्या होती है। आप सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहे होते हो, आपने अंडरलाइंग एसेट बाई नहीं करना होता, आपने सिर्फ ये प्राइस पे बेट करना है कि प्राइस ने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, और आपको सम सॉर्ट ऑफ रिवार्ड मिल जाता है। प्राइस ऊपर जाएगी पैसे मिल जाएंगे, नीचे जाएगी शॉर्ट करोगे पैसे मिल जाएंगे। ना मुझे उस तरह पूरा एसेट ख़रीदना पड़ना है, और हमें क्या एज ए 5 साल पहले अच्छा लगा यार कि इसमें आपको रिटर्न का वेट नहीं करना, इंस्टेंट हिट आती है ना, आपने ट्रेड डाला 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के बाद आपको रिवार्ड मिल रहा है। स्टॉक्स में भी अगर ऑप्शंस कर रहे हो तो यार अगर फ्राइडे मॉर्निंग लोगे तो लेटेस्ट 4 बजे देखोगे एक्सपायरेशन क्या है, मेरा प्रीमियम कितना चेंज हो गया, मैंने 20 सेंट पे लिया, अगर 22 सेंट भी प्रीमियम हो गया तो अगर $200-400 निकल आते हैं, लेकिन 1000 का रिस्क लगा हुआ है, 1500 का रिस्क लगा, 1200 का लगा, अगर प्रीमियम की वो प्राइस नहीं आई इन द मनी एक्सेट्रा, फिर भी मैंने देखा यार ऑप्शंस हर बंदे की बात नहीं है, वो ख़तरनाक से ज़्यादा यार सिखाना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता हूँ मैं कर रहा हूँ, चलो मैं IT का बंदा हूँ, सीख जाता हूँ, स्टॉक्स भी पढ़ लेता हूँ कि यार डिविडेंड्स क्या होते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होती है। जब मैं कर रहा हूँ
तो मेरे इर्द गिर्द वाले कहते हैं यार क्या तुम करते हो, वो एक किसी को बताना ना कि आप करते क्या हो ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडर के लिए ना सबसे मुश्किल काम है। आप देखें एक्सपीरियंस है, रखते हैं, आपके साथ कोई बैठा ना तो वो शायद बोर हो जाए। इस फील्ड में ये वाली ट्रेडिंग है, स्पेशली फ्यूचर्स की, मैं किसी को भी पकड़ सकता हूँ आज और मैं बता सकता हूँ यार कुछ भी उठा लो, गोल्ड उठा लो, नैस्डैक उठा लो, ES उठा लो, ये गोल्ड की 1 आउंस की बार है, आज की प्राइस निकाल लेते हैं, 30 सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद पीछे। तो ट्रेडिंग के अंदर मुझे सबसे अच्छा लगा फ्यूचर्स की ट्रेडिंग। हाई वॉलेटाइल था, हाई रिस्क हाई रिवार्ड था। ये बड़ा एक्साइटिंग होता है कि भाई हमें ऑप्शंस के लिए एटलीस्ट कैपिटल गेन बचाना है तो 3 मंथ वेट करना है, 3 मंथ मैंने होल्ड करना है, और फिर होता है रोज़ देख रहे हैं अर्निंग अच्छी आई है कि नहीं, अभी ये होगा वो होगा। और एक मसला ये था कि उसके अंदर यार आपका एक तो वेटिंग टाइम ज़्यादा और एक कैपिटल लगा हुआ है। अगर आप एप्पल के स्टॉक ले लो, आज 200-250 पे ट्रेड हो रहा है, तो कितने ले लोगे? ठीक है, आपको रिजर्व कैपिटल चाहिए, आपके पोर्टफोलियो अगर तो आपके पास नहीं है $1,00,000 का तो आप कहीं पहुंच नहीं पाते। रिटर्न्स की ग्रोथ ज़रा स्टेडी है लेकिन स्लो है। आपने ठीक है, आप अपनी जॉब कर रहे हो, साथ में डाल दिया अमेज़ॉन में, S&P पे, नास्डैक में कोई CFD ले ले, EFT ले लिया, गोल्ड की EFT ले ले। जब फ्यूचर्स मुझे ज़रा हिट हुआ ना, मैं कहा यार ये तो काम बहुत रिलेटिवली आसान है। आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो, अंडरलाइन एसेट लेते नहीं हो, प्राइस की डायरेक्शन पे सिर्फ प्रोडिक्ट कर रहे हो, आई डोंट केयर, और 5 बजे तक आपको ट्रेड से बाहर निकलना है। ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना कि 5 बजे आपकी पोजीशन ने क्लोज होना है। अगर आपके पास मार्जिन नहीं है और अगर आप सिर्फ कैश पे डील कर रहे हो, तो आपने एक ट्रेड लिया गोल्ड का, आपके अकाउंट में $1,500 थे, आपने माइक्रो लिया या मिनी लिया, आपने बाय और सेल किया, प्राइस का डिफरेंस रखा। तो हमारे लिए हमारा जो गैंग था 6-8-10 लोगों का था, हमने कहा यार ये तो काम ज़्यादा आसान है, कुछ इन्वेस्टमेंट उस तरह नहीं है लेकिन उसके रिटर्न्स। अब आप मुझे बताओ, स्टॉक्स पे एक परसेंटेज लगाओगे कि यार मैंने स्टॉक लिया था 250 का, वो हो गया 272 का, $25, मेरा ये रिटर्न आया। कौन सा दुनिया, आपको तो पता है ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स में आप कैसे किसको बताओगे कि रोज़ डबल हो सकता है? मीनिंग कि 5% डेली निकल सकता है। अगर आप उसको प्यार से खेलो तो रिटर्न ज़्यादा थे। तो मैं उधर गया, मैंने डैनियल भाई से बात की, मैंने देखा, मैं कहा यार डैनियल भाई मुझे इस बिज़नेस में आना है फुल टाइम, ओवर टाइम, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए इस बिज़नेस में आ रहा हूँ, बाकी बिजनेसेस चलते रहेंगे। उनसे बात हुई, आज मैं उस बिज़नेस का हिस्सा हूँ और मैं उसको फुल टाइम चला भी रहा हूँ, तो उनका पार्टनर हूँ। तो इस वक्त 2008 से वो चल रहे हैं और हमने फिर एक थोड़ा सा ना उस बिज़नेस को मॉडिफाई इस तरह किया कि जब वो उन्होंने शुरू किया था 2023 तक ना, ये बिज़नेस ज़रा, इसलिए मैं एक चीज़ ज़रूर लिखता हूँ, ये बहुत ना एक पिवटल पॉइंट था हमारे इंडस्ट्री का। 23-22 में ना, अगर आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आना है तो आपके पास यार $5,000 तो हों। कोई यार आपका 2,000 का अकाउंट होगा, 2,500 का अकाउंट होगा, 1,500 का अकाउंट होगा, और अगर आपको फ्यूचर्स की जो स्लोप है या हिल है उसका नहीं पता तो अकाउंट ड्रेन बड़ी जल्दी होता है। ठीक है, आप उस वक्त तो माइक्रोब्स में नहीं होते थे, पीछे जाते जाओ मिनी होता था, आपने एक S&P, लेकिन मार्केट स्लो थी, मार्केट पूरे दिन में 20 पॉइंट मूव होती थी। आपने 2010 की देख लो, पीछे जाके डेटा हल्की सी मूव हुई, आपने यहाँ से एक लिया, $150 लेके बाहर आ गए। लेकिन अगर किसी ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आई, तो आपके 1,500, 2,000, 5,000 बड़ी जल्दी उड़ जाते हैं। फ्यूचर की मार्केट में आपने लगाया, थोड़ी सी स्लिप हुआ आपका अकाउंट, क्योंकि फ्यूचर्स की ट्रेड में आपके पास 2 एलिमेंट होते हैं यार, एक टाइम होता है, एक मनी होता है। या आपका 5 बचेंगे या आपके अकाउंट में पैसे ख़त्म हो जाएंगे। इसकी हेलो जी, आ जाओ, आ जाओ। हेलो जी, हाँ जी, नो प्रॉब्लम, आ जाए, हाँ जी, बैठे बैठे, एनी ग्रैब अ सीट एनीवेयर, एनीवेयर। सॉरी, English, okay, sorry, okay, 5 people, somebody watching in English. English वाले seminar already हो चुके हैं, but it's okay, no worries. So I'll stick to. 6 people they want only in English. Okay, I will switch back. Switch to English. All right.
do I go back and start over, or do I, anyway. So futures trading is primarily, your idea is that either you will run out of money, either you will run out of time. It's very difficult for somebody. You have any trading experience? No. No trading. So no worries, no worries. So let's say I bring him on board. I want to teach him how to trade futures. It is scary for a day one for a person to bring him on board, open up an account, put 5,000 in it, and he's like, no, this is gonna be slippery. I could lose all my 5,000 in a matter of seconds, or whatever it is, the amount of money, right? Or 5 o'clock could come. So 2023 was a pivotal point because two main things happened around there. We use a platform called NinjaTrader, right? NinjaTrader had a major upgrade. And the second thing was the NinjaTrader opened up some APIs and TradeAway along came in. So there was a lot of moving changes, like a lot of continent shifts were happening where NinjaTrader opened up and the idea of prop firms came into the picture. Very heavily, Apex, Bullnox, FTMO was already there, but they weren't doing futures, and they still don't do, but thoda jo risk ka element tha na, that kind of started to go down. Today, 2026, we are in the first May, right? I can bring him on board. I can show him the software. Algorithm is going to do the work. He just has to watch the algorithm, AI-based, which is collecting thousands of data points. And all he has to say, price is going to go up or down, right? Where we come in is we babysit him. What is babysitting? Somebody, he's not going to trade alone. That's impossible. Thoda sa inko teach kar diya. So a lot of like the teething pain has gone away. Today, zero experience, like him, install the software. Software does the magic. You come in, you pick a market, gold, NASDAQ, S&P, crude oil, natural gas, 15 markets. And all you have to do is just predict which way it's going to go down, up or down. We have expert supervisors, mentors we call them. They're sitting. They're analyzing the markets along with you. And then they're giving their, not recommendation, analysis. So they're saying, all right, price is coming to this. I'm going to go short from there. Price is coming this, I'm going to go. So I took this concept and I turned it around to be a little bit, I would say, it's kind of modeled it towards new users who can come in now, who can, because what, I have a big, so now the organization has grown significantly in the last 3 years. So there was a steady growth for Daniel, 2008 to 2023, but then a bit of an explosive came because what happened was you had prop firms come in, AI came in, Ninja A came in, a lot of coding came in, a lot of youth came in, market grew. So now we have 2 offices. We have a staff of 4 people, and we do this professionally now. Not a hobby, and he was always doing it professionally, but now we are running into some really, for you, good news is, sir, anybody can learn this today. Futures trading, you don't need a lot of experience. You don't need to have a finance degree. You don't need to have, what do you call it, an economics degree. You don't need to have any kind of a license even. It's unregulated industry, especially in the prop firm space. And we have a saying in the office, you can breathe, we can teach. Like I said earlier, when the whole trading evolution started, if you weren't somewhat technical or somewhat a little bit of finance person, this was a little difficult for you because you had to read some curves, some trends, some, you know, a little bit technical. But now with an AI, now with the
a lot of where you don't have to invest your capital. Things are easier. So it brings me to a point is, all right, Rafay, you're doing a seminar here. It's great. We like you. We show us how the software is. What's the purpose behind it? There's a very crucial purpose behind what we do and what my intention is behind all of this. So the burning question for everybody is, which I get trolled every single day, and people will come and make a comment, and the comment goes like this: if they're such a great trader, if they are great trader, all right, they should be hiding their strategies in a vault, and they should not be exposing it to a public. They're like, if they're a great trader, okay, he figured out a secret on how the market moves, and he has a strategy, and that strategy should be kept in a, hidden हो ना कि यार आपके पास जो है ना मुझे ना पता लग जाए कि आप पैसे कैसे कमा रहे हो. But here's the problem though. We have 12,000 active traders using our system globally, daily. Middle East, since 2008. It's not a huge community, by the way, by any chance. There's people with 100,000 users. There's people with 200,000 users. Now we are coming to a point where we need to expand faster. So I'll tell you a reason for us to do these seminars. I'll tell you a reason for us to do this. I want you part of my community. I want you part of my community. I want you part of my community. There's a reason for it. Why? If I buy something, first of all, let me make it easy. Any other business in the world requires you to be very secretive. The word is called a trade secret, a business secret. Let's say you want to open up a restaurant and you have a recipe. Last thing you want is to make sure nobody copies your recipe, because then you will lose the edge, right? You're a good real estate salesperson. You have certain sales tactics. You want to not replicate it. You are in a trading business of buying and selling something. You want to make sure nobody knows your suppliers. So you're a good accountant. You want to make sure whatever trade secrets you have, you guard it. You're like, oh man, I don't want anybody to know what I'm doing, because then they'll create a competition. So sometime even in a commercial real estate plaza deal, they'll say, I want to open up a cell phone store here, but can you please don't allow anybody else in this area to make sure that I don't have a competition for a restaurant, for a real estate office, because otherwise it becomes chaotic. If you have, like Ridgeway Plaza is different, everybody goes there for food. Back home, there's certain like a book like shops where everything is similar. But the idea is every business in the world has a trade secret and they don't want to expose it. Trading, on the other hand, is the only business that if you hide, you will die. So if I take a trade, you know what Elon Musk says? The moment he buys Dogecoin, he says, oh my God, I bought Dogecoin. The whole idea is to announce it to the world, your trade. Because that has a very powerful, what we call it a hive effect. So, there's 4 reasons to these questions. Number 1, yes, I use, so the word is personal use. I use the software that I will show you, I use it day to day to analyze the markets. It's a tool that I've built along with other developers. You can call them indicators, you can call them tools, you can call them data analysis, it doesn't matter what you call them. And so we have built it, we use it. You will see us using it. Number 2, I will let you
lease it or buy it. Simple. I built something. I want you to have it, just like a tool. If you want it, you can either lease it from me, my tool, or you can buy it from me. It's a service that I'm providing you, and I'm charging you money. So if I teach you, this is just an educational platform. Third point is, today in 2020, after 2023, a lot of people now can get into trading using our tools much easier. Because if you look at the history of trading, you need to think a lot. You need to have a lot of screens. You need to be able to do some analysis, looking at charts and candles and patterns and VWAP and MACDs and et cetera, right? And Bollinger Bands and divergences. And then it was a very complex field. And then if you talk to a trader, they're with a suit and they're talking very fast. It'll open up CNBC, open up CNN, open up any Bloomberg. Their voice is like, come on, man, I don't understand half of the language, right? So they're talking in a lot of technical things, and it is fading away with the power of AI, with the power of computing. Now these tools are becoming available to a lot of retail investor, a lot of retail. So when you are inside that, where I want to bring him in and he has no trading experience after 2023, I can say, hey, I use this tool. Would you like to use this tool? I'll teach you how to use this tool. Tool is going to do the work. I just have to show you how to use it. And then I make money from that too. So that's it. And the fourth and an important aspect of this is, the word you will see is called hive trading. This is becoming a very popular term out there. And a trader either works with a hive, so every trader in the world belongs to a hive, belongs to a community, belongs to a group where the leader or the queen or whatever, they do an execution of a trade, they announce it to the public, and all the honeybees kind of start to take that trade. So the idea is you may be listening to a online podcaster live 9 o'clock tomorrow morning. They're reading the charts, they have the tools going, and they say, guys, I'm going to jump into this trade, and I'm going to take a trade, and I'm going to short gold and $4,600. So this is an evolution of internet, AI, technology, tools, and now they're reaching in your home. So you have a queen, and then thousands of traders are along the line listening to somebody. You may have your own favorite influencer. You may have, but a trader cannot survive alone in the market because you need some sort of confirmation. You need some sort of like second opinion. You need to see where the other traders are trading, what type of things out there. So if I don't invite more people into my hive, it helps both of us. Not only I make money from it, but it improves something called the prediction rate. So you have to very understand how, so I will write the word called Algo. Algo stands for algorithm. What is an algorithm? It's a prediction model of some sort. And you have TikTok has algorithm, you have Facebook has algorithm, YouTube has algorithm, your GPS has algorithm, your car has an algorithm, your phone has an algorithm. Algorithm is just a bunch of computer instructions we give, and then it just does some calculation and gives you something that could happen. So these days, with the power of cloud, meaning internet connections, with the power of bandwidth, meaning that how fast I can send information between this node. This is like a 1 server, 2 servers, 3 servers, 4. How fast I can send you, that's the bandwidth speed. How fast I can transmit my signal to you, how fast I can do this,
How accurate I am is the algorithm or the prediction. So these days, there's a race, there's a literally race to see how big your hive can get. The bigger the hive, the better the outcome is. So as a trader, as a influencer, I'm not an influencer, I'm just an educator, as a mentor teaching you, the more people join my hive, the better it becomes for my algorithm. So since last 18 years, our algorithm has been predicting something. Okay? So that we predict, every single day we predict something will happen. So on the radio, I call it that if you open your phone, you have a weather app. Every person uses it. What is happening here, you look at the weather for today and you say, all right, it's as low as 1 degree and as high as 8 degrees. So you prepare your day based on this information. You say, I need a bit of a jacket, maybe. If it's cloudy, maybe I need rain umbrella. So you are making that decision in your life based on an algorithm model of weather system. So how is that in the back working? They have some sensors, they have some wind pressure like equipment, and then they're sending it to your phone, and it's so instant, you open it, all right, today, tomorrow, the day after, so we are going to a picnic on next Saturday. I would like to see what's the weather for next Saturday. All right, next Saturday is raining. All right, there's no picnic, because now you're making a decision based on some information. So this is how the software and the prediction model goes. What we have done is, since last 18 years of this company, every single day, other than if somebody's on a holiday or they're sick, we're predicting. What could be the weather of the markets, financial market, S&P, stocks, crypto? Every day there's thousands of traders doing it, and then there's thousands of communities that are predicting something. Of course, so we have done our analysis, and we are 85 to 87% correct. I looked at data when I came as a data analyst, and I asked Daniel, I need data for the last 18 years. He's like, right away, I have it for the last 10, but since 2008, you're not gonna need it. S&P was trading at 4,200, what the hell you need it for? So I said, all right, give me all the data. So let me open up a very quick Google sheet that we have put together, because the way a trading model works is you have to look at how good your prediction is. So if you join a community, a hive, or you call whatever NQ, let me open up NQ for NASDAQ, and all right, this is for Friday, May. Okay. This is May 1st for Friday. Our system automatically takes it. Every single morning, 9 o'clock, our algorithm predicts. Okay, computer doesn't know what will happen today. Will Trump send out a tweet? Will interest rate change? So it gives you a low point and it gives you a high point. Computer is not that smart that it knows what is happening in the future, but it is smart enough to say, if something happens to the downside, where the market is collapsing for today, what is something called a support? If the market is going up, we don't know, computer doesn't know, it says, all right, what is my probability and how high will I go? So that's why in a weather, it always gives you a high and a low. So for the last 18 years, we've been predicting. We're not right 100%, by the way. If any trader, any influencer, any mentor, any educator, any tool, they say they're 100%, that's a little bit extent of a miscommunication, in my opinion. It's not true. Yes,
Now, hello ji, aa jain ji, Assam ji. All right. A trader, a prediction model, it begins with 50%, by the way. It begins with 50%. Every trade you buy, you sell something, starts with a 50% probability. So the way we like to do it, let's flip a coin. It has two outcomes. It will go heads or tails. That's it. There's no third outcome. आप कहते हो heads से गिरेगा या tails से गिरेगा. So every trade that you take ever has two outcomes the moment you take a trade. Either the price will go up or down. That's it. So you predicted gold is going up. And you are right 50% of the time, by the way. So you can have the most brilliant quant or analyst or whatever you call them, and or predictor or mentor or educator, their guess is as good as a 50% as somebody who has never traded. You can bring me a blind person and I can put a buy and sell button in front of them, and when they click, 50% chances are that they're successful. So we already know our trade starts at 50%. Everybody can be right 50% of the time. What is our goal is to take this as high as possible. We have reached 85% in the last 18 years. So we predict something, and the outcome of that prediction happens 85% of it correctly. Not 100, not 90, we're not there yet. Because if you start to really do like 98 or 97, either that means you're not trading proper. Like, no, you're trading proper. You're not trading like that frequently. If you put two trades, they go 100%, of course, you only trade it twice in a month, right? So how do you fix this probability? By trading less, right? Make it higher. And so if there were two trades to take and you only took two trades and they were successful, you can call it, I was 100%, right? But that's not how it happens. You take some data over a period of time, like this goes back and back and back. This thing I've been tracking since, all right, 1 second. Okay. So this I've been tracking since June of 2024. We are almost a month away for June. So it's 2 years of data. So we looked at the last 2 years of data. We looked at how much we were successful. In the morning, 9 o'clock, computer said something. By the way, it's not a human that does it. It's a computer algorithm that pops up and says, like we just kind of modify based on our observation of the market. We don't look at it and say, all right, this is 100%. We will always say, our computer software has predicted something. These are not buy and sell offers. This is not financial advice. This is just a level that the computer has predicted. Now we were at one point even highlighting it, that how many times in a day our levels got touched. So you can call them areas, levels, reversals, pullbacks, trend changes within a day. So here's the good news, sir. You can get into trading at any time. 23 hours a day, this thing is available. Morning, afternoon, evening, night, this thing is available. You don't have to wait for 9 o'clock because we are doing futures market. It opens up, stock market opens at 9:30, closes at 4. Okay, that's limited. Options and stocks, that window is that window. However, futures market is 23 hours a day. Whenever you feel like you're trading, you can trade. So that's the benefit of futures trading. The benefit of futures trading is it doesn't require a lot of capital. In fact, today, in 2026, we encourage you not to invest your money, by the way. We beg you, please don't put in your money into futures trading. It is too volatile. You can have your hands burned,
right? So it is risky, but it's very rewarding. So what I'm trying to say is these days you can get into trading for as little as $100. You don't need to invest thousands of dollars. There are companies out there who will pay you to trade. So it's something called the prop firm concept. So let's look at Friday. This is Friday, May 1st. Our model predicted something. Give me a second. Let me open up this chart. Okay. Our computer said on Friday, by the way, for those that are, आपको दोनों तीनों को ही पता है, that NASDAQ and S&P has broken all records historically. There hasn't been a number before this. 27,917, hello ji, is a number that we have never seen in my lifetime, in your lifetime, in your lifetime, in your lifetime. What does that mean? The price before yesterday of 27,917 at almost 28,000 has never reached there. S&P 500 yesterday made another all-time high record, and that reached to $7,300, almost 7,301. Now, how do you judge a system? कि यार Rafay का system ठीक है, Daniel का system ठीक है. So you judge them by the numbers of prediction I have said and the number of prediction I have been right. So that's how you judge a system, right? If this guy is saying this will happen, how many times in a month, how many times in a week, how many times in a quarter, and how many times annually this person has been right. Yes, it's an algorithm. It's not Rafay putting a number out of the thin air and giving you. I'm looking at it, market, I'm observing. So Friday, what happens? Market opens, and I said, all right, first of all, this is my analysis of Friday. I looked at the market, because you have to understand, all of you, the new users, एक question, trading में थोड़ा experience है आप दोनों का? नहीं है जी? No, मैं दोबारा आपकी तरफ end में आता हूँ थोड़ा सा उनका है जी? No, no problem. मैं क्या क्योंकि see this conversation थोड़ी सी 45 minute आगे निकल गई है तो मैं वापस आ जाऊँगा. No problem. 1 o'clock से थी. So the most difficult part of a prediction model is to predict something that hasn't happened ever in the life. So these so-called resistance levels, we have never seen ever. In the history of a NASDAQ, in the history of S&P 500, and that's where it gets a little bit more difficult to predict. If the price keeps going up and up and up and up and up, at what point it's going up? Every day. This is considered one day. At what point price will take a little bit of a correction? Price will hit its ceiling. Price will hit its resistance, reversal point. So our computer's program yesterday said, if S&P 500 gets into a zone of somewhere around 7,300, please don't continue to buy. These are exit points. These are shorting points. So every day, every single day, our algorithm that we have written and improved over the last 18 years does a prediction model. You are welcome to test it, and you can see how the prediction is. And we have a concrete result over the last 18 years. 85 to 87%. But here's the best part though. The best part is we don't do this for one market. We do this for 15 markets.
So algorithm is so easy. We're building it that you will be able to put in a market very soon, and it'll calculate it for you. So we are making that to the next level one more time. Some groups out there, some community are saying, there's an influencer online. He did a video for us. We hired him to do a video. And he came, he looked at it, so he paired up with a gold trader, right? And all they said was every morning their trader comes online and says, all right, buy gold from here, sell from here, this is TP, this is stop loss, this is, right. So they charge $40 per month, by the way, to be part of that community. I can open it up, I can show you. So there's thousands of Telegram groups, there's thousands of YouTubers, there's thousands of WhatsApp groups, there's thousands, like, you have to understand this market is huge. There's like, it's a global market of 7 billion humans. Then you have, like just TradingView alone has 250 million traders. So we're not the only one predicting. There's a lot of groups out there who predict and they're right and they have different efficiency. What I'm saying is, what makes us different is we give you a tool for a prediction model, number one. Then, along with it, you're sitting and we give you a very cool tool. Let me open this up. This is, you've never probably seen a candle. This is called a tick chart or a price action chart. This is not a time chart. ये time charts नहीं हैं जो लोग advanced trading में हैं, ये time chart नहीं है. इनको हम कहते हैं price action chart. Smart money से move होते हैं. Without it, it doesn't move, right? So we have an algorithm written for you. So first, let's pull back everything. Forget about technical analysis. I'll go back to the presentation before I start. Let's define a goal and work towards it. आप इस इंडस्ट्री से कितने पैसे कमाना चाहते हैं? एक क्वेश्चन है ना, मैं आपसे पूछता हूँ. So, all right, what is my goal to get into this industry? So for long term, for a short term, so one goal could be, I would like to retire on this industry. One goal could be, I want to make $1 million. One goal would be, hey, this is great. So every Saturday, let's define a goal. I would like to make 20,000 USD in 1 year. Spelling of year is other way, but so that's a goal. You define a goal and then you work towards it. So if you were thinking of trading to come in and you say, it's okay, I'll try it. If it works for me, I'll give it a shot. If it doesn't for me, it's okay. So I have to first correct your mindset. This is not a game. This is not a, you'll try it. If it doesn't work, this is a very, very serious business. And you have to come in with a mindset that I am going to succeed at it. And I'm going to make it a full-time career. Yes, you can start part-time, but the amount of money that you can earn from this is beyond anybody's wildest dream. Do you think $100 a day is enough? I have traders I meet every day. They make $10,000 a day from futures market. There's traders who made $140,000 US, our student, in 4 months. There's a trader who made $40,000 in 1 month, right? So you have to understand one thing. If 100 people join, 97% will fail. I'll tell you this right now. 90 doesn't matter. Doesn't matter. That's the stats of the global, including ours. Well, I understand, but the other part is like the trading view chart is different. Yeah, I know. That doesn't matter. That's a doesn't matter if you join mine. Doesn't matter if you join 20 other platforms, and you can. This is a bold statement for me to say. So just because I give you a software that is good at predicting,
and you join my software, my hive, my prediction, you're not like guaranteed success, by the way. So let me clear this up. Why? You have to understand what makes this 97% and these 3% different, by the way. Because I have studied a lot of people. I have studied a lot of psychology back in the day when because you have to understand my background is writing software. And writing a software, most of the time I'm interface design. What is an interface design engineer? What they do is, there's a phone app I have to design. So I have to question a lot of people who are going to use this. How would you like to have the button? Should you have curved button? Should you have round button? Should you have green button? Should you have red button? So there is a lot of human emotion, human behavior, a lot of things that go into building a software. So if I give you, even building a car, even building a remote, even building a phone, there's a lot of psychology that is involved in writing software. So when we are given a user interface, design it. And so we look at humans, we have a data set, okay, male, female, what age, what gender, how much money they have. All of these data points come in, and then we look at how are they behave with our software, where they're gonna. Now it has gone to a point that, Facebook, right? They have it's called the video engagement test. So what they did was they hired like top brilliant neuroscientists. So this is a study you can read. They hired like top of the top cream. And what did they study? So all those doctors came, and then they took a data set of, let's say 2,000 people, 5,000 people, doesn't matter how many they put them in the CT scan machine. And then they showed a video to them, or a couple of videos or images to them. So they looked at what your human brain does by looking at certain images, certain motions, if you see a sad person, how does your brain react? If you see a very excitement, like thrill, like, yesterday there was a basketball game, and the last shot came, it hit the rim, went back in, and we are in the game 7. So, yes, so you have to understand all of us are human, right? And we have a brain. So I'll connect this to trading very quickly. So then they looked at it that now Facebook can tell you if this video is going to go viral or not. Why? That video gets fed into an AI, and then they have that modeling system that what is the probability of your video to go viral, because how many humans are going to look at it, how are they going to react to it, what is the engagement rate, how many people are going to type a comment, how many people are going to save it, and how many people are going to forward it. So this is how the social media, Instagram, TikTok, Facebook, and YouTube. And Snapchat is slightly different, but the software is, your TikTok, you have a video. How do you engage with it? You like the video? Do you scroll past the video? Do you not care about the video? Because it's based on, every human being is different. The algorithm is deciding what to push you. Are you going to comment on this? Is this human is going to put a bookmark on the video for later, or is this person is going to get engaged? And really they want to, the more forwards you have, that video becomes more viral. All you have to do is just press the bottom arrow, and then it'll make the video viral, because they're saying this video is worth sharing, so more people will get to see. So these 3%, the study is, they don't care about systems too much. Those that are successful at trading, there's a full study for this. Doesn't matter the system, doesn't matter the prediction, doesn't matter the algorithm, doesn't matter anything. They have 4 qualities.
markers. If a trader, if a human doesn't care about what the indicator says, if they're very well behaved with their emotions, fear of missing out, greed, revenge, and discipline. The most successful traders, yes, use some indicators, they use some like technical analysis. But the biggest winners are, doesn't matter if you use mine or not, you can get away with as long as you regulate your human emotions. What is fear of missing out? I'll tell you. You'll come here 9 o'clock. The trader beside you has already made $200. Now your brain switch and your cells are gonna come in. Oh my God, yeah, मैं 5 मिनट लेट हो गया. मैं बैठा था, स्टेटमेंट आई, थोड़ी सी स्पाइक चली गई, मेरे $200 मिस हो गए. आपका ब्रेन इतना, सबसे आपका जो, the most difficult part of trading is the human behavior. It has, honest to God, nothing to do with it. A lot of people who are not that technical intelligent sometimes outperform. Why? Because they know they're not greedy. You know, sometimes people, what is greed? Then let's look at because these are the 4, not pillars of trading, killers of trading. Greed is, a trade is coming, you took a trade, you made $100, and now you wanted more. So you will sit, you will trade more, then you will lose. So greed element is very strong in this business, especially in futures trading. So let me give you my example of greed. Thursday night or Wednesday night, market was once again at an all-time high. 6 o'clock it opened. Me and my son took a trade. Both of us made $100. Okay, close the trade, $100 is done, 5 accounts are done, $500 is done. 30 seconds later, I happened to open the computer, and it fell down like almost 150 points more from our entry. That really created a bit of an emotional problem. Even though I'm an educator, I'm a mentor, I'm still, after all, human, right? So I get to suffer these just like you guys. Sorry, one thing. Yes. I was on the same trade. अच्छा, selling पे ना? मैं उसको 10 बजे आई थी वो. हाँ जी, मैं बिल्कुल शाम को. 8 बजे से लेकर 10 बजे तक देख रहा था उसको. हाँ जी. तो मैं was tired. मैंने सोचा बंद करो उसको. हाँ. बंद कर दिया. फौरन गिर मिनट में देखा तो गई. सर देखें वो 150 पॉइंट गिरी है. ठीक है, ये एक बिहेवियर प्रॉब्लम है, इसका और कुछ नहीं. ठीक है. So next is we go into something called revenge, because each and every one of you will experience this. Because you have to understand every business is separate. This business is slightly separate. So what is revenge? You made $300 and then you didn't quit because of greed or discipline, and you lost that $300 and now you lost even 100 more. Now your brain is saying, I'm going to fight with the market. Revenge. आप उस NASDAQ मेरे पैसे ले गए. पहले तो आप उनको चोरी करके लाए थे ना. आप ले गए हो. मेरे पैसे क्यों लेके गए? मैं अब ट्रेड डालूंगा, पैसे निकालूंगा. तो problem, so I have to always tell people, if you have these human behavioral problems, please don't do trading. There's better ways to make money online, because this is again, you'll fall into the 97% victim. Because what happens is your brain is constantly, and this is the mastermind of trading, they're bringing it to the whole world. So this is a deliberate planning. You have to look at why there's a sudden rise of sports betting. There's a sudden rise of trading. There's a sudden rise of making it easier. So the controlling minds of the world want this in every hand. There's not enough people out there. So yesterday, you can go on 2 major websites, Polymarket or Kalshi, and you can say who's going to win the championship of Raptors versus Cleveland. So that's a real bet that can happen. You can wager $100 and they will. So what they want. So who are they? First of all, a lot of people say, who are they? These are the people who have the vested interest
in controlling the world. 150 people or so are there who own everything, from Nestle to water to lumber to countries to governments to everything. I don't care. I care about my little zone out there that I'm in. The more you will dig deeper, the worse it will get for you. The more you're going to say, my God, man, everything is rigged. You're going to say this is manipulated, etc. So it's okay. I don't care. I want to see what the big move is happening, what the big guys are doing, and I'll go along with them. So what is discipline? 9 o'clock you're sitting, 11 o'clock trade hasn't come, just leave. Okay, I'll see it tomorrow. I'll see it the day after. I'll see. You have discipline in profit. You have a discipline in loss. You took a trade. Your capital was $1,500. You lost $300. Don't go revenge mode. Just quit today. It's not your day. You are probably in that 50% that things are just not working out today. So now this is the most brutal thing about trading. A lot of people don't talk about it because they see only the good part. So there's a lot of money to be made, I agree, but there's a lot of self-discipline. Here's the thing. Most of you drove on a highway, 410, 407, 405, doesn't matter, 403, doesn't, 400. Most of you came here with a speed limit of 110, 120, 130. You drove here. And a lot of things you do in your life, you go to job, you go to business, you go to work, you go to school, you have commitments, and you are doing those commitments. Just remember, this is not discipline, by the way. Just because you do everything as a ritual every day, this is what we call it in psychology. It's a forced discipline. Forced discipline is somebody is always watching you. And if you do something bad, they're going to slap you. Try going 180 on 400. They'll put a ticket. Start not going to job or education, they'll kick you out. They say, hey, what are you doing? So don't think you're disciplined. What is discipline? The prime example is going to a gym membership. Because you have to understand, they charge you $200, $120, $180, doesn't matter. You have to get your butt out of the bed yourself. Take the car, weather is cold, you're feeling down. So a lot of disciplinary habits are weight loss, number one. Number two is exercise. Because these are where you kind of have to pick up yourself regardless of, like a lot of people. I live in Orangeville. You see, I inspire where I get is a lot of Indian, Punjabi communities. They walk together as a family. This is a ritual from back home, from the farmer's town, I understand, but that's discipline. It's like you're feeling good, you're not feeling good, you're feeling hungry, you're feeling tired, but we gotta go for a walk, man, right? So this is where two habits get developed. Number one is exercise. Number two is if you are controlling your diet. High cholesterol, high diabetes, these are Canada's primary three main things are your glucose, your cholesterol, and your blood pressure. Three main. How do you control them? Not by medication, by the way. That's a supplementary patch. You have a problem, they're going to fix it, put your patch. That's not going to fix the problem. I'll show you my picture. I was 108 kilos. Because as a software developer, you're awake whole night, and then somebody says, okay, try this, but then no. Idea was that I went to a coach who said, you have to just get discipline. Like whenever you're offered food, that's self-regulation. That's so in trading, nobody's going to be watching your account. Nobody is going to be telling you do this or don't do this, overtrade, undertrade, discipline. So if you think you have this tackled down, we just make your job easier with our technical indicators, our technical guidance, our motivation. So
I can't fix any of you with these. So 97% are not failing because of their technical problems. They're failing where they kind of slip off into these 4 things. I've been doing this 5 years. I've had my days. $1,800 is done, 5 funded accounts. And Jatan is saying, come on, Rafay bhai, you're done now. Time to go home. Let's do this. I get to 410 and I see an alert, price is coming to expected low. And my mind says, hey, there's another opportunity to make a couple $100. And next thing you know, you go in with too many and account is blown, right? So even though, doesn't matter, funded, live, this is where you will get tested every single day of this business. Now, stocks, you don't have this temptation that fast. Options, you're still not that, but the futures market is the most brutal market for you to get tested your patience. Your skill is not to trade. This is the thing. The fastest way to pass a funded account, we call it, you got to go the slowest way possible. So I can show you 1,000 ways to do trading. You can pick a scalping trade. Every trade can make $10. But how are you going to fix this? So again, 97 to 3% that we have asked people, and I have messages after messages. The day we have fixed our discipline, things are starting to go in green for a long term. Winning streak starts to come in. Of course, we are 85%. 9 days are going okay. 8 days are going okay. But then there's a bad day. Yes, of course, can happen. So let's look at a trade that I'm going to show you approximately here. So on Friday, our computer predicted that, where's this chart right here? Okay, on NASDAQ. You will learn all this technical stuff. It's not that difficult. AI is going to do the work. Gigi. Your software works on Notepad? It works as Windows. Windows. It's not on MacBook. So Windows is fine as long as you Windows and it works, no problem. Even those Yeah, the Surface. This is Surface Pro, no problem. 16 gigs of RAM. You just need RAM. So it predicted, right, price could do this and that. Around here I'm watching, and I'm observing, and I'm on a live stream. There are people taking our Zoom classes, there's people taking our Telegram, then there's people who are listening to me on live. And I'm telling them that my prediction based on my software is that price should slow down around this level, 27,800 to 20 to 830. So I'm looking at and you're looking at the same thing, by the way. It's not like I have something different, you have something different, and I'll show you how to set this all up. It's not a problem. So you're looking at it, I'm looking at it. I'm like, wait, we're not going to do night session high, and et cetera, et cetera. And price does not stop here. It stops, pauses there, and then I'm saying, hey, we are going to take 1 micro, because I don't know how fast this is going to go. For a smaller account, 1 MNQ. Not going to take more than that. So I am planning to short from here. And price climbs and climbs and climbs and climbs. With 1 MNQ, at what point I was looking at $160 in my account negative. 1 MNQ, price has gone against me 80 points. And I'm watching, and I'm like, where is it going to stop? Is it going to go to 28,000? Because the next level up for resistance was 28,000. Okay. Somewhere around 900, it starts to calm down. Rooks, okay, then coming up again, 75, 60, 85, 75, 60, 55, and then eventually it comes down to 750 range. Now, I had 3 types of traders. I will pick thousands are listening or hundreds are listening. Main 3 types. I Pacific gave some instructions. I said, hey, smaller accounts, don't go mini, don't go 2 micro. Let's all go in with 1 micro to see it's going to make a newer, higher high. We have never seen this type of
range ever again before. So we all stayed in that trade. That trade stuck with us for, I would say, 35 to 45 minutes. And then eventually price started to correct itself. Everybody was in profit. Some were in profit $20, some were in profit $500, depending on the lot size, depending on the risk assessment, depending on everything else. So where's the key thing? You have to be very disciplined. At what point, I'm going to say this trade has enough. So we will teach you how to handle the risk properly. If you have a smaller account, don't go mini, please, for God's sake, altogether. All of these things will teach you. So eventually our prediction was right. It just broke, and if you had bigger lot size, you would have taken a stop loss. But if you had a smaller lot size, this trade was not going to kill you. So what happened was this. Live, you can go and watch my all recordings. While NASDAQ was traveling up, we opened up S&P 500 because it's the same directional. It takes the same, if it goes 20 to 1, 5 to 1 ratio generally. And ES is climbing too, up and up, 98, 98. And now it has reached the level of 7,300. Just say, I told everybody, guys, let's short from here. I'm planning to short from 7,300, and I'm going to go in and I'm going to short. So what I did was, it was 7,300. I went to a mini. I shorted one. I took 2 points out of it. So for those that are technical, they understand what he still doesn't know. Probably he doesn't know what we are talking, but at least 4 of us can relate. What does that mean? I took a $7,300. I took 2 points out of this. This gave me $100 right there. 2 point lene na. So now I'm floating at negative $60. I left one MES to the downside. And I said, I'm going to hold one short position while M&Q is open. And I said, I took 6 points out of this. This became to $30. Now I'm floating at only negative $30 to kind of observe the situation, kind of make my decision and say, because you have to react along how the market is going in futures. Because you have to kind of see how I'm going to plan my, some people will just say, oh, okay, buyegi stop loss lelo. I said, okay, what is my option? One is, yes, cut the trade. Cut the trade, take your $100, $200 loss and call it a day. Didn't stop at your level. Next is do an average. You sell another one, do a dollar cost average. Price becomes from 880, 830 or 820 to 900, somewhere in between 850, 860, 870. And then you'll do a break-even trade. Third, I said, no, I'm not going to do an average because I like to do average at least 100 points away. Minimum 100 points. I'm not doing dollar cost average on NASDAQ. With micros or mini, 100 points away from my level. So I said, let it come to 930, then I'll think about doing an average. I still have a reasonable account, $1,500 buffer on the Lucid 25K, $1,000 buffer. So it hasn't gone against me too crazy. I took a mini, I got 2 points, then I left it down there. So third option was, all right, let's jump in. Price is at expected high, very high up there. So not expected high, sorry, approximately R2 or what is the computer said? R2. We shorted, we got 2 points, and then got $30 out of this. And now at the before 4 o'clock, I was in green. Because so I took, that was like second or third trade altogether. Along with it, we took a couple of Fibonacci trades or scalping trades. So technically speaking, it's not that difficult. Because the computer is doing the algorithm work. Computer is giving you some probability. They're not 100%, they're 85% based on our calculation. But there's a bit of a discipline, risk management, understanding where to go, what to do. And most traders, again, will fail to understand that, hey, if I control my FOMO, that, hey, see, I had a trader, made good money, but every time he put a trade, his hands sweat up. Not a good sign. Like that's business, it's not gonna do something else, man.
I'm not here to convert 8 billion people into trading. But at least I want to make sure half of the Brampton brick becomes a trader. Because it has a lot of potential out there. You have to understand. Now let me put a goal. That's why I say, आपका goal क्या है? If, I make it so simple, a lot of people will present you trading in a complex way. I don't. Why? Because I look at it, what is my goal? In order to make 20,000, you can put 200,000, you can put $2 million, you just have to work backwards. Literally, you have to just work backwards on it. And I will always like to see, we'll talk about in US currency, everything is in US. Let's divide this by 12. To be exact, you need to make $1,650, approximately $66 per month. So today is May 2nd, 2026. You decide, okay, Rafay, I'm going to do this and I'm going to follow what you're saying for 3 months. Okay, even let me, थोड़ा सा इनके लेवल पे होता है, इन दोनों के लिए आज आपको 3 months लग जाएंगे to learn the basics. We have everything in place for you. From I can pick somebody who has never traded to someone to understand my levels, it takes 3 months. So you will watch some lectures. What is FOMC? What is CPI? What is PPI? Very, no, okay, let me write something here. This is, you probably can't read. You cannot read, you cannot, शायद आप पढ़ सकते हैं. बिल्कुल. इनको पता था क्योंकि ये मेरा नाम उर्दू में लिखा हुआ है. आपको नहीं पता क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती. ठीक, और कोई नहीं है. कोई आप इनसे, ये आपसे ज़्यादा ज़हीन या IQ का मसला नहीं है. लैंग्वेज बैरियर है. अब कुछ चीज़ें मैंने आपको सिखानी है. So how does a child, when they're born, you know, the first is not, when you go to SK, because I look through, the problem for as an engineer is, every life thing you look at it from a analysis point of view. That's a curse an engineer has. So that's a problem. Your brain is just always calculating. When I'm driving and, you know, there's a green light, my eye goes to that walking sign and says how many seconds I have left to cross this light before I can make it or not. So these are, I'm saying, so when my 4 kids are born here, I look at some behavior and I see how are they trained. And then we will decide. So the SK or JK kids are taught, not ABC by the way. They're taught shapes and colors, sounds. So basically, in order for you to learn this, I have to say this is an F. Every time you see this is an R, this is an A, this is a B, and this is a Y. Eventually, by recognizing some patterns and practicing them, you learn a new skill. You can learn a new language. Like, you know, when we see Chinese, we see houses, right? I'm like, oh man, this makes no sense to us. I can't read Chinese. Like, but eventually people learn a skill, German, Italian, Greek, Urdu, Punjabi. But the idea is that to you, this looks like alien language today. But remember how you did your ABC became cat to I have a cat. Then you said you wrote a paragraph. And then you wrote a sentence, then you wrote, alphabets, words, sentences, paragraphs, and then an essay, and then a life story. And today, me and you, so in 1996, I sat in Cameron Heights. It's June, actually about August. My aunt took me to school. I'm 16 years old. And I'm nervous because I come from back home and there's no English. And now, yes, I understand, but math is okay. Spoken, I can't speak. So it's a fear. I understand the concept, what is math, what is tables, what is algebra,
but there's a communication gap. So I'm sitting in the line, I'm supposed to go to a counselor, and these kids come in, and they're swearing at each other, right? And they're swearing at each other, and my aunt is saying, close your ears. I'm like, why? Because they were saying F word and etc. I'm like, I don't understand it. Because why? Because I don't know the language, right? To me, I don't know what, like आप किसी को गाली में निकालें उसको समझ ही नहीं आई तो उसका फायदा कोई नहीं है. So same idea. It took from that. Today is 2026, May 2nd. I'm not born here, but at least I can converse in English good enough to make sure I get my points across. Same thing, from having zero English background of speaking, not writing. We are very good back home because grammar is present tense, past tense, future tense. We know more grammar than the Gore here, right? Because they have no idea how to use there or there. They have, and most of the English has gone through the toilet by writing WTF, WTH. So I feel sorry for the next generation who is going to be our leaders. That's the sad part, because the person born today in 25 years is going to be ruling. Scary, because they are Instagram age, they are Facebook age. So unless there are some civilized people left by then, we are heading to a disaster soon. Not my problem. I've lived through my enough time. I'm here to teach. So same thing, I will eventually teach you this. So give yourself a couple of months. What is CPI, Consumer Price Index? Just don't click a button. That's what that means. Just don't click the button. PPI, FOMC, ADP. So the whole trading language can be taught within a couple of months. It's not that difficult. And with the power of AI, with the power of software, with the power of a team, we can come in and make you a very good analyst. I never say the word, I'll make you a good trader. I'll say I'll make you a good analyst. You will trade yourself. My job is to make you a very good analyst. Just like I analyze, you'll be able to analyze and probably take it. So, because making a good trader is secondary. I have to make sure you can understand it, and I'll make you an analyst amongst these other thousands that have benefit from us. So 3 months, don't worry. It's a bit of a learning curve. Takes 4 lectures by Daniel. Since 2008, 2026, he does 4 lectures. Risk management, a little bit of a language. What is ES? What is MES? What is GC? What is FOMC? What is CPI? What is PPI? Then a little bit higher. What is relative strength index? What is moving average? What is, I don't know, Bollinger Bands. All these things, higher highs, lower lows, he will, exactly. Then you start to go into a little bit steeper, like a grade 9 or grade 10, algebra, math, but don't worry, you don't have to do any crazy. Just I have to teach you what this yellow line means. This yellow line means value area, meaning what happened yesterday, 70% volume. So I don't have to make you a PhD in this. An example I give you is, every Saturday I give, try going to, next time, pay attention whenever they're doing an X-ray on you or an ultrasound. You sit down, and I happened to go recently because of an angiogram. I wanted to get tested. Is my arteries blocked or not? That's the goal. I wanted to find out. At age 46, are my arteries blocked or not? So I go to an angiogram. So there's one doctor, but at least a staff of 8. They're called technicians. They're not doctors, by the way. So one is taking the hair out of my thing. One is checking my blood pressure. One is checking my this and that. So if you ever go to an X-ray person or a ultrasound person, if you ask them, just ask them, what do you see? You know what they will say? You have to ask your doctor. Yeah. I just know how to operate this machine. I have taken maybe a course on how to use this HP or GE machine.
I have taken a 3-year course or 2-year course or 1-year certification. I know how to do an X-ray with the fuel, or I know how to do an ultrasound. So we are going to turn you into a technician first, not a doctor. A doctor was when he came to do my angiogram to see if I had some camera or with they put in through your heart. You know how old that person is? At least 55 years old. They have spent their entire career after doing MD, and they became a heart surgeon, you know, a cardiac specialization. They look at the heart. So that person just came in, they put a camera in, maybe 40-minute job. You know, maybe they billed us to OHIP like $2,500. That's how much it costs, by the way. Your insurance or OHIP pays that much to do one angiogram. It's medical is free here, but that's a different debate. I don't want to get into it. But the idea is for that doctor to do that and say, all right, no arteries blocked. It took him from a birth to age 55 to write that one note. Rafay has no blocked arteries. A technician couldn't do it, but because you have to understand, he did high school here or wherever, then they did university, then undergrad, then they did a little bit higher, and then finally a heart surgeon or a cardiac. How this all puts together is none of your business at the moment. Your job is, I want to make $100. I want to make $200. I want to make $500. I don't care about how this thing works. Just show me what this line means, what this means, what this red means. So you are learning the language at the beginning. And during that learning part, there's slight bit of earning as well. After 3 months or so, you can kind of start to pick up this pace where you say, all right, so this trading, birth. I'm going to write year 2007, my son's birthday, who is going to be 19 now. So 18, 25, 35, 45, and let's put 85. This is your life, by the way. Somebody born, and in an age, after an age 18, what's the life expectancy of Canada? Anybody knows? 85 years old. Approximately an average male gets to live 85 years. Yeah, my grandfather lived till 98, but my brother-in-law passed at 52. That's an average. Too early, too late. There's a range in between, so you can look it up. So let's say you live at 85 minus 18. That's 65 to 67 years of average lifespan after becoming 18. If you made it to 85, congratulations. You have lived through almost a century on this planet Earth, right? That's a good accomplishment, man. If you are healthy and you are able to walk or go to a toilet and you don't have like severe pains, I would consider you the top 5% in the age group. 67 years times 12. So you have, give or take, 800 months after the age of 18. Again, analysis, data, writing, understanding, and then I work backwards. You have to understand, out of 800 months after the age of 18, 30% of the time you are sleeping. Again, that's the crappiest life human to be on this planet, because most of the time you're tired, you're sleeping. So let's take out 30% of this. 800, 30%, you're down to 240. So now you see how scary it becomes, because none of us look at life the way we just wake up every day. We have plans and boom, circuit breaker and you're gone, right? So if you plan or if you do things, it'll make your job much easier to decide anything. And rest, you leave it up to the big guy up there. Say, I'll plan and then I'll go from there. Age 18, so now in order to be successful financially, let's put in some time. Some time is you're age 18 and you just arrived at YYZ in Canada. What are your options?
Okay, people are just, they're gonna, today at certain time a flight is gonna land and somebody is gonna become a PR the first time in their life, 2026, May 10th or whatever, in Canada. And of course, just like I came 1996, it's the first day. They have no idea about recession, property prices. They have different set of issues. As long as they don't go to a car dealership and buy a Challenger, I don't have a problem with that. That's another issue that psychologically we can talk about, but not going to. So what are their options? So they're young adult. They came here. Maybe they'll go to school or whatever. Maybe they came here as a spousal visa and they'll start their life. How can they start earning now? Because the biggest thing in first world society is, how do you make a living? That's the question on everybody's brain. अब आ गए हो तो पैसे कमाओ, बस यही होता है ना, बस उतर गए हो तो पैसे कमाओ. वो कहता है यार मेरा goal है, or my goal is, I would like to, I have looked at it, I have studied, dental assistants do well, XYZ, accountants do well, plumbers do well, electricians do well, pick whatever, I don't care. And then you work towards your goal. Plumber will take you some sort of education, a car mechanic. These are skilled labors. So you can become a plumber, electrician, car repairman, or whatever. And then there's some soft skills. You can become a real estate agent. Then you can go to school, become a mortgage broker, then you, et cetera, et cetera, et cetera. It doesn't matter. So age 18, the fastest way to make for him or her the money is, let's get a job doing what? So doing what? You can stand at Walmart, Tim Hortons. You can go help people move. You can mow their lawns. You can shovel their snow. There's a lot of jobs out there. You can stand at a grocery store. And this is what, unless you are in a rich family where you can then focus on education, that's a different thing. But so at age 18, these are your limited options because you don't even have G1 today. You got to go do G1, J2. So your goal is to really make $100 per day. That's your goal. That makes you a good income earner at a very early age, at age 18. As you develop a skill, you become a plumber, approximately 5 years. You can consider, I have experience of 5 years, I'm a good plumber. So you would call a plumber or electrician to your home who can do your lights or whatever, or furnace person. You have to make sure they're inside the industry for some long time. You're not their first job, I hope. That's the scary part. Next thing you know, the whole thing, because again, you hire a contractor who now knows how to do basements by having a teacher or ustad jo kehte hain. So कि भाई इसने कुछ सीख लिया है, because this is a tradesman's skill. You don't really go to school, you kind of shadow somebody, and then eventually, all right, this is pretty repetitive. I know how to measure, I know how to cut, and then I will do the job, right? And then you are hoping that this contractor is not doing the first basement that is mine, right? That's the scary thought, right? That's how you think. You're like, I hope this is not his first basement or his first, etc. So to get to that level, give yourself at least 25 to 30 each. So same 18-year-old person has spent now 10 years inside an industry, and the people who change their industries a lot technically don't do well in life because you're hopping around. You wanted to be a car salesman. If you're in sales, stick to sales. Whatever floats your boat, whatever makes. I've been in an IT for 26 years. I haven't deviated so much. Okay, trading. If you are changing a lot of industries too fast, generally you don't get good at it. So if you are a good plumber at the age of 35, or an electrician or a car mechanic, $100 a day is not that difficult. You can probably do this in 1 hour, approximately. A plumber comes to your home to change a toilet. Approximately the call in Canada is $85. They'll become it and they'll say, sir, $100 charge करेंगे, हम आपकी faucet repair कर देते हैं. इस वक्त pot light का rate competition से चला गया $11 से $12 पे per pot light, लेकिन वो कहते हैं यार पहले ये pot light rate $40 का होता था.
फिर 25 आए और आए वो मार्केट ही तबाह कर दी. It's okay. That's competitive capitalist society, right? It doesn't matter. Fittest of the strongest, or otherwise, survival of the fittest. So now that same person decided to be a lawyer, decided to be an engineer, a dentist, or a doctor, whatever. But of course, we're going to put that age to somewhere around 40. Reasonable. By the time you have done your thing, you have graduated into a life of a little bit easier. To make $100, maybe it's one signature. Because a lawyer to close a mortgage file takes about $1,400. The assistants do the work. They just come, they sign, your deed is closed. Thank you very much. I got the funds. But it took him like 20 years of studying to do this, going through a lot of practices, etc. You're a HR engineer, IT engineer. You started at junior level, senior management. Now you can make executive decisions. You're a dentist. A root canal is costing an average of $850, $1,000. But a dentist doesn't do the work. That nurse comes in and she's like, all right, let me take an x-ray on you. Let me see if this teeth is okay. Dentist is going to come drill because they are master in the dentistry. Maybe that root canal for $100, it's a 15-minute job. Total. I'm just saying if it's $1,000 for the whole thing, but that $100 came in 15 minutes of work. So as you climb, now let's pick a little bit of a faster skill. Let's pick a faster skill. Real estate agents. Generally, you can get that going within 2 to 3 years. From a commercial license, you do your exam 6 exams, and then you can pick your skill up, and then you're doing very good. Same person at age 18 decided to become a mortgage agent. One of the fastest job these days is I looked at it, property appraisals. Reasonable $300 for a couple of hours of work. You know the software, you learned it, and you didn't really require that much education, and you were making, a truck driver. You have to understand separate income doesn't care about your education so much here. A truck driver can take a load of watermelons from here or strawberries to California, maybe get paid $8,000 for 2 weeks. Let's say example, giving like when the mileage rates were high. But the same $8,000 for an engineer is 1 month of work. They studied more, but that work requires sacrifice of time with family and friends. You're on the road, it's 52-wheeler, and you can snooze, and you can kill somebody. You are paid based on, in this society, Canada and US, based on how much you put your life at risk, by the way. You're not paid by how much your education is. Yes, you're engineers, doctors, lawyer, that's a different skill, but if you're a construction worker, you're starting at about $35. Why? Man, that car could kill you. If somebody swears, especially the bridge repairman, especially if you go ahead and fix so highest jobs paying are mostly the most dangerous. You're putting your life into it, not necessarily the most education you have taken. So real estate agent, 5 years, you can get paid if you're lucky and your client doesn't ditch you. And you have showed them 4 properties, you didn't do the signing agreement, and then last night he switched to a 1% cashback, and you're like, come on, man, सारा पिज़्ज़ा भी खा गया, सब कुछ खा गया, और डील किसी और से करा गया. अब मैं reality पे बात करता हूँ because I go through this every single day of my life. Same thing. Generally, you will not switch the certain professions in your life. You generally won't switch a doctor too fast. You generally won't switch a barber that fast. You generally won't switch an accountant that fast. Because what happens is it takes a bit of a rapport to be a certain type of,
skill set. Like a doctor, if he's a good doctor or she's a good doctor, you want to make sure you stick your family members, your dentist, your eye guy. You generally won't be shoveling around. But when there is no loyalty, real estate professionals will switch agents in the matter of a blink of an eye on a better deal. Or the guy is throwing in a sofa set. He's throwing in 1 ounce of gold. They're throwing in tickets to India. No loyalty, switch over, right? So it's okay. That's a industry problem. So that real estate agent, if the guy doesn't, within 3 months, if a deal closes from looking at the property to getting financing, generally that commission check is about $10,000 on average after everything. So that $100 much faster came in. But you studied maybe 5 years or 3 years, commercial is different. So you put yourself on whatever scale you are, that's why I keep it very open, and you decide, what does it take me to make $100? Then you come to this goddamn industry. And then this rips apart all the social norms there are. Because this is messed up business, by the way. There is no business in the world. I have given you a list of businesses that I've done. Now, I'll cover 2 or 3 primarily. Just to okay. One business is you decide you are in importing rice or clothing business. This is what you want to do. You have some business. In order to bring rice to Canada, you need 4 containers on average. You need to start from farmers all the way to retailer. It takes about $150,000 of investment approximately. So 1 container is sitting on consignment at the retailer. Whenever you go to a grocery store, that rice that you see, retailer hasn't paid for it. They're like, yaar, yahan par chhod jaye, jab bik jayega, le jayega. Then you have what's the middle? You have the warehousing or distribution. Then you have the freight or logistic. So the 1 container of rice is coming through ocean. And the final container is approximately either with the crop or being loaded. So a container business of a rice takes 4 containers, because I have done it. Highly expensive business. Unless you have a good rotation of your product, you're not going to do so well. Construction. If the market is moving fast, yes, it works good. But if the market like today is slow, supply and demand, it's going to slow down. Number 2 or 3. So a lot of businesses that do exceptionally well in Canada one is service industry. What we call it, moving a file. When you're an accountant, you're giving a service. So a lot of things where you're just manipulating the file or moving the files, like real estate agency, mortgage, especially appraisal, whereas there's no physical product in Canada, it tends to do very well. Because a little bit of education, and then you don't need to open up a lot of inventory, and then you don't need. So services business does well. Immigration consulting. Then you have even a barber requires some services. You need to open up some sort of if you're opening up even the nail or pedicure, manicure business, does require some retail orientation to be able to do it. You can get a job, of course. Somebody will give you a job based on what your skill level is. Simple as that. You are whatever, you are a good IT person, programmer, they'll hire you, etc. A bank will hire you or whatever. You're a good graphic designer, etc. But the key point is, this business is, fortunately or unfortunately, one is the most unique business of this, on planet Earth. If you decide to become this and this becomes your full-time job, I assure you, you'll be pretty useless in life. There's no other business that'll give you this kind of income.
So if you decide to be part of it and you decide to go ahead and be, to touch the next levels of trading, earning, you're not going to be good at anything. Because why? The amount of time it takes to generate wealth is so little here. Very little. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. So a person could come land at age 18. They can take a trading program with anybody, not through us. Online, you can learn about trading for free. You can join a different hive. You can join a different community. TikTok alone has like 300 people I follow that teach how to trade. Then you have YouTube. Then you have Instagram. Then you have this guy. You have that guy. What? You don't have to learn necessarily through us. We are one platform that teaches how to trade futures. There's thousands of guys online teaching this kind of a business. So you can come into this profession, very little knowledge, no investment, and you can literally mess up your paradigm. What is a paradigm shift? The amount of money that you can earn very quickly will mess you up. I'm just saying. So how much money? There's a guy sitting behind you, 140,000 in 4 months, right there, with us. How old? 22 years old. कोई झूठ तो नहीं है ना भाईजान, सही कह रहा हूँ ना? तो मेंबरशिप रिन्यू कर लें। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे रिटेंशन वालों ने पूछा तो मैं क्या यार इसको ना ईमेल कर देना, उसको गुस्सा कर जाएगा. Anyway, he's been with a 3 o'clock. So we'll take a break at 3 o'clock. अब मुझे पता है गाड़ी की आजकल शो ऑफ है, कॉर्बेट खरीद लिया भाई ने. लाइक अच्छा इसकी एग्जांपल देता हूँ, सामने बैठा है. He is 22 years old. When he came to he was born into this universe age 21 maybe. He came, he learned it, very sharp guy, and became useless. Why? Because the amount of money he started earning, nothing else could satisfy his hunger anymore. So 22-year-old kids, my own son, I'm suffering through this dilemma at my own home as well. My son, born and raised in Canada, Kitchener, Ontario, all of a sudden becomes 18-year-old, joins trading through us, and learns to trade on his own, as well as he joins University of the Ted Rogers University, right, TMU. Marketing program. I have been saving for this poor soul for 18 years. I have RESP fund. When he was born, I decided to put $150 aside. So 18, government gives me back $35,000 plus a grant. If this guy goes to university, we'll cover. So I'm like, this is great. He's born today. Back then I wasn't into trading, by the way, so much. I'm like, this guy's born. When he turns 18, how much university is going to cost? 50 grand. So we planned it. Me and my wife said, all right, let's put aside $150 times 12 times 18. That works out to $32,400 with the grants and everything, about 50 grand. A nest came. Starts his interest in trading, because when you are talking about trading all the time, decides to get inside trading age 18, still goes to university, gets an admission, pays the first year fee, and then from January 2025, he becomes and joins the 97% people. He becomes what we call a gambler. Has no idea, buy, sell, buy, gets very exciting. Close your eyes, buy, $500 ban gaya. Oh, agla loss ho gaya, agla phir बढ़ गया. So January, February, March, April, May, June, 6 months, he became what we call official futures gambler. मेरे अपने घर की story है. All right, still is in university. So around July, I sit down with a couple of senior mentors here. I'm like, man, he's not listening to me. Can you coach him? Because it's, चिराग तले अंधेरा, अपने घर वाले नहीं सुनते, बाकी पूरी दुनिया सुनती है. Anyway, so he sits down with one mentor and he fixes his life. July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May. 11 months so far into trading. Within the first 6 months,
He made $80,000. Age 19. So he fixed his, so we just said, all right, you're doing okay. You're making 2,000, then you're dropping, you're going in, you're dropping. Let's fix your issues of discipline, and then we're gonna like monitor you, counsel you. So in the next month, he becomes the successful trader at Perdia Capital, and then he goes and he's number one. You can watch him. He calls himself the Dr. NASDAQ. That's the sad part about these kids. अभी नर्स में नहीं बने, अपने आप को डॉक्टर कह रहे हैं. So Instagram, etc. Anyway, you can look it up. It's on our Insta. So he drops out of university. He's like, come on, man. मैं 50,000 की job की सवाल. So what happens is, this is the dark side of it, that if you choose to be it, and the amount of money that it's going to present to you, this will make you, so what is his career choices? Trader or an Uber driver? That's it. There's like nothing else would satisfy. There is nothing else. Because the amount of money that Murtaz has seen, and fewer the Mansoor has seen, Hashir has seen, I have seen, we are pretty useless at everything else. Why? We can't do anything else. Why? We have seen how NASDAQ moves, and one click of NASDAQ can give you $1,000 in 4 minutes, and 5 minutes, and 8 minutes. Before NASDAQ, those guys at extreme level were doing silver. And silver contracts can make you $4,500 in less than 4 seconds. Click in, done, 4 contracts, done, $4,500. So you tell me, would you stay normal? You can't. You just can't stay normal. So the exposure, so that's why I always say in life, if you ever got COVID, your DNA has it. Our ancestors and their ancestors didn't have it, but our offsprings and we'll pass on the COVID gene next 1,000 years, right? Because we got it, and then our DNA. So if you get exposed to this business, just be mindful. There's no coming back. It's like a mafia. Trust me, you can join at your will, but there's no exiting. Because what happens is, you will get connected with a psychological problem. Is you at 9:30 clicked a button, and then at 9:31, your account balance went $300 plus. That rush, that adrenaline, that nerve-changing neurons in your head will make sure that you're paralyzed for the rest of your life. Because you will lose interest in this timeline. Because the trader doesn't have this standard timeline of life. Then you'll start looking at, man, I had a trader, he's like, I made $200. I said, wait. Then he's like, one day I made 1,000. I said, wait. Then one day he made 5,000. I said, wait. Then one day he made 10 grand. I'm like, come on, man. Don't keep, you are going to eventually get to a level, there's no ceiling. You can make as much amount of money sitting as much any amount of accounts that you have. So the idea is, let's set up a goal and work towards it. And then you can scale to, okay, I want to make what we will offer you after 3-4 months. We have to focus on a very strict number. We call that $100 a day. That's the goal. This is it. That's it. There's no if or buts or yes or no's. If you are able to consistently make $100 a day, I guarantee you, you will join these 3% and you will have a $40,000 one day payout. Because $100 a day means if you have 5 funded companies, 1 funded companies, 5 accounts, the replication becomes so easy. You will click once, instead of 100, you will say 100, 100, 100, 100, 100, $500. 5 accounts, $100 each. 10 accounts, $50 each. 20 accounts, $25. So the whole idea of futures trading these days, if done sensibly, if done with properly, we are here as an organization, as a community to guide you. So what is our job?
We are doing the teaching, we're doing the analysis part, we're doing the coaching. You take care of this stuff. Mr. Happy comes here, Happy Gill, from a city called, in India, Kapurthala. Doesn't matter. I'm just saying that I just remember his name from that. He sits here at the end. Eh? Yeah. उसके फादर ग्रैंडफादर सारे उधर आए ना, ये भी तो ये सीट सिर्फ इधर सोया गया था, बाकी सारे उधर बॉर्डर इधर उधर का कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक लाइन लगी है ना, नहीं नो एक ही है ना, एक ही चीज़ है। वो उस वक्त उसके अब्बू इधर ट्रैवल कर रहे थे, वो घुटनों में था, है ना, तो वो इधर आ गया, फिर मजाक लेना तो पूरा मरासी होने से। सो बात ये है कि you have to understand that he comes here 10:30, go watch his entries. He would say, यार NASDAQ इधर आ रही है, ES इधर, वो तो ES करता ही नहीं है। Young crowd goes with NASDAQ, faster crowd goes with NASDAQ. They're a bit of older audience who can't handle the volatility. They stick to Forex or they stick to somewhat gold, or even gold is fast these days, ES. ES says, so what is $100 take to make in a day? At Win Lifetime, since 2008, we give you a written guarantee that 23 hours में यार 2 पॉइंट मिल जाएंगे। इतनी मुसीबत नहीं आई कि आपके 2 पॉइंट भी ना मिले। हम 2 लेने जाते हैं और 20 वापस कर आते हैं। ये हमारी एक this is the hard reality and the psychology of it is. So if somebody only took on Friday 1 trade and got their $100, it's not that difficult. So your goal should be the day you will make 15 days, actually it's a little bit more than that. Humans, again, it all comes back to behavior, and we study behavior a lot. So humans are the most useless species on planet Earth. I know, मैं भी human हूँ, आप कहोगे यार ये क्या बात कर दी? A human baby is born and is the weakest creature. Can't even feed themselves. Can't even turn. You need other people to nurture them. So your mother or your father, from the birth point to at least age 7, has to take care of you. Because we are, like, if you look at a cow or a rabbit or a goat, any other mammals or animal, generally, the moment the birth has taken place, you're pretty much independent. Like a lot of people just kick them out. Even the eggs, when they hatch, the moment they're about to fly, they leave, right? But the human babies or humans, us, our creatures, are very fragile. Yes, we are very creative after a certain age, and we have solved the problem. We have put Burj Khalifa, we are going to the moon, we're going to... So it's the evolution process that takes some time, some energy, some skill. And once you master it, then you can become like Mozart, you can become Einstein, you can do anything. Same humans got, like Hitler's was born, that's the same human, right? People who brought 9/11, people who went to the moon, they're now planning to go to the Mars, still human. But first 6 years or so are the most fragile creatures on this. So until I would say that they're able to go to a toilet properly, you're kind of pretty useless, right? You're not contributing to society. You're basically a liability onto your parents, because you are taking, you're sucking up the food, you're sucking up resources, mom has to change your diaper, because I went through 4 kids, I understand. And the way how it works is, the first child is the most precious one, because this is the first time you're experiencing a child. And the 4th child is like, it's okay. He will learn himself, because you have gone through the life stage, you're like, yaar, khud hi pal pul jayega. कोई back home तो 10-12 हो जाए तो 2 के नाम ही नहीं याद होते थे कि पता नहीं कौन है यार. So that's the comedy inside this seminar. Anyway, to just keep it on the lighter note, right? So you will learn this. So today you're born here. Today is your first day.
You have open. When the baby is born, they can't even see color, by the way. They're color blind. So they have to do a hearing test. We live in one of the most modern civilizations in like Western atmosphere where a lot of stuff is not even tested back home, right? So you're given certain things, you're given certain vaccination, polio, et cetera, et cetera. So today, I don't care, as long as you're at the age of 18, you're born into the trading universe. Don't think your age it's just a number. Today, start picking a skill, learn to do piano, learn to do swimming, learn to do skating, snowboarding, pick a skill, knitting, cooking. Most of the skills that are hobby will have an ing in it beside it. Cooking, knitting, skiing, trading, etc., etc. So it will take you some time to learn the ropes, the basic. I don't know how to swim. I put my kids through swimming. I think they go up to class 8 and then they become a swimmer. Of course, skating, of course, all of these. So trading today, age 0. Age 1, age 2, age 3, age 4, and then eventually you'll be, I know what a mid-band is, I know what a moving averages is, I know what a Bollinger Band is, I know what a FOMC is, I know what a CPI is, then we'll take you into a little bit of it took me 5 years from birth to now to be able to give this seminar. Some people can do this in 1 year. Some people can do this in 3 months. It's not rocket science. I wasn't born with this knowledge. I just learned it, paid some attention to it. Now eventually I can understand, hey, if the price is going to go to 27,880, I'll do what? I'll do a short. If price is, so day in, day out, day in, day out, day in, day out, 3-4 months, you'll be teaching me, sir, all right, price is hitting expected low on crude oil. I'm going short. I took $100. I'm done. So within 3-4 months, you will be on your own in terms of learning. So here at superareas.com, here at Win Lifetime, we are an institute that is slightly different than others. There are, again, like I said, on YouTube, on TikTok, on Instagram, on Facebook, there are a lot of schools out there who teach you trading. It's not patented by us. Trading is an industry, just like there are a lot of dentists, there are a lot of doctors, a lot of lawyers, a lot of engineers. There is competition. However, what makes us different is the way we are doing it. Because you have to understand, I have a lot of, as a teacher, as a mentor, it is incredibly difficult for me to transform my language, my ideas into your brain. In order to know what I know, to teach somebody, that's why in certain religion, teacher is considered father. They say, yaar, baap jaisa hai, teacher hai, young hai, old hai, because the guy is taking all the information we have absorbed through my own means or through somebody else who taught me, and then that's how the knowledge gets like to the next person. Had there were no trading school, a lot of people say, yes, you can learn trading on your own, no problem, go wild, absolutely go wild, start learning moving averages, and then let me know how far that goes quickly. Because you need a structured teaching, structured, proper structure. That's how most traders will do one segments, one school, one thing at a time. The difference between us and everything else, even though I have a lot of respect for them, is we have a physical presence. You have an office, actually 2, where you can come in and talk to me. I have a face, I have a phone number, I have a support staff, I have a receptionist. So I'm not doing this as a hobby, by the way. So the knowledge, it's like a university. If you say, okay, of course. If you, by the way, want to become a lawyer, you don't need any. These days, ChatGPT and YouTube can turn you into anything, literally into anything. So, but why do you decide why would I go to a certain university? Or because they have structured learning and they will certify you to be that. At the end of the day, it's all the exams that you take in life is just somebody giving a stamp saying,
today Rafay is allowed to do this. He has successfully completed all the criteria to be a doctor, real estate agent, a mortgage broker, a house appraisal, a dentist, an engineer. So the exams in universities and colleges are just testing you on your skill. No problem. So here at Super Areas, number one is, so whenever you compare, by the way, it's very good to shop around. I like people that, hey, now you know about trading, go out, shop around to see who's teaching trading and to what extent they will go to. So number one, we are physically available we have an office. Right now we have 2 offices. Very soon, on May 22nd, May 23rd, we have a seminar in Calgary. We're going to open a physical office in Calgary. We're going to open a physical office in Surrey. There's a lot of community. Statistically speaking, by the way, you know who's the number one in South Asian that takes trading seriously? Indian community, and then within Indian community, Punjabi community. So we have stats, like, you know, certain nations, certain things, statistically speaking, this is where, now again, the funny part is, or the interesting part is, it becomes from their culture. Culture is, I would like to learn everything. Their name itself means SIKH. And learn a new skill, learn something. So they will not shy from getting into trucking, tire business, farming, real estate. They jump first and decide how deep it is later. That's just the way culture is. It's okay. So that's why they do very well in T20 compared to one day, because the idea is, I have 6 balls, I gotta hit it out of the park, right? So again, I don't care about any of those statistics. I can teach anybody. What is the difference? We have a physical software that you can use. We have mentors. We have live streaming. So I am planning to turn this industry from a kind of a hobby into a professional. So we are looking at a lot of avenues. Hey, I talked to our marketing team. I said, what if we give you the laptops, a screen? You just come in and sit 9 to 5. So we have so many things in the pipeline that eventually we'll do. Idea is, do your 3 months of lecturing, and then come in, sit with expert supervision, look and learn how these numbers work, how this software works. You just have to learn very, very basic things. Okay. I will make you a trader in less than 1 minute in our algorithm. Let me open up. Because to make $100, it's literally so easy that these days the algorithm will do the job for you, and it will tell you, let me just set up the data series to make sure I get more than 200 bars. Let me put in 5,000 bars. Okay. Perfect. You haven't seen this screen? Yeah, probably you have. आपने तो देखा ही है. आपने शायद पहली दफ़ा देखा हो. आपके लिए first time. Let me turn you into a trader. 30 seconds. Software has to do the work. You just have to look at it and see how to use it. So this is something we call a scalping. Just a very basic word in trading is called scalping. Scalping होती है ऊपर से छीलना. Scalp कर रहे हैं, थोड़ा सा उठा दिया. अब किन्नू का वो जब छीलते scalp हो रहा होता है काम. आप उतार रहे होते थोड़ी सी चीज़. If I said, sir, this is the software is doing all the hard work. It is doing more than 29 calculations for you, and I did not invent this. I discovered it. Okay, this is math though. I didn't make math. Relative strength index is math. Moving average is math. Bollinger Band is math.
like T-bands are math, trend bands are math. There's a lot of math is happening. What I did was I made a calculator that makes you a little bit doing your math easier. So this is a calculator. And I said, hey, every time, this is background color. अब मैं देखें आपको कलर से सिखा रहा हूँ, मैं कोई बात भी नहीं करूँगा. कलर क्या है ग्रेड 1 के लिए? भाई कलर ग्रीन है. If it's green, बाई की तरफ. So lecture 1, green है तो बाई करें, red है तो sell करें. इतना आसान है. If it's red, sell. If it's green, buy. If it's red, sell. I teach you one more thing. ये एक चीज़, एक लेसन हो गया. जब भी ये वाइट लाइन इस डब्बे के अंदर चली जाए, यहाँ से सेल करना है. मैंने सिर्फ ये बताया है. So what is happening mathematically? Your swing is going into a Fibonacci retracement. That's what's technically happening in the back. But my software is doing the calculation, and you say, all right, I have a swing now at 78% because Fib levels are 3, 23, 30 something, 31, 61, and 78. So every time the swing takes place and goes inside the Fibonacci, you can scalp $5. You can scalp 1 point. 1 point, $5. 1 point, $50. 1.2 or 1.20. दिन में 5 ट्रेड कर लें सिर्फ ये वाले, आपके $50, $100, $60 बन जाएंगे. हमारा गोल क्या है? पूरे दिन में ये 2 पॉइंट निकालें. पूरे दिन में 23 घंटे के अंदर. यार प्रॉब्लम ये हो जाएगी, आप यहाँ पर आपको सेल किया एग्जैक्टली 234 पे, 235 पे आपके $100 बन गए. That's it. Meaning it's not that complicated. You just have to learn how to use the interface. And this is the difficult part. Okay. Market trend was down. Sell, 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 sell. Buy, buy. Green है तो buy करें, red है तो sell करें. So my goal is to make sure I can bring somebody who has never ever traded before, just show them some basic math, and when not to trade. You see a red FOMC, have your hand away from your mouse. You see CPI, not touching it. You're seeing PPI, not. Again, you're starting to understand language. What is ABC? What is cat? I have a cat. I have 5 cats. Now I can write a full essay on a cat. Same thing, color, shapes, patterns, color, shapes, pattern. And once you recognize, all right, every time this happens, I see a red box. Every time this happens, I see a green box. So you see a green box, move your mouse there, take 1 point. Every time you see a red box, move your mouse there, take 1 point. This is called the scalping trade. As you get the ladder, I'll give you 12 methods for you to trade if you like. मीनिंग आपके इसके सामने 23 घंटे कसिनो के सामने बैठना है, 23 घंटे बैठो, मैं तो नहीं कहूँगा. नेक्स्ट टाइम मैंड्रिन में खाना खाने जाइएगा, 2 बजे खुलता है, रात को 11 बजे बंद होता है. किसी बफे में गए हूँ, पूरा एक आप $40 दे दो, और वो तंदूरी वाला है तो कितना लेता है? $30 ले लेगा. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो देयर, डोंट एग्जिट अंटिल दे क्लोज. नहीं ना कीजिएगा ना कीजिएगा. आपने 35 दिया है ना, जब तक बीमार ना हो जाए उठिएगा नहीं, क्योंकि आपने 35 पूरे यूज़ करने हैं ना. एज मैं आपको सेम थिंग, 100 बन गए हैं, पेट भर गया है, आपका टारगेट पूरा हो गया, या आज मार्केट आपके बिहेव में नहीं है, -300 हो गया, उड़ जाओ यार. सो यू हैव टू गेट अप इन प्रॉफिट और लॉस विद अ सर्टन बिहेवियर. डिसिप्लिन अगेन. Don't do greed, don't be revenge, don't do fear of missing out, don't do discipline problem. There's not a single. Now, here's our challenge. The amount of services that we give you, there's no school on planet Earth that can provide this level of service. For amount of money that we charge, by the way, versus the service. We have a physical office with 6 mentors. You know, most of these professions are run by or hobbyists. You have to understand, they have a day job, and in the evening, they become analysts.
Let's say okay, मैं यार आपको ट्रेडिंग भी सिखा देता हूँ, आ जाओ, मेरी जॉब कोई और है, मैं ये काम पार्ट टाइम करता हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन यार मैं अभी ऑफिस नहीं खोलना चाहता क्योंकि मुझे 9 बजे से डर लगता है कि मैंने इसको क्या जॉब थोड़ी बनानी है, मैं आपको पार्ट टाइम सिखा देता हूँ. So a lot of mentors, which I have tremendous respect for, they need to push this a little bit more professional way. What is professional way? Have a face. Don't hide behind a screen and a keyboard. If you are a good mentor, some of us are listening me on TikTok and they'll be trolling. That's why I turned off comment, because I don't have any moderators who are gonna say this and that. Take the courage to lease one office. सर ठीक है, आपको मैं बिजनेस प्लान देता हूँ, आप अच्छे ट्रेडर हो, आपने लोगों को सिखाना है, यार 3000 का ऑफिस ही खोल लो, सुबह 9 बजे आओ, 2 बजे चले जाओ. ये पहला स्टेप तो है, ऑफिस तो खोलो यार. मैं अभी हमारे देख के 2 ने खोल लिए हैं, एक ने वैंकूवर, एक ने ब्रैम्पटन, खुल गया है, ठीक है ये. But here's the thing though, which was, I'm just telling you where are we setting the bar, which is hard for the competition to make it difficult. Number 2 is they don't have a ready-made software for you, a turnkey operation we call it, that I can bring a trader or a new person and I can instantly install on it. भाई रेडी मेड है, सिर्फ इसको फॉलो करी जाओ, ऑन सर्वर साइड पे हम कर देंगे. सो दे ब्रिंग यू ऑन टू अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड ट्रेडिंग व्यू. So the learning curve is good, but it is very long. I want to take you like this way, much faster towards the earning part. So we have a physical presence. We are not a one-person show. If tomorrow Rafay decides to leave this company or disappear from planet Earth, this is not going to collapse tomorrow. This is an organization with a staff of 30 people. A group sits in there, Happy sits here, Tanisha sits there, Ramneek sits there, Jatin sits there, Tulip sits there, Vikram sits there, myself there, Daniel is there, Majid is there, Myroon is there. It's not a one-man show, number one. So you can be assured that if I pay, first of all, you're paying peanuts, the amount of money that we charge. And then the amount of services we'll give you is the software that's ready-made. We'll give you the mentors, because we don't want you to do this alone, the navigation part. Yes, the mentor has no power to move the market by. They're an analyst, I'm an analyst, we're just working together. All right, you see something, I see the same thing, looks good, let's do it together. Sounds good. Levels. There's a guy there who gives 1 level on NASDAQ, has a Telegram group, very good, his levels are good, I admire it, but can give only 1 level because it's a one-person show. Tomorrow he disappears, I don't think levels are going to come. We don't give you 1 levels, we give you 15 markets, 8 levels each. Forex, crude oil, natural gas, S&P, NASDAQ, Dow, Russell, gold, silver, copper, and that's about it. And Bitcoin, and so it's a proper education and proper structure. You have Bitcoin के हम आपको दे रहे हैं Bitcoin के futures की levels, which way it can go. हाँ जी, उसमें Bitcoin के futures बता देता हूँ. 23 hours a day, 5 days a week, you have a problem with your software, you can talk to somebody. You don't have to rely on the person who initiated it, because we looked at it that, hey, we are making money, and then a lot of people are learning to make money. We're making money from this organization too. So we reinvest back. So staff of 30 will help you to get your, you need to have a copier help. Your funded account is not working. Because you have to understand, you have an IPTV box at home. You're paying somebody $20 a month. They have a competition. They says, यार मुझसे ले लो, मैं $15 पे दे देता हूँ per month में. एक और आता है, वो कहता है मैं $10 per month पे दे देता हूँ.
फिर एक और आता है, वो कहता है मैं $5 या $8 पे देता हूँ। फिर एक फाइनल, मैं कहता हूँ चावल आता है, वो कहता है कि मुझसे साल पे 50 का ले लो। किसी दिन टीवी बंद हो ना तो 50 वाले को फ़ोन कीजिएगा, और किसी दिन टीवी बंद हो तो 20 वाले को फ़ोन कीजिएगा। जो आपको सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हम जो आपको सर्विस दे दें, जिसने आपसे सिर्फ लेने ही महीने में $40 हैं, उसने आपको सर्विस भी तो $40 की देनी है ना। तो याद रखें, द व्हाट यू गेट व्हाट यू पे फॉर। If your requirement only one level, no problem. You understand my audience is different. It is such a huge market that I can go ahead and cater to a different audience altogether. So yesterday what happened was I was invited to a group of Toronto or Canada traders. They were having a conversation together. Somebody sent me an invite, I joined, and I thought they had a little bit of a competition. I just said, you have no idea how big this industry is. If you think that taking away 5 or 6 or 10 customers, I will make a difference, go just stand in Brampton, see how many traders you will get? Go into Surrey, go into Calgary, go into Nova Scotia, Montreal. 1914 से ये लोग आ रहे हैं इधर भाईजान। जितना मुझे कनाडा में चाइनीज़ और इंडियन पंजाबी सिख कम्युनिटी 1914 से पहले की है। एज ए स्लेव लाई गए थे ब्रिटिश की तौर पे, और वो दिलजीत ने पूरा कर दिया ना बात करके शो पे जी हैं। हाँ 1800, लेकिन जो ऑफिशियली 1914 का वाक़या दिलजीत ने पढ़ा जिमी फैलन पे कि हमें एंटर नहीं होने दिया था, मैंने 55,000 का अरीना बेच दिया है, राइट। दैट इज़ अकम्पलिशमेंट। You have to understand one thing. There's 2 countries in the world that are your home. हमारे लिए पाकिस्तान है, इंडिया है, और दूसरा कनाडा है, because Canada does not belong to anybody. Again, बात ये है कि ब्रिटेन केम, फ्रेंच केम, उन्होंने टेक ओवर किया। तो अगर आपको आज कोई गोरा या इमिग्रेंट कहता है ना यहाँ से चले जाओ, उसको को हम इकट्ठे ही चलते हैं। तेरा दादा आ गया था तो मैं लेट आया। तो ये लैंड अगर आप नेटिव इंडियन का है ना, सिर्फ उन्हीं का है, राइट। तो कोई आपका बंदे के पुत्र ये नहीं कह सकता कि गो बैक होम। किधर जाएं भाई, तुम भी तो फ्रांस चलो मेरे साथ, तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ, खाली कर देते हैं। तो there should be zero tolerance for like racism in Canada. I see now a lot of people I see on TikTok, they're like, oh, Indians are taking over. Wait, जब आपकी कंपनी बनी थी इंडिया में, वो जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया, तो उस वक्त के इंडियंस क्या सोच रहे थे? यार इतना गोरा आ गया यार यहाँ पर, देखो हम अपना बदला आज ले रहे हैं भाई। तो इतनी सी बात है, इतना इसमें क्या हुआ? ओ भाई आपने हमसे लिया था, हम अपनी चीज़ वापस ले रहे हैं, तो क्या हुआ यार इसमें? So we should be more tolerant to other culture. It makes us Canada a great country. It's just what happened was the whole real estate fiasco created all this problem because property prices up. And the funny part is, where I find a little bit ironic, 3 generation पहले वाला आके कह रहा है यार ये immigrant इधर किधर आ गए? So come on man, you were once an immigrant. So the whole idea is, yes, there are certain rules and cultures you have to follow, I understand, but अब हम थोड़ी सी लेते हैं 10 मिनट की ब्रेक, चाय वगैरह समोसे या कुछ जो भी लाए हुए हैं खा लेते हैं, थोड़ा री एनर्जाइज करते हैं। अब मैं आपको लेके चलूँगा राउंड 2 की तरफ कि आप आ ही गए हो तो पैसे कैसे कमाने हैं, क्योंकि you please don't invest your own money into this. There are better ways to make money with something called a funded account. So that will be like, let's say 3:30 दोबारा मिलते हैं, 3:35 मिल लेते हैं 10 मिनट में। और फिर अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो हैप्पी जी बाहर बैठे हैं, वो आपको बता देंगे ऑन बोर्डिंग प्रोसेस क्या है। फिर हम आप लोगों के लिए जाएंगे टेक्निकल डिस्कशन में, क्योंकि वो बिगिनर्स तकरीबन कवर हो गया, and then we can get into a little bit of real technical discussions on what is the math that is happening. And इस तरह उनको थोड़ा सा ट्रेडिंग का पता है, आपको थोड़ा पता है, थोड़ा मुझे पता है, मिल के हम लोग ना कुछ ना कोई हल निकाल लेंगे। So let's take a little bit of a break and I'll come back and then we will start this again. Thank you.
राफेल नीचे आती है तो सारी सेल ला रही हैं। ना होल्ड करना ना अपने आप को।
वो 300 हो ओके तो निकलते हैं 2-3 साल महीने हाँ कभी तो ये है कि रेगुलर करने पे निकल आते हैं मतलब आप अगर फोकस का समय इतना कभी बाजार में जॉब भी है आपका टाइम नहीं देगा मोस्ट लोगों की प्रॉब्लम ये है मेरे साथ यही प्रॉब्लम है आप डेली में जॉब करते हैं तो फिर आप उसको फोकस करें पहले वो जो मेन आपके ब्रेड एंड बटर है राइट तो बाय द टाइम आप 4-5 बजे फारिग होते हो तो फिर इवनिंग सेक्शन में तो ये बिल्कुल केवन डल टाइप ही है मगर इनिशियल वालों लोगों के लिए ना बेटर है कि वो शाम में करे क्योंकि मार्केट 23 आवर ओपन है ना नहीं वो सही है मैं शाम को बैठ के देखता हूँ सुबह इतना तेज मार्केट होती है ना जब तक आपका फुल कमांड नहीं होगा ना इतनी तेज मार्केट चल रही होती है आपके हाथ में नहीं आएगी हाँ सही शाम में स्लो मूव होती है नास्डैक तो शाम का बेटर टाइम मतलब बिगनर्स के लिए तो मुझे बेटर लगता है कि मैं खुद भी अभी है तो शाम जिस दिन मैं फ्री भी होता हूँ सुबह टच बैठता हूँ ऑब्जर्व करता हूँ कोई टच नहीं करता कितने अकाउंट आपने फंडेड लिया जी मैंने उससे एपेक्स महंगा अकाउंट है एपेक्स क्या है 90% डिस्काउंट पे आ जाता है सी मगर जब से ये आप निकाल लेंगे ना पीए में वो पैसे बराबर कर देते हैं ये निकाल लेते हैं शुरू में लेट से $20 लेते हैं सपोज ये जब पीए में हम आएंगे सेकंड लेवल वो 100-150 एरियाज ली जो बराबर पड़ता है ये है नेक्स्ट बार नेक्स्ट 10 टिक ਤੇ ਬਣੀ नहीं नहीं अगले टिक टोटल 10 टिक दी बार है तो ये टिक बाय टिक मूव हो रही है ना नेक्स्ट बार ਕਿੰਨੇ ਟਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀ एक टिक तो बाद बढ़ जाए ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ हाँ जी हाँ जी तो अब हम ये फ्लोर खोलते हैं आपके क्वेश्चंस के लिए सर क्या चल रहा है हाँ जी हाँ जी, 2 पूछें 4 पूछें तो वो जो लगाते हैं ओसी ऑर्डर राइट हाँ जी उसमें लॉस प्रॉफिट भी तो लगाएंगे नहीं नहीं एटीएम सेट करेंगे ना ओसी ऑर्डर में 2 एटीएम बनती हैं हाँ हाँ मैं अभी ओसी ऑर्डर करके दिखाता हूँ नो प्रॉब्लम मैंने यूट्यूब पे देखी थी लेकिन हाँ हाँ उसमें एटीएम आपने पूरा लगा नहीं मैं आपको एटीएम सिखा देता हूँ ओसी ऑर्डर की नो प्रॉब्लम तो स्पेशल उसी के लिए है नो प्रॉब्लम जी रवि भाई एक सवाल है हाँ जी 2 पूछो सर नहीं एक नहीं दूसरा बार नो ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਹੈ कोई ਜਿਸ बात ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਹੈ हाँ जी ਇਹ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਉਸ ਰੈੱਡ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈੱਲ ਲਿਮਿਟ ਲਾਣਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਰੈੱਡ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੈੱਡ ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਿਬੋਨਾਚੀ ਰੀਟ੍ਰੇਸਮੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡ हेलो ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ नहीं चले फिब ट्रेड ਫਿਬ चले और नीचे फिब बॉक्स ਬਾਕਸ So the word we use, because this software that we have built, it does take approximately 12 different types of trades you can take. So let me just close the door. Isko band kar dein. So the idea is that in trading of futures trading, there are 2 primary ways for you to put a trade in. ਓਕੇ One is called scalping trade. ਸਕੈਲਪਿੰਗ मैं आप आया I went in a trade 1 second 5 seconds 15 seconds 30 Card 1 seconds point at all. card 1 point 2 points 5 points that's a scalpers the frequency of that trade is very high meaning that what you're doing is you're executing a lot of trades maybe 5 trades in a day 10 trades in a day let's say if you took 10 trades of 1 point trades तो आपको 10 point मिले then there are some type of trades called they're called position trades or they're called swing trades जुलाई स्विंग इधर गई NASDAQ चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई आपने यहाँ से छोड़ दिया वो 2 4 5 10 दिन के बाद यहाँ पर आ गई या दिन तो नहीं घंटे बाद तो आपने ट्रेड खोला सुबह 9 बजे वो चलता गया खुला रहा प्लस माइनस होते होते प्लस 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 बिकॉज द वे ट्रेड मूव्स इज नेवर instant green or instant red. So let's say 830 was the number, it went up, went down, went up, went down, went up, and then eventually came down, and then this is how the price behavior is.
price behavior is rarely a straight shoot up or a straight shoot down. So this happens too. These are called spikes. They're called short squeeze, long squeeze. There's an area of accumulation, but those are technical things. What we call is, if price has to move, it has to kind of go in like this way, right? And then if it has to go down, it goes like slowly, makes a little bit of a cluster. Same as heartbeat. Yeah, exactly. But heartbeat is a little bit more smoother curve. So heartbeat, your curve is very fixed. आपकी heartbeat resting में 68-70 beats per minute है, exercise में 180 beats per minute, right? So exactly. So हाँ कि अगर हाँ exactly. So अगर आई तो हमें उसमें उसको आपको hit करके ना निकल जाए ना. You Stop. mean never mind if the background color is red Yeah. or green, So- once this white line goes Yeah. into the red box, you So have to let me open this way. So in this type of trade, I don't care about background color. okay. So if I remove the background color, those boxes still appear. So I will wait for this white line of the price line to go inside here. And this is Upper level, the upper level. upper. Upper level. Then we have to sell. Here's the here's the good thing about it. I'm going to automate this. Just like we did the moving average, we did the black candle, we are going to automate this for you. So every swing, it will put a sell limit top of the fib box. Every swing, it will take a bottom of the green box. So every swing has a 23, 31, 61, 78, and then you will take that. So ये काम हम अगले वीक तक आपको ऑटोमेशन पे दे रहे हैं. Why, if you're using the red box, why you have the yellow then? सर देखें जो fib retracement are a mathematical calculation by 4. So if you go on superareas.com and you look at fib retracements, it says super Fibonacci. So your math works with the 4 levels, and these are called shallow pullback, healthy correction, golden ratio, and deep retracement. So yellow has a square. It has a top and bottom. Red has a top and bottom. So yellow bottom is 23, yellow top is 38, red bottom is 61, red top is 78. So these are called Fibonacci. So that's one method. One method is trend trade. First pullback, buy. First pullback, sell. That's a trend trade, meaning you're going with the trend. That's second method. Third method is called support and resistance. S1, R1, R2, R3, R4, doesn't matter how many R's you have, but the idea is, this is the idea. You wait on a certain level, let the price come to you, and then you go long or short from there. So on Friday, the moment, so I have a habit, since how I got into trading is I write a lot of notes. I have books filled. Like एक नहीं है, 3 नहीं, मैं 4. Like every morning मैं कुछ लिखता हूँ. कुछ जाके क्या लिखता हूँ, ये देखें, ये 2023 मार्च 7 की है. मैंने 3 साल होने वाले हैं. थोड़े थोड़े नोट्स बनाते 22 फरवरी 2023 में. If you will see my live stream every morning, I write 5 things. I have a plan, right? So I'm like, so again, let's work on it and let's say, what is my goal? I've shown my live account, I've shown my take profit, I've shown my bull knocks, I've shown my funded necks, everything transparent, and it's all recorded everywhere. You can just search it up. My goal is to make $100 a day minimum. That's automatic. So now let's decide this is 23 hours a day. Now, if you were, everybody knows about ES and MES. Yeah. ES is 2 points, and MES is
20. NQ is 5 and MNQ is 50. If you take one lot of NQ with 5 points moving in any direction, the direction is correct, you can make $100 with this. Smaller accounts, I prefer 100 to 150 to maximum $200 daily. That's a smaller account target. The bigger account, let's say where my buffer is 4,500, my target is $500 a day. Most companies like Funded Next and not Funded Next take profit. If you take the $150K account, your buffer is $4,500, right? Okay. I work backwards. I've shown you Lucid live on my screen. This is Can you explain the 500? Okay. This is, first of all, I'm not sure if you know how funded companies are. Okay, oh, very good. So 500 is, if I have a $4,500 buffer, my daily target is $500. So 150K accounts on maybe the bigger companies, I'm preferring $500 day target. So my target is 500. This target you are setting, this is... No, I have my personal thing is because if I make $150 a day, in 10 days or 12 days, I'll pass my account. And I prefer to do micros in my professional, pro, master, PA, I do micros. Because the stage 2 is micros. The stage 1, you have to finish is faster, 30 days, so you can go with mini. Meaning evaluations, Apex evaluation, Bullnox evaluation, Funded Next evaluation. The round 1, you can pick micros, minis. And then the moment you go into round 2, because then this is a payout stage, there's no reason to go minis at all because couple of minis trades are gone and then your account is blown and then you're back to square one. So the goal is, okay, I want to go micros on stage 2. I did per dia. I've shown you per dia. I've taken $35,000 out of per dia and with micros here. 2 micros, 3 micros, 5 micros. I will never exceed more than 5. So that's my goal. So if I were to do, let's say every trade I took and I did with 5 MES. MES, you said you have to make 20? No, MES 20 पॉइंट चाहिए ना 100 बनाने के लिए 20 पॉइंट होंगे एक MES होगा तो 20 पॉइंट दिन में चाहिए उसको चलाने के लिए राइट MES माइक्रो हो गया ना तो चले यार अब मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं 5 माइक्रो से जाता हूँ चल और नीचे ले आए मैं 3 माइक्रो से जाता हूँ देखिए MES is not as volatile as MNQ. MNQ, you know what I start with? 1 micro. Because 1 micro power is enough that on Thursday and Friday, market moved 1,800 points. It was trading at 500, and then it went down to almost 27,130. Then it went back up, and then it reversed. Within that, Apple, Microsoft, Meta, Amazon, and Google earnings, and plus FOMC, the price had traveled 1,800 points within a couple of days. Insane. So micros will be risky as well, right? So no problem. So first, my assessment every morning is, you will see me write 5 numbers. If it's ES, I'm writing night session high, night session low. Value area top, value area bottom, and the last thing is called pivot point. Every morning, religious practices with a discipline, I write 5 values. So what was the price? Now what will happen is Monday morning at 9 o'clock, you will see me come onto my desk, and I will say, all right, night session high is from 6 p.m. until the current time of 9. What was the highest point? What was the lowest point? That's called the range. I established the range of the day. What is my value area? 70% of yesterday's volume. Okay, where did the price, what did the traders do
yesterday, 70% of, if 100 trades got taken place, where were the 70 trades taken? So this is support and resistance method. So one method I said, Fibonacci box, our software gives you. One method I give you that you can look at trend, mid-band, 50% range. One method is RSI, Relative Strength Index. One method is RSI with divergence. One method is divergent, one in SRES. You can start going back and forth. That's not the goal. Last week we gave instructions to our mentors, stick to top 3. Do an area, do a mid-band, do a Fib box. Just stay within them. Don't start to introduce so many other types, right? So you take this and then you look at it, all right, what is my first level of resistance? Night session high. After that, our areas start to come into the picture. आप मुझे हमेशा प्राइस का वेट करते देखेंगे. I just sit and wait and wait and wait and wait and wait, and I waited till 7,300, then I put a mini, then I got 2 points and I'm out, right? So there are, in trading, the most difficult part is for me to wait. That's the most difficult part. So the idea is that I will make you, we are all hunters in a jungle. This is the jungle. You got to go search for your food, man. And in this world, there are 2 types of methods. You can chase your food like cheetah, very good animal. How do they chase? They chase the food. हिरन आ जाता है, वो भागते रहते हैं. Rabbit आ जाता है, वो भागते रहते हैं. पूरा दिन भागते रहते हैं, फिर उसको पकड़ के खाते हैं. There is another animal called a crocodile. बैठे रहते हैं, वेट करते रहते, फूड उन तक आ जाता है. वो कोई पानी पीने आ गया, कोई ज़ेब्रा आ गया. तो आपने कौन सा ट्रेडर बनना है, ये आपकी चॉइस है. I don't dictate it. You want to scalp, chase the food that comes in, or you can sit on any of these support or resistance levels, and then our expert, like analysts, are just looking at the market. Nobody is saying buy from here, sell from here. They're saying, all right, I am looking at the market, I am looking at the chart, I am giving my best possible guess, prediction into this. What would you like to do? So then I on Friday said 8:30. I looked at it, I said, hey, it should. Now I have some trolls. I know it's a hard word. We call them, वो market के राउंड लगाते रहते हैं. 100 ट्रेड दिए हैं, 8 सही गए हैं. जिस दिन 2 ट्रेड खराब हो गए ना, राफे साहब से बुरा ट्रेडर ही कोई नहीं है. यार उसने प्रेडिक्शन दी थी, नहीं चली. ओ भाई पिछले 3 साल से ऑनलाइन बैठा हूँ. अगर मैंने 10 प्रेडिक्शन दी है, मैं खुद कह रहा हूँ 8 ठीक की चलेंगी, 2 नहीं सर चलेंगी. आपने बताया था ना 85-87%. नहीं मैं कह रहा हूँ 85 से 87 तो हम कहते हैं ना, लेकिन मार्केट की कुछ गश्तियाँ होती हैं जिसको मैं पोलाइट नहीं रहूँगा, हर जोली में जाके बैठती हैं. इधरों उठे उधर बैठ गए, उधरों उठे उधर बैठ गए. ओ तो इंग्लिश में अब कह देता हूँ, देयर आर सम मार्केट प्रोस्टिट्यूट्स. एक से उठे, ओ भाई इस कर रहे हैं, ये उधर जाके बैठ गए. ओ भाई आपको एक कुछ दे रहे हैं, अगर बैठे हैं तो डोंट एक्ट लाइक दिस. Act with maturity. Maturity is, if I'm giving you a prediction, you gotta look at my, like last 1 year, last 3 years, last 15 years, last 1 month. And then this guy is giving a prediction. Is it going wrong every time? You have to give me some benefit of doubt, right? नहीं होता ये है कि यहाँ पर एक ट्रेड हैप्पी गलत करवा देना. मीन गलत क्या करवा दे, उसने प्रेडिक्शन दी, नहीं चली. नहीं ना हैप्पी चला रहा है ना मैं चला रहा हूँ. वो क्या करेंगे, नहीं जी मज़ा नहीं आया, रमनीक के पास जाके बैठे. वहाँ से अकाउंट उड़ा के आएंगे, अक्रूब के पास चले जाएंगे. अक्रूब से उठे विक्रम के पास चले गए. ओ भाई उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है. पता लगे यहाँ से हैप्पी से गए ट्यूलिप के पास, ट्यूलिप का भी स्टॉप लॉस लग गया, आपका भी लग गया, आप भी कह रहे यार नहीं, सिस्टम नहीं चलता. What you have to do is, how do you know what's Einstein क्या था यार, उसने कहा कि आप
if you take a test and you keep changing the parameters every time and you're expecting same result, it's not gonna. You have to experiment, same test, same conditions. Meaning, okay, I will only take trade at expected high of day. Then you say, all right, I took 10 trades. How many trades failed? How many? So what happens is, each method that we have has a win ratio or a loss ratio. The probability of an area trade has 85%. Fibonacci trade has 80%. First pullback trade has 70%. SRES had 70%, because I looked at every possible type of trades. And then they looked at it that, what is the highest accurate method? There's times where I've blown accounts, where I've looked at the price and it did not stop there. I had to cut my losses. You just have to do your own risk management, right? So, but what we are still claiming today, that the support and resistance level is the highest predictor amongst all of them. Yes, you can take a scalping trade. Now, I'll tell you the problem with most traders. They took 2 points. Let's say if you really, really wanted to pass a test or an evaluation, you need 2 solid points on ES every day. So, if you want to pass an evaluation with $1,500, okay, let's work backwards. $1,500 is your target. Take profit, Apex, Bullnox. This is the smallest target. I know Lucid has the bottom one. So 1,500. Let's divide that by ES. In a month, you need 30 points. In 1 month, you need 30 points. In 1 month means 23 hours a day times 20 days. You tell me you can't make 30 points in a month? यार इतना पूरा दिन पड़ा है, आपने 30 पॉइंट लेने हैं, आप सिर्फ वेट करते रहो, अपॉर्चुनिटी का आ जाती है. If you were to do this in NASDAQ, which I don't recommend, you need 75 points in a month. In 1 month, you will pass your test. Okay, micro. Let's assume you take every trade with 3 micros, MES. Divided by 15, you need a total of 100 points in MES in a month in order to pass it. So if I said that, okay, my area trades are 85%, but if you take expected high, they're 90%. If you take, now I have to teach a little bit of a probability because most people will fail at this math, because this is all math, basic math. It's not, doesn't take a PhD engineering level math. It's a very, very probability-based math. Let's say I draw 10 boxes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And I tell you, sir, the fib box trade has a probability of 70%. So we write the trade, fib, method is fib, probability is 70%. And let's say your stop loss is 3 points and your TP is 1 point. That's a basic, very scalping. It can't get any basic than this. You took your first trade and you got $50. You took your second trade and you happen to get your $50. Does this mean your probability changes? No. What does this mean? You are right now at 100%. You took 2 out of 2, you're good. Most people will not stop here. अब वो कहते हैं blindly red, green. So you take third, fourth, fifth. But remember, 3 trades are hidden. That is still dangerous. Maybe your next trade will hit a stop loss. So what you do in trading is you don't push your luck.
You don't push your trading. If you have successfully met your target within your threshold, then just leave this. You're like, I'm not doing this. Maybe I'll take an opportunity at some expected high. So what happens is, I've seen this a lot of time. Area is coming. They took an area and they took a stop loss. Immediately, they went into a fib box, and then they lost a fib trade too. Next, they will go into a swing trade, like a trend trade, and they lost there too. Now their mind is saying, यार कोई भी method नहीं चल रहा. उनको so what they're doing is they're messed up their math. What happens is, this could be the third trade inside the area, maybe the fourth trade of today inside a fib, maybe the third trade inside a trend. It just happens to be whatever method you took had failed, right? And then you're like, nahi yaar, na fib chala, na midband chala. It cannot happen that every single. So if you take a look at your testing, the word is called back testing. So when you look at back testing, you will test the same thing for at least 100 times. That I have taken 100 trades of Fibonacci boxes on red and green. My ratio is 60%. My ratio is. Another good way to test something, very simple, is you draw. You draw basic math likh liya kare. Fib. At what stop loss and what TP do I become a successful percent trader? So if I'm saying 3-to-1 is the stop loss and R to R ratio, or et cetera, like you can do 1-to-5, you can do 1-to-3. The mid-band trade, or what we call it a trend trade, works with 2-to-5. That we are risking 5 points in order to capture minimum 2. So that's a mid-band trade. What you can do is, so let's say at this scenario, you will have to write down and do some math. And every single trade or every single strategy requires you to do this. Let's do fib. 1 TP, 3 SL. $50 profit for $150 stop loss. If I took 100 trades at this ratio, what is the optimal setting? Maybe you want one tick up or one tick down, because you want to fall within the probability of making it win. So you might say, all right, it's good 8%, but you say, all right, let's do a test here. 100 trades. 70 trades are good. 70 times 50, $33. ठीक है? और दूसरा आपका आ गया 150 times 30. आपके पास क्लियर पिक्चर आ गई. ये ठीक नहीं है. मैंने एक ट्रेड लिया where I had set up a TP of 50. This is how, by the way, you refine a strategy within your scalping method. That, okay, every time I take a trade and I put a 3-point stop loss in this trade of Fibonacci method, 70% is a losing trade at this ratio, because you're collecting only $50, but you're giving up $150. If you took 100 trades, you will gain $3,500. But if you lost 30 trades, you're a net loss of minus $1,000. So you scrap. You're like, no, it has to be bigger than 70%. Otherwise, it's not favorable. You start to look at 80%, $4,000. Then you look at the opposite side and you're like, okay, 20 times 150, 3,000. You're net positive $1,000. Got it? So this is how you refine a strategy, and you adjust your scalping
That's how you will see on MT4 a lot of guys who are writing a bot for scalpers gold. You will see XAU USD $5, $8, $2, $5. What they're doing is they're refining the highest probability with the smallest stop loss and the most amount of wins. So they will say, all right, if you set up this TP and this stop loss, and if you're at a 70% win rate, you're actually net negative. But if same trade becomes 80% successful, you're actually net positive. Let's say 90%. थोड़ा सा और बढ़ जाता है. So in order for this fib method to be successful, I must do 80% win rate, or at least 75% at a break even. So this is how you always, if somebody gives you a strategy, you're like, all right, I like your strategy. What's my TP? What's my SL? Then you start testing. But you have to understand, you can't test like with different mechanics. If you're taking a 30-tick chart, you got to do this in a 30-tick. If you're doing a 10-tick chart, you got to do this in a 10-tick, because the ratio changes on every. तो अब एक मैथ निकल आएगा आपके सामने खुद कि मैं, now let's do first pullback on trend trade. $100 का है और $250 का रिस्क है, मिड बैंड. अब हम ये कहते हैं इस ट्रेड को कितनी दफ़ा चलेगा तो फिर हम सक्सेसफुल होंगे, वरना तो फ़ायदा ही कोई नहीं. अगर आपने 10 ट्रेड लिए, अब 100 ट्रेड पे जाके बात होती है, 10 पे वैसे इनफ डेटा नहीं होता. 10 पे तो क्या पता 10 में से 7 चलें, लेकिन अगले 10 में से 3 चलें. आपको स्ट्रैटेजी मिनिमम 100 दफ़ा टेस्ट करनी चाहिए एक, फिर आपको पता लग जाता है कि स्कैल्पिंग मेथड चल रहा है कि नहीं. So in this case, if you took 70 trades, that's $7,000. But on the same time, 250 times 30, $7,500 you lost. You're net negative. So 70% is not good. बड़ा आसान फार्मूला आपको दे रहा हूँ. आप RR की रेशो लगाएं. आप कहते हो हर दफ़ा मुझे 2 पॉइंट मिल गए, हर दफ़ा मैंने 5 points given away, 70% is net loss. So what you're expecting is this strategy, either I need to lose less or I need to gain more to reset. So you say, all right, 250 ज़्यादा है, 200 कर देते हैं, उसको टेस्ट करते हैं. So we have done this extensive studies over 3 months, over 6 months, over 12 months. We have a conclusion. Conclusion is area is 85%. However, if you take it to the next level up within the area, expected high goes more than 90%. That the price, but here's the problem with this. You're not going to hit expected high every day, because the odds are less, your favor is more. So look at this. I did a study right here. I looked at a month and I said, all right, Rafay, I will only trade if the price, I looked at one account, मैंने कहा ये वाला account is there, सिर्फ और सिर्फ price expected high में जाएगी ना, तो मैं वहाँ से sell करूँगा, और expected low में आएगी तो मैं buy करूँगा, और मेरा कोई trade नहीं है. इस account को dedicate किया for this purpose only. And then let's look at October of last year. Any other conditions I'm not trading. I'm not, if it goes to R1, S2, R2, S2, I don't care, I'm going to ignore it. However, the moment it goes into my R3 and S3, how many times I'm successful? So, October 1st, there's a trade. So let's count, first of all, either or, R1 or R3 or S3. No R1, no R2, no S1, no S2. Because I want to increase my probability of winning. So I look at it, this is where the patient comes in. And TikTok install kare, time acha guzar. So October 1st, I did hit R1. So I tracked it.
So that's one trade so far. Nothing October 2nd, nothing October 3rd, nothing October 6th, nothing October 7th, October 8th again. 7 दिन के बाद ट्रेड लिया है नहीं, पहले नहीं लिया. विन 2 out of 2 वहाँ से निकला और मैंने ग्रीन इसको सेट कर दिया था कि भाई इसने हिट किया और हमारा स्टॉप लॉस नहीं खाया. Then you got no trade, yes trade. October 10th, 3 trades. October 14th, 4th trade. Nothing here. October 16th, S3. No. October 22nd. So 4, 5, 6 trade. अभी कहाँ लिखा हुआ है कि वो वाइट रेड, वो तो ग्रीन तो नहीं है. नहीं, ये R3 है ना, और नीचे S3 गया है. या R3 पकड़ूंगा या S3 लूंगा ना दिन में. नीचे भी है. नीचे भी तो निचला जोन भी तो है ना. अच्छा, मैं वो ऊपर देखता तो और 28 का एक और 28 के बाद नहीं और 30 का एक. Now look at this. 5 plus 3. In October of 2025, I only took 8 trades. Out of 20 days of trading, and I was successful every single day. I did not take a scalping trade. I did not take a fib trade. I didn't take a divergence trade. I didn't take this trade. I only said, all right, I will only wait for the price to hit expected high. And I will place my trade, and I will get my couple of points. So out of 20, by the way, an average trade, every average day of trading is 20 days only, because 2 weekend निकल जाते हैं तो 20 हैं. So in October of last year, 8 times out of 20, it either hit expected low or expected high. Yes, there were more days where it hit R1 and S1 too, R2 and S1 too. So, but if you decide that I will only take expected high and expected low, you can go anywhere from 7 to 8 days in a month. Not more. More than that, price is not traveling unless you had CPI, unless you have PPI, things like that. So you kind of have to come up with a method. Mera method kya hai? I take scalping trade. Then you decide what is my optimal stop loss and what is my optimal TP. If it has to hit 80%, I will do this. So a lot of people I know will take a VWAP trade, which is on a 5-minute candle or 3-minute candle. Every time it hits that, they will do a short or a long. That's a method. Some people put a fair value gap on a 15-minute or a 60-minute. Some people take divergence. Man, this software and these markets and these indicators is not unlimited. At least 12 different types of methods can be expected. I would like you guys to be expert at all 12. Like at least top 3 should be that every time you, by the way, Daniel, आवाज से आए हैं 18 साल से एक ही करते आए हैं. उनकी 4 क्लासेस फिनिश करें, वो कहेंगे ग्रीन है तो बाय करी जाओ, रेड है तो सेल करी जाओ. वो अपनी लेक्चर्स में they don't talk about any complications because they understand that 23 घंटे में, or but he does refer to it a little bit better way, and he says it, please trail your stops. What does that mean? He says, put a 5-point or 3-point. Don't 2 points, you be at break even. So he has a very, because he doesn't believe in teaching you guys a universe of it at the beginners. Your thing is, put a TP of 2, put a stop loss of 5. The moment you see 2 points, move your TP to your break even. Okay? Stop loss. So move your stop loss to break even. You are now confirmed you're not going to lose this trade. Worst is you're going to take $3 in commission. Got it?
However, if the probability happens to the trend continuation happens, you will make more money. You're not going, maybe you just have to take one trade. And that one trade has picked you up quite a bit, and then you're done. Huh? वो हैप्पी को लें केड़े ले सर वो उधर पड़े हैं अभी उनका उधर ऑफिस में पड़े हैं वो बाद में बना देंगे नहीं सॉफ्ट वो पेमेंट ले लो वो कस्टम से बाकी कर दें सॉरी गाइस सो what I was saying in this type of method was what he teaches is you take a trade mid band trend trade आपने trend trade लिया 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया the moment you saw 2 points you put your stop loss at a break even. Now what is the probability? So let's look at this type of trade probability because then you don't have to do a lot of trades. A single trade will give you the highest probability. Okay, there you go. Let me add a background right here. So sell indicators and let me add a background too. MD background. Okay. Okay. You sold right here because it's magenta, it's hitting the mid band. You see, it went against you maybe. So you entered the price of 72.72. It went against you to 72.30, 72.73. It went against you 1.5 point. So you saw negative $62. Your mind is saying maximum $250. That's the maximum. Because you already know my stop loss is this. However, at this point, you became a break-even. 72 is falling, it went against you, 72, 73, 73, 50, coming down, break even, 60, 71, 69, 68. You move your stop loss at 2 points to break even. Okay, good. Now if you trail this swing was 14 points. You literally 3, 4, 5, because what happens is in every type of a swing trader or a trend trader, you don't know how big the next swing is. If this is a 5-point swing or if this is a 35-point swing. There's a lot of volume coming in very fast. A lot of orders are going to get picked up. Panic selling is happening or buying is happening. Bulls are coming in. So, but if you are trailing, so you have to become an expert at trailing. कि आपको ट्रेल करना आना चाहिए एक पूरी वीडियो बनी हुई है कि कैसे वो खुद ब खुद मूव कर देगा स्टॉप लॉस से टीपी से आगे ट्रेल करेगा तो उस केस में आपको नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा नहीं चाहिए लोग बैठ जाते हैं और ट्रेल करते रहते हैं और उनका 200 बन गया 150 बन गया फिर दिन का टारगेट है ना पहला ही ट्रेड लिया और वो कहते हैं यार नीचे स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो 300 बन गया जी बन गया वो अभी अंदर मुर्ताज से बैठ के आऊँ कहता है यार मैं हर ट्रेड में 200 के बाद बंद कर देता हूँ मिनी खेलता है 200 का मतलब होता है मैक्सिमम 4 पॉइंट 50 50 50 200 के बाद वो कहता है मैं सारे अकाउंट बंद कर गया हूँ अगला पे आउट के लिए 40,000 का बैठा है कॉर्बेट कैश पे ले आया 70,000 की सो इतना मुश्किल है दूसरे हमारे पास एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं 9:30 पे 15 मिनट डालते हैं राइट 15 मिनट डाले 9:32 पे $45 विच किया निकल गया राइट सो दोज आर वेरी एग्रेसिव ट्रेडर्स on NASDAQ right so you can pick NASDAQ you can pick in ES you can pick gold you can pick crude oil but pick something that it truly makes a little bit of a sense so ये है और कोई जी सर सर NASDAQ में आप क्या सजेस्ट करते हैं क्योंकि 9:30 जब मार्केट खुलती है वेरी देखिए आपने उस वक्त ट्रेड ही नहीं करना मैं नहीं नंबर्स आ जाते हैं ना देखें नहीं ट्रेड के बाद मिनट्स नहीं है बाई नंबर पे आई विल गिव यू एक नंबर दिया फ्राइडे को एक नंबर दिया थर्सडे एक नंबर दिया कि मेरे पास है एवरी मॉर्निंग आपके लिए मैं NASDAQ में ना ये नंबर आते हैं
अब फ्राइडे का मैं आपका नंबर देता हूँ। फ्राइडे में हमने सारों से कहा था 820 830 पे आ जाए ना, यहाँ पर हम एक माइक्रो को सेल करें, ठीक है। 830 पे नहीं रुकती, 30 40 50 चढ़ते चढ़ते 910 तक आ जाती है, फिर वापस आती है 860 पे जाता है, फिर जाती है, फिर आती है, स्टेबल हो जाती है। But then eventually everybody got out in profit. If you're doing micros, you generally don't worry about stop losses because it's such a minute. If I have to do a dollar cost average, I'll do it at 920. Then my average, because it has already, what was the night session high? I believe it was at 675. I didn't even take 675. On a demo, I took it, but on the other account, I said, ठीक है, जाती है, 675, 775, जाने दो। मुझे पता है भाई, मेरे कंप्यूटर ने एक एरिया दिया हुआ है, वहाँ से रिस्क में, मेरा वर्ड क्या होता है? Computer is telling you this is where the risk begins. You can start taking your risk. I will never tell you it's take a mini or a micro. I will never tell you take one lot or a 10. All I say is the zone is coming. ES zone is coming, ES R1 is coming, R2 is coming, S1 is coming, R3 is coming. You have to make that choice. If you're a comfortable trader, you may put in 2 minis. If you are a little bit conservative trader, you may put 1 micro. I have somebody sitting in front, they were doing live account, it even with 1 micro, no heartbeat stress, no nothing. It went against us $180 and then came down and he ended up making $40 on a live account. Like they बैठे रहे हैं, एक price वहाँ आ गई, वहाँ पर sell किया, buy किया, and then end of the day, he went profitable. Now, that's how the area. So NASDAQ, please, for God's sake, just wait for the number. डेली लॉस कितना होना चाहिए? डेली लॉस नहीं, daily loss is the rule is 30% of your balance. So if you have a $1,500 account and you have lost like $450, I don't think you should trade anymore or recover it, because you have kind of given 30% of your capital to your broker back. So like if you have a prop firm, maybe you can go up to 50%, but on a live account, देखें कोई भी 450 तो लूज करके नहीं उठेगा ना। मैं क्या देखता हूँ, सामने बैठे हैं, 1500 का अकाउंट है, 2 मिनी से गए हुए हैं। Oh man, and I look, what the hell are you guys doing, man? 1500 का अकाउंट है, 2 मिनी डाले हुए हैं। नहीं तो अभी आप खुद कहते हैं ये 11 तो मिनी करो। नहीं, लेकिन बात पता है क्या, सुनता कौन है? मेरी बकवास कौन सुनता है भाई? सामने बैठे हुए हैं, मेरी लाइव स्ट्रीम सुना करें। सर 2 पॉइंट डन, मैं कहता हूँ भाई आया ही ना करो ऑफिस में, घर बैठ के कर लिया करो। 400 डन, मैं मिन्नतें कर रहा होता हूँ भाईजान उड़ जाएं। वो किसी के 500 डन है, they're not getting up, it's okay, then they keep blowing an account. So even if I sit in front of them and they're not listening, they're not listening. So it's not like you take my system and you become the most expert discipline. I'm not here to teach you discipline, I'm here to teach you the technicals. I'm here to teach you support and resistance, RSI, moving average, blah, blah. I'm not here to like babysit you how to trade. I say, hey, if you will trade successfully, I have happy here, पूरा दिन ट्रेड कराता है, 2 घंटे ट्रेड कराता है, घर जाके लोग अकाउंट साड़ देते हैं। और भाई इसमें हैप्पी का कसूर है? कल हमें गुस्सा लगा, किसी ने कहा तुक्का मारता है। भाई आके बैठो ना, हिम्मत है तो सामने बैठ के ट्रेड करवाओ ना, गट्स है ना तो चेहरा खोल के सामने ट्रेड लगवाओ। ठीक है, इट कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। Easier said than done, right? Get up at 9 o'clock, start your drive from Orangeville. A lot of people say, yeah, I make a comfortable amount of living. Watch my live account. I turned $81,000 into $177,000. Why do I do this? Because I enjoy my work. From Orangeville से चलता हूँ, 7:30 a.m. 9:01 पे मेरी stream start हो जाती है. Stream starts, then I leave by 2 o'clock. So I do this because I have a lot of every energy, like every day, same energy. You tell me the level of energy that it's mismatched with amongst our group.
वो इनिसफिल से आता है हैप्पी, उसको कोई मुझसे बैरी से आता है, वो जाके आपके सामने आके बैठता है। 2 घंटे जाना। ये बड़ा आसान है कहना कि स्क्रीन पे बैठ जाओ मैं आपको ट्रेड करवा देता हूँ। भाईजान ऑफिस आके खोलो, गाड़ी पैक करो, 401 403 407 लेके आओ, क्योंकि आपके सामने जिसने पैसे दिए वो बैठा हुआ है, वो आप उसको गाइड करो, उसको दिखाओ, बताओ। तो ये करके दिखाए ना, अगर पूरा चैलेंज लेना है तो लें। एक कमेंट करना बहुत आसान है कि वो तुक्का मारता है, वो पढ़ पढ़ के वो आपके ट्रेड करता है। सो एनीवे, अगेन आई एम नॉट हियर टू, आई जस्ट से इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। यार मुझे तो किसी ज़रूरत, मैं आपको ट्रेड घर से भी बेच सकता हूँ। हम इसको काम प्रोफेशनली कर रहे हैं, और फिर मेरे सामने बैठे वाली बात नहीं सुनते। मैं कह रहा हूँ यार माइक्रो में जाना, MNQ है, ऑल टाइम हाई है, 675 के बाद दिस नोबडी हैज सीन दिस नंबर। और जी राफे साहब ने 830 दिया था, वो तो रुकी नहीं 830 पे। और भाई मेरी खाला लगती है जो रुकना है उसने, या मेरी अम्मा लगती है जो उसने रुकना है। मैंने आपको प्रेडिक्शन दी है, मैं भी तो वही चार्ट देख रहा हूँ। या तो आप नैस्डैक के हेज फंड के मैनेजर हो ना, कि आपको पता है कि इसने 28,000 पे जाना है। ओ भाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऑल ऑफ अस एनालिस्ट are just predicting and watching it, and then we're trying to make the best case possible to do the scenario, right? And then if you, जी, एरिया ट्रेड हैं जैसे जो लेवल्स फॉर एग्जांपल R2 होता है या R3, तो फॉर एग्जांपल 27,400 है, yes. तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? वो 398 पे लगाएं या 402 पे लगाएं? Sir, देखें, computer, you have to understand, if you ask ChatGPT how much money moves in NASDAQ, they will say the notional value is $250 billion. There are like well over 250,000 contracts that get traded in a single day, sometimes even 500,000 contracts. To pick a number and give it to thousands of traders or analysts who are looking at it, it takes a lot of energy. So what happens is computer does most of the work for us. It has looked at a lot of scenarios and looked at it, so it makes something called a range. So you have to kind of, it's a very interesting question, and from a math perspective and a playing field like Earth does is this. So don't think of an elevator ever. Price is climbing. $400, $390. So price is, it gives a bit of a range, because computer feels it can't give you a precision. Because that would be like, I hit a golf ball from here, it goes to a very hole in one. Very rarely you hit the shot. But our computer is saying, our algorithm is saying, if it ranges within this price range, it should do a trend reversal momentarily. Now this could be, now this is how the prediction process. So prices
my voice okay now? Is the voice okay now? Can you guys let me know, is the voice okay now? Because it's coming out of a MacBook now. I don't know what time did the voice start. Is audio okay? Okay, fixed now. Okay, sorry. Okay. I think we are good. Mic, audio mixer, mic, okay. All right, good. Okay, so where were we? Sorry. I lost my... No, ma'am. रुका कहाँ था ये पहले सोचो. चलो आपको याद आ जाएगा सर जब हम सवाल करेंगे ना. आपकी मदर टंग नहीं आएंगे. फादर टंग. Sorry? So what they're testing is, they're testing an interesting module method is what they are writing for the past 12 days, night session high, night session low, and they're saying if the price is opening above the mid-range, the chances are it is heading towards night session high. So if for the last 9 days they were successful, and I said don't count the earning days because the night session is too crazy. So what they did was they looked at night high, they looked at night low, and they looked at mid-range divided by 2. If the price was opening above the mid-range, it's heading towards, so the moment it opened, they went long. And then they got few points. If it's opening below the mid-range and base is down, pivot is down, and they were opening, and they went to that way. So that's one study that somebody's doing, and they've been pretty good at it. I mean, pretty successful at it. So again, something Gigi pata hai. How come there's two S2s and two S1? Okay, one is calculated by Ninja called Ninja Pivot, Oh, the big ones. and one is calculated by our algorithm called the super area. So that's why there's two S2 as S3s. Oh, so you guys go from midnight to midnight? That way? No, it doesn't matter. Yeah, one is by Ninja itself that goes to, and our are just different ranges. Isn't it better to use a Ninja one? So if it falls within it, then we will use it. That Yeah, because yes. seeing that. No, that's an additional. लेकिन वो बड़ा precise हो जाता है ना. हमें range चाहिए होती है कि किससे reversal आ सकता है. वो एक point देता है सिर्फ आपको कि ये सिर्फ resistance है. नहीं, मेरा मतलब ये है कि देखो अगर अगर दो S2 है ना, बस मिसाल देता हूँ. हाँ, नहीं कई दफ़ा वो S1 होगा और हम S3 पे होंगे. तो हमारी रेंज डिफरेंट है, निंजा की इटसेल्फ की पिवट्स डिफरेंट है. तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं. अगर दोनों एक दूसरे के अंदर सिंक हो जाएं और बेटर हो जाता है, तो वो नो प्रॉब्लम. What represent pivot point? Pivot point support and resistance, right? So PP, S1, S2, S3, S4, R1, R2, R3, R4, pivots. But what we do at super areas, we give you a pivot range. That okay, from this range. Yes. सर वो आप लाइफ में ऐसे बोलते हैं माजिद भाई की स्ट्रेटजी है वो. देखिए माजिद भाई की स्ट्रैटेजी क्या है, हमने उसका नाम ये रख दिया था क्योंकि मेरा भाई आया, वो टेक्निकल नहीं था. वो कहता है यार मुझे कुछ नहीं समझ आ रही ये क्या है, मैं DHL का ड्राइवर हूँ, अब मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा, मुझे कुछ तरीका बता दो. उन्होंने ये कहा कि ठीक है, ये तो देख सकते हैं ना कि 30-20 का चार्ट कौन सा है, ये तो देख सकते हैं ना 15-10 का कौन सा है. वो देखते रहते हैं कि 30-20 ग्रीन हुआ, 15-10 के मिड बैंड पे जाके ऑर्डर लगा देते हैं. किस मार्केट में? AS 30-20 30-20 ग्रीन हुआ, 15-10 के मिड बैंड पे जाके ऑर्डर लगा देते हैं बाय लिमिट. Does it also work on NASDAQ? NASDAQ में खाली 30-20 या 60-40. NASDAQ के लिए 15-10 में तो चार्ट ही फ्रीज हो जाते हैं. तो वो इतनी स्पीड से चल रही होती है कि आप प्राइस कुछ देख रहे होते हैं, चार्ट कुछ प्लॉट कर रहा होता है, टांग किधर, सर किधर, आंख किधर, ऑडियो वीडियो क्या ऑर्डर. recommend करते हो आप NASDAQ में कौन सा chart? NASDAQ में हम लोग कैंडल चार्ट यूज करते हैं, प्राइस एंड रेजिस्टेंस. NASDAQ में हम स्कैल्प वाला, अगर NASDAQ में हमने 2 स्ट्रेटजीज बनाई हैं,
वो उसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज। वो अगर क्रॉस हो जाए तो इसका मतलब है जनरली ट्रेंड दूसरी तरफ क्रॉस कर गया। लेकिन वो मूविंग एवरेज भी हम यूज़ करते हैं 60 और 40 टिक्स के बाद। मीन 40 टिक्स अगर एक साइड पे चल पड़ी है ना तो वो उसकी एवरेज भी सही जा रही है। और अगर so if we look at, so let's do a chart here for this is let me make a chart here. So this one is 30-20. I'm going to change the data series to 40 and 60. So if it has only again problem is if it doesn't have enough swing, you will hit a stop loss. क्योंकि मूविंग एवरेज के अंदर भी तो स्विंग चाहिए ना हमें। अब यहाँ पर you made money, you hit a stop loss, you made money, you hit a stop loss, you made really good money because this swing has been so continuous. It was almost a 36-point swing. You made money here, you hit a stop. So if your swing inside a moving average is less than 20 points, you're not making money. The next swing आ रही है ना, आ रही. If the swing is less than 20 points, you're not making money inside a moving average trade. So that's again, so what we are considering for NASDAQ, we looked at a lot of charts and we looked at a lot of Fibonacci retracements. And we said, all right, at what level we are getting scalping at least 2 points or 3 points. देखिए आपको NASDAQ में अगर हर स्विंग पे 2 पॉइंट मिल गए ना तो आपके $40 बनते हैं। 1 NASDAQ is 20, 2 NASDAQ is $40. Happy is writing a strategy, I'm writing a strategy, he's doing a breakout strategy, I am doing a Fibonacci strategy. Both we're actually coding and programming and working with developers. So we have injected that strategy into a 30-20 or into a 60-40. And that is giving us almost 90% of the time 2 points. So let's say you turn it on. You hit go 40, 40, 40, 40, done. What you have to do is you can't, the way strategies work is again like a flipping a coin. If you have done first 4 trades in your favor, you should turn off your strategy because the idea is I'm done. मेरा पहला ट्रेड 2, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इसने फ्लिप करना है 40 दफ़ा। आपको मोटर आपने स्टार्ट किया, उसमें से पहले पंप में आपको 40 मिले, दूसरे में मिले, तीसरे में मिले, चौथे में $80 मिल गए। अगर 4 times 40 है $160 आपको मिल चुके हैं। आपका लॉजिकल पार्ट ऑफ ब्रेन कहना चाहिए भाईजान बंद कर दो, $160 मेरी स्ट्रैटेजी से आ गए, ऑटोमेशन से आ गए, मेरा दिल है इसको बंद कर दो। मॉर्निंग में आपने चलाई 9:30 पे, 9:35 पे, 9:36 पे और 4 मिनट में उसने बड़ी बड़ी स्विंग दी क्योंकि मॉर्निंग में तो वॉलेटिलिटी बहुत होती है, ऑर्डर्स लग रहे हैं स्टॉक्स के, ऑप्शंस के। वो आई 4 स्विंगें दी, आपने अपना ट्रेड लिया, डन कर दी। अब आप कहते हैं नहीं यार ये तो बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैं तो इसको 23 घंटे चला सकता हूँ। होगा ये, मैंने स्ट्रैटेजीज कुछ टेस्ट की हैं, सुबह रात के 11 से सुबह के 4 बजे तक उसने मुझे 1200 बना के दिया, खुद ही ऑटोमेशन। 7 बजे कंसोलिडेशन आ गई, 10 अप 10 डाउन, 10 अप 10 डाउन, 10 डाउन, 5 अप 5 डाउन, पूरा अकाउंट सड़ गई। प्लस 1200 से जब स्विंग आ रही थी, पैसे बन रहे थे, जैसे ही उसने कंसोलिडेशन शुरू हुई तो आपकी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं उसके अंदर भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि मुझे कंसोलिडेशन में उसको नहीं चलना चाहिए। कुछ स्ट्रैटेजीज कंसोलिडेशंस के लिए होती हैं और कुछ स्ट्रैटेजी आपकी स्विंग के लिए होती हैं। सो idea is of a strategies, we have a strategy called black candle. You turn it on, zoom, done $200, and then you're like, all right, I got to turn it off before it rips my account apart, right? So that's the thing. There's no 100% strategy. You just have to co-pilot it.
I have asked the developer, let's do it this way. People are greedy. They're just, human behavior is not that great at following directions. Why don't we plot in $500 or $200 inside the strategy? The moment it has collected $200 from a strategy, it will automatically disengage. So that's it. So I mean, if it ran for 4 trades, if it runs for 5 trades, you're done. So it won't keep running the motor dry and then you're gone that way. E-transfer ले लो, happy नो कह के. हाँ, ठीक है, no problem, no problem. So, all right. So this is the strategy. So very soon for NASDAQ, the fib strategy will work really solid. So we are designing the thing. Right now the version 1 is giving you red, green, buy, no dollar amount. Version 2 we will release, will have a dollar amount, you can program it. Version 3 will let you pick which level of swing do you want. 23%, 31%, 61%, yeah, 78%. So don't worry, lots of fib, black candle, moving average. नहीं हैप्पी बना रहा है ब्रेकआउट वाली बना रहा है कि उसने अगर स्विंग ले लिया, मिड बैंड को टच कर रही है, तो जैसे ही ऊपर जाए पिछले ब्रेकआउट को करे 5 पॉइंट की निकाल दे. तो वो लिख रहा है $60, 60 बनता है 3 पॉइंट, तो वो 3 पॉइंट की लिख रहा है, तो वो 30-20 पे चलेगी. तो जैसे ही उसने ब्रेकआउट लिया, 3 पॉइंट लिए, आप उधर 2 मिनी भी डाल दो. पहले तो आप उसको, मैं पहले कहता हूँ यार, पहले उसको 30 दिन टेस्ट करो, 40 दिन करो, 20 दिन करो, 2 दिन करो, फिर उसकी रेशो बदलना. आपने 2 दिन टेस्ट किया, हो गया यार ये तो बहुत अच्छी चलती है, 2 मिनट होती है. वो बुल नॉक्स पे चली, रिदमिक ने ऑर्डर ही नहीं खोले, अकाउंट सड़ गया. सो क्योंकि हमें फिर बाद में पता लगा कि बुल नॉक्स के रिदमिक में ऑर्डर डिले आ रहा है. सिम में तो बहुत अच्छी खुल रही है, लेकिन रिदमिक के अंदर वो ब्रैकेट ही नहीं खोल रहा बाय एंड सेल की. ट्रेडोवेट में सारों में खोल रहा है. So then we say, all right, don't use bull knocks, use take profit, use lucid, right? So interesting. Pricing for beginner S&P 500. S&P सर beginners के लिए रमनीक बेहतरीन है, आराम से slow चलें. Once you become expert, then you can go for national. Yes. Beginner, I think is the और कोई क्वेश्चन? ट्रेडोवेट तो आपका निंजा का दरमियान में प्लेटफॉर्म है ना. उसका मकसद क्या था? जैसे मैंने वो लिया ना, क्या नाम है, फ्लो बॉट. हाँ. नहीं, फ्लो बॉट तो कॉपियर है. हाँ, तो ट्रेडोवेट तो आपका जो एपेक्स है, या आपने कौन सी फंडेड है? लूसिड का जो देखें, ये सारे अगर आप देखें ना, ये फोटो कॉपियाँ बन रही हैं. पीछे कौन है? निंजा ट्रेडर. उनका प्लेटफॉर्म कौन है? ट्रेडोवेट. जो उसके दरमियान में जो मिडल में जो चीज़ चल रही है ना, और आगे कौन बैठा है? फंडेड कंपनीज. सारा काम आपका निंजा ट्रेडर करके दे रहा है. डेटा निंजा ट्रेडर दे रहा है. ट्रेडोवेट आपका रिस्क हैंडल कर रहा है, एटीएम सब कुछ ट्रेडोवेट हैंडल कर रहा है. और आगे उन्होंने लेबल लगा. कल मैं जाऊं, मैं खोलूं राफेज प्रॉपर, मेरे पास 2-3 ऑप्शन है. मैं जाऊं और जाके लाइसेंस ले लूं रिदमिक से, प्रोजेक्ट एक्स से, या ट्रेडोवेट से. इनको लाइसेंसिंग फीस दूं. यार मेरे पास 2000 स्टूडेंट है, मेरे पास 1000 है, मैंने इनको अपनी प्रॉप फर्म बेचनी है. लेकिन मैं देखें, इसे बहुत आसान है. आपसे मैं लेना शुरू कर दूं $40, $50, तो ये जो एक्सप्लोजन आया है प्रॉप फर्म में, लाइक आई मीन द बिगेस्ट स्कैम देयर इज. आप कहते हो, एक तरफ कहते हो प्रॉप फर्म करो, फिर कह देते हो स्कैम है. मैं आपको दोनों साइड ऑफ द स्टोरी बताता हूँ. प्रॉप फर्म क्यों बनी? सो you don't have to invest your own money. But they have the stats that 97% of users are failing live or platform anyway. So it's free money for them. So you buy an account for $90, you don't succeed, they just made $90. They don't really make $90. An average, if they paid, they will walk away with at least $60.
So when you buy a take profit account for $90, they walk away with less than, well, they walk away at least half of it. So if somebody fails 10 accounts, they don't have to pay 10 times the trader weight because it's one user with multiple accounts. The licensing is different. Rithmic is cheaper. That's why Bullnox goes with Rithmic. Rithmic doesn't charge as much, but they make, so prop firm is hoping for your account to be failed. So they throw a lot of things at you. Hey, how are you, man? I'm just doing the seminar right now. Huh? How many minutes? At least an hour. Yeah, let them know. Prop firm. So hoping for you मैं भी कर दूंगा लेकिन आज नहीं कर सुपर एरिया हाँ आज नहीं कल कर देंगे या नो प्रॉब्लम सर प्रोडक्ट के लिए आप हैप्पी जी से बात करें मैं आपके लिए टेक्निकल और नहीं मैं नहीं है मेरी देखिए मेरी बात सुने प्राइसिंग वो टेक केयर करता है वो आपको हाँ जी नहीं ये देखिए ये कोई भी ट्रेड है ये ब्रेकआउट है ये एक उसने लोअर लो बनाया ठीक है ना आप प्राइस वापस ऊपर गई वो जब पिछला लोअर लो तोड़ देगी तो आपका ब्रेकआउट शुरू हो जाएगा ना ब्रेकआउट कहाँ से होता है पिछला हायर हाई तोड़े या लोअर लो तोड़े तो ये कोई भी चार्ट हो 15 10 30 20 60 20 140 whatever 120 और ब्रेकआउट का वर्ड होता है अगर आप कैंडल चार्ट में 1 मिनट में देखेंगे ना तो आप कहेंगे पिछली कैंडल का हाई क्या पिछली कैंडल का लो क्या तो वो ब्रेकआउट कहलाता है या पिछले से निकल गया है अब एक डेंजर हमेशा रहेगी इस ट्रेड में कि ब्रेकआउट कंटिन्यू रहे या ब्रेकआउट डाइवर्जेंस ना क्रिएट कर दे देखें ब्रेकआउट के अंदर हमेशा ये एक फियर रहता है कि लेट्स सपोज कि जब यहाँ पर ब्रेकआउट हो रही है ना तो नीचे मूविंग एवरेज उतनी तेज़ी से नहीं गिर रही और स्ट्रेंथ उतनी तेज़ी से नहीं गिर रही तो कई दफ़ा ब्रेकआउट ईएस का लेने जाओ ना तो वो एक टिक के बाद ही रुक जाती है और आप कह रहे हो नैस्डैक में फिर ब्रेकआउट 5 पॉइंट दे पुल होता ही है कि आपने इसीलिए ब्रेकआउट ट्रेड में स्टॉप लॉस बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि उसने पता कि अगर आपकी ब्रेकआउट शुरू हो जाए सो किधर गया नहीं ये मिल गया सो छोटा सा दिखा दूं दिस इज price came down made a lower low price went back up the moment you are hoping that it will do this break and it will continue my trend to the downside sometime the strength looks like this and then you're like hoping that this trend continues because if the breakout fails your stop loss from this point is 19 ticks almost 5 point का बनता है तो ब्रेकआउट ट्रेड्स को भी आपने ट्रीटेड विद केयर सो यहाँ मेरा ट्रेड किस पॉइंट पे लगना यहाँ से सेल स्टॉप हो ठीक है यहाँ पर सेल लिमिट नहीं लगेगा सेल लिमिट तो ऊपर लगता है यहाँ पर आपने लिखना है सेल स्टॉप और अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ लेना है ऊपर गई नीचे पिछले हाई पे लेना है तो यहाँ आप कह रहे हो कि बाय स्टॉप है अब जे भाई ये बता सकते हैं ईएस में एक पॉइंट में कई दफ़ा ना जलील कर देता है एक पॉइंट लेना भी ब्रेकआउट में वो जाती है 3 टिक तक फिर थोड़ी सी रिट्रेस लेना नहीं लेकिन 4 टिक होंगे तो हम कुछ बनाएंगे ना वो कई दफ़ा ब्रेकआउट लिया डबल टॉप बनाया ना क्योंकि मैं ले रहा हूँ हाँ यस कई दफ़ा NASDAQ थोड़ा सा धोखा देके खुद रुकेगी नीचे आएगी लेकिन उस वक्त तक आपको होता है बहुत कैंडल नीचे ईएस ट्रैवल कर जाती है तो इसमें हम होप क्या कर रहे हो क्या कितने फिर एक 4 टिक्स तो मिलेंगे ईएस में 4 मिल जाते हैं और उधर अगर 4 पॉइंट मिल जाएं 16 टिक्स ईएस NASDAQ में 16 और इधर आ जाए 4 टिक्स अब मैं पता क्यों ये ट्रेड्स लाइक क्यों नहीं करता इस ट्रेड में रिस्क टू रिवार्ड रेशो बहुत ख़राब है
आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो एरिया में अच्छा है कि मैं जाके बैठूंगा, मिड बैंड पे ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट SRES ये और जो ब्रेकआउट ट्रेड्स ट्रूली बनते हैं ना वो SRES के बाद बनते हैं। वो ब्रेकआउट आपको दे देगा। उसने बनाई हायर हाई, came down, did not make a higher high. Now you know that it will break this low. So there's a better chances if you don't take just a standard breakout. You combine it with swing retrace extension. There's a trade called, so let me see if I can find an example here, because then those breakout trades are better in your favor. Let me switch this to 1510 and then we'll look at every time you W जैसे ये M बना है W में वो बनता है नहीं वो W नहीं है सर। देखें मैं अभी आपको यहाँ बताता हूँ। Okay, let's see if we can look at swing retrace extension somewhere. Okay, price came down, made a lower low, it made a black. Price went back up, it made a lower high. Then price did not break this lower low. So you were hoping if it continues the trend down, I will take a breakout, but don't take this breakout. Take this breakout instead. So the moment it has a higher low now, that I'm now starting to travel in the other direction, so you will do a buy stop here. Then now I have completed my full swing, because remember, lower low, lower high, first higher low, that breakout is better. So you take a breakout trade and you convert it, meaning you merge it with the SRES. ये आप कह सकते हो। आ जाए गरीब से ले लें, कोई बात नहीं। ये वाला ब्रेकआउट आपका बहुत बेटर है, क्योंकि इसको हम कहते होते हैं यार ब्लैक ब्लैक ब्लू आ जाए, यार ब्लू ब्लू ब्लैक आ जाए, तो वो कलर्स होते हैं। ये पहले SRES बना, यस वो वेबसाइट पे दिया हुआ है SRES। अगर आप ऐसे SRES समझ लोगे तो ब्रेकआउट भी आ जाएगा। लेकिन सर ये देखें फिर बनाए ब्लू ब्लू ब्लैक और कितना प्यारा ब्रेकआउट बना नीचे की तरफ। So it made a higher high, then it made a higher low, then it did not make a newer high but rather made a lower high. आप यहाँ सर आंखें बंद करके बैठ जाओ, चार्ट टिक्स मिल जाते हैं कि स्विंग बढ़ी है, उसने नया तोड़ा नहीं है और वो नीचे चल पड़ी है। सो RSI को मर्ज कर दें हमेशा डाइवर्जेंस के साथ, और ब्रेकआउट को मर्ज कर दें स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन के। सो ये आपके अलग अलग मेथड ना बनाएं, इनका एक ग्रुप बना दें तो बेटर है। जब तक SRES नहीं आया ब्रेकआउट ना लें। डोंट टेक इट, जब तक सेटअप नहीं बना। हाँ जी, जो लोअर हाई लिखा हुआ है या हायर लो लिखा हुआ है ब्लू में लिखा है, हाँ वीडियो भी है सर, जैसे ही ब्लैक होगा हाँ तो वीडियो में इसका मतलब है तो कहना है नहीं देखें यहाँ आई हायर हाई, यहाँ पर हायर लो, क्योंकि उससे लेकिन जब तक वो तोड़ेगा नहीं तो हायर हाई नहीं ना बनेगा ना। ये ब्लैक रहता है, ये जब तक पिछला नहीं तोड़ेगा उसका कलर ब्लैक रहता है। यस ओके तो फिर जब वो नीचे उसको डेफिनेटली को तोड़ा उसने। करेक्ट। नहीं जब नीचे आया तो लोअर लो बनाना शुरू कर दिया ना, क्योंकि जब तक वो इसको नहीं तोड़ेगा वो लोअर लो नहीं बनाएगा। अच्छा तो ब्लू हो जाएगा। यस और जब आपके SRES बन गए एरिया के अंदर, वो सर एरिया के अंदर ये लोअर लो लोअर हाई बन जाए ना, फिर आपकी बड़ी स्विंग आती है हमेशा। लेट मी पिक समथिंग। ऑलराइट, वंस अगेन you have a higher high, you have a higher low, then you don't have an extension, meaning that you have a उससे नीचे रही है ना, आपने यहाँ सेल कर दिया, आपके चार्ट टिक पक्के आ गए। तो SRES के बाद आपके पास चांसेस हैं कि आपके पास ज़्यादा स्विंग बन जाती है। ये फिर अगेन आया ब्लू ब्लू ब्लैक आया, चार्ट टिक्स बन गए। तो ब्रेकआउट को स्विंग रिट्रेस एक्सटेंशन के साथ मर्ज रखें तो आपका, फिर मैं बात ये करता हूँ यार ये वाला पंगा ज़रूर लेना है, मीनिंग आपने लेना ही चार्ट टिक्स है तो ज़रा जो कम आपका रिस्क वाला ट्रेड है वो ले लो।
ये बनता नहीं है आसानी से सर, ये आप बैठे रहोगे उससे बेहतर फिब बन जाता है, वो नहीं बनता तो उससे बेहतर मिड बैंड बन जाता है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम है ना, आप एरिया पे 10-10 घंटे बैठोगे, आपने एक्सपेक्टेड लो हाई और लो लेना है, तो सर महीने में सिर्फ 11 दिन आया है, 11 भी नहीं, यस 8 दिन आया है अक्टूबर में, फिर तो आप में बहुत डिसिप्लिन है जी, आप ब्रावो, आप नहीं लूज करोगे। तो मिड मिड बैंड समझ आई, फिब का काम आना है। ये देखिए फिब का ये बनता है ना, अभी ये फिब यहाँ बन रहा है, ये फिब बन गए ना, वो क्या है? आखिरी स्विंग पे बनते हैं, अच्छा अगले इस स्विंग का फिब ये है। तो अब यहाँ मैं बैठ जाऊँगा चुप करके जा, तो आप सिर्फ ये देखो कि कौन सा ट्रेड किस फ्रीक्वेंसी से आ रहा है। मिड बैंड शायद दिन में 50 दफ़ा है, एरिया दिन में 1 दफ़ा है, एक्सपेक्टेड हाई महीने में 6 दफ़ा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है ना। SRES शायद दिन में 5 दफ़ा है, उसके साथ ब्रेकआउट, और आपका फिर अगेन मूविंग एवरेज की रेशो डिफरेंट है, तो आपको देखना होगा कि मैंने कौन सा ट्रेड लेना है। तो 100 के लिए इतनी मेहनत मेरा नहीं, क्या इतने नोट्स भी नहीं बनाने चाहिए। $100 के लिए 2 पॉइंट लिया, बंद किया, खत्म पहला पहला वाला हर स्विंग का पहला मिड बैंड यार, जो माजिद भाई की ट्रेड है ट्यूलिप की, सर मिड बैंड पे आप हाथ रख जाओ, मैं आपको मान जाऊं जिस स्पीड से वो चलता है, और सर वहाँ पर भी मुश्किल है, वो नहीं हो पाता। नहीं नहीं वो तो आ जाता है, लेकिन मिड बैंड नहीं ना हाँ लेकिन क्योंकि वो झटके से आ रहा है ना। अच्छा सर, ये दूसरा क्वेश्चन है हाँ जी हाँ जी, कि ये जो डैनियल भाई की और वो जो वीडियोज है, वो तो वाकई 2.5-3 घंटे की है, जैसे आपने लास्ट का आधे घंटे बाद मुझे नींद आनी शुरू हो जाती है, ये तो बहुत टेक्निकल है, लेकिन आप बहुत हाई लेवल पे जब पहुंचे तब उसके नहीं देखें, देखें शॉर्ट वर्जन ये है, यानी सिंपल आप जिस तरीके से, यानी कि जैसे मेरा बदन नहीं पता बिल्कुल भी, जैसे आपने बोला ग्रीन पे है तो आप यानी आपने वो लॉन्ग की तरफ जाना है, बैक की तरफ, रेड की तरफ, आपने शॉर्ट की तरफ जाना है, तो वो कैसे पता चले कहाँ से मैं फिर आप ऐसा करो, क्योंकि आपको अभी भी स्ट्रगल आ रही है इसकी टेक्निकल समझ करने, मैं ये कहता हूँ कि आप ना सिर्फ और सिर्फ इधर अगर आ सको ना, मैं रोज आता हूँ तो रमनीक से बैठे, उधर ही बैठता ठीक है, और 15 मिनट उनसे सिर्फ पूछ लें कि मुझे मिड बैंड का ट्रेड करवा दो, वो करवाती है मुझे, और फिर या फिब का करवा दो, उसके कहें कि मुझे फिब का ट्रेड सिखा दो, पक्का कर दो कि मैंने रेड बॉक्स से सेल करना है, और कितना स्टॉप लॉस लगाना है, और कितना टीपी लगाना है। सो दैट्स ट्रूली इट, आई मीन नहीं कि वो मैं वही कह रहा हूँ, तो वो बंदा जाहिर टाइम के साथ ही आप लर्न करते हैं ना, Yes, कुछ yes. नहीं आता, यानी आप डेली कुछ सीखते ही हैं, नेक्स्ट डे हाँ, क्योंकि मोस्टली अब रमनीक के रिपोर्ट कार्ड्स यही आते हैं, हमें जो पूछना होता है कि आपने आज क्या करवाया, तो वो लिख देती है कि वो 3 ही करवा रही है, मैंने कि लेट्स सपोज के फ्राइडे को मेंटर्स में जाके देखता हूँ, उन्होंने करवाया जी रमनीक ने यस्टरडे, उन्होंने करवाया R1 R2 एक एरिया, मिड बैंड्स कराए, फिब के बॉक्सेस करवाए, तो रियली वो कह रही हैं कि MES से ही हम 200-300 का ट्रेड बन चुका था। अब ये डोंट नो कि हाउ मेनी लॉट्स दे पुट इन दे, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया ना ये वाली चीज़, तो आप उनसे ये कह देंगे मुझे फिब करवा दो, और फिब में मेरे 2 पॉइंट बन गए तो उठ के चले जाएं। देखिए आपके फिब में $100 बन जाए ना, तो आप छोड़ दो, ये डन है। और फिर ये ट्रेड रात को कर लिया, देखिए अब संडे को 6 बजे मार्केट खुलनी है, आपको उसमें नमनी की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता फिर ट्रेड करना कैसे है। अब यहाँ पर अगर मैं आप संडे को खुलेगी ना, तो अगर गैप से ना खुली, क्योंकि इसने टैरिफ्स ऐलान किए हैं और शायद रिवर्सल शुरू हो जाए, यहाँ जाएंगे, ये मेरा लग गया जी फिब का ट्रेड, वहाँ उसके अंदर आएगी, 4 टिक्स देगी, आपने पॉइंट उठाए और डन कर दिया, सेल का, रेड में सेल, ग्रीन में बाय, ये फिब का ट्रेड है। बैकग्राउंड अगर ग्रीन हो तो फिर नहीं डजेंट मैटर, यहाँ पर ट्रेंड के खिलाफ जा रहे हैं आप, फिब की रिट्रेसमेंट में ट्रेंड के, अगर ट्रेंड ट्रेड लेना है तो यहाँ से सेल बनता है ना,
अभी मैं ट्रेंड में बैठा हूँ, ये 1510 है, तो ये मेरा सेल बनेगा ना। तो ट्रेंड ट्रेड में आपने मिड लाइन से बैठना है, और फिब के ट्रेड में आपने अगेंस्ट द ट्रेंड जाना है। एरिया ट्रेड में हमने अगेंस्ट द ट्रेंड जाना होता है। यानी जो ही वाइट लाइन उस पर चली जाए आपने हाँ, उस बॉक्स नहीं, ऑलरेडी लगा दो। अच्छा अब नेक्स्ट वीक ये काम ऑटो पे हो जाएगा, वो खुद ही ऑटोमेटिकली। सर ये येलो फिब का छोटा वर्जन है। फिब की भी 23 में, जिस तरह मैंने कहा 23, 31, 61 और 78 हैं, तो ये 23% है, ये 23 है, ये 31 है, ये 61 है, ये 80% है। तो ये मूव होगा जब निचली ब्लैक कैंडल बनेगी। हर ब्लैक कैंडल के बाद बॉक्स बन रहा है ना, हर ब्लैक कैंडल के बाद। ये अगर नहीं भरा उससे पहले ही अगर तो ब्लैक फिर कैंडल बन गई तो ये मूव हो जाएगा। हाँ, फिर नीचे ग्रीन बॉक्स आ जाएगा। और मेरा ट्रेड जो है इनफेक्टिव हो जाएगा। वो ट्रेड इनफेक्टिव है। इनफेक्टिव। यस। और सर ये ईएस पे 1510 है। 30-20 में किया था। ईएस के 30-20 में। या और ईएस है सर। नैस्डैक में ये पकड़ना मुश्किल है। हम नैस्डैक में ये ट्रेड ला रहे हैं ऑटोमेशन पे, क्योंकि अगर आपको 2 पॉइंट में हर फिप पे एक्स दे गया तो आपके $60 बन जाए। देखिए मूविंग एवरेजेस या जो ब्लैक कैंडल की है, मैंने जिस तरह कहा, अगर तो स्विंग नहीं आई तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। एक स्विंग आई, उसने आपको 100 दिखाए, अगली स्विंग नहीं आई, उसने 200 का स्टॉप लॉस लिया, थर्ड स्विंग 200 का स्टॉप लॉस, आपका पूरा अकाउंट चला जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है मूविंग एवरेज के साथ और ऑटोमैक्स के साथ कि स्विंग डिपेंडेंट है। अगर तो स्विंग आती रही तो फिर आप निकल जाओगे, लेकिन अगर उसमें वेव ही नहीं आई तो आप खड़े रहोगे, और स्टॉप लॉस एंड देन यू आर डन, राइट। सो ये अब एक और देखिए, अब लेकिन कुछ लोग हैं वो क्रिएटिव यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज उन्होंने खोली, एक हमारे भाई हैं, उन्होंने पूरा हफ्ता मूविंग एवरेज की, और जहाँ उनकी फील हुई कि यहाँ पर स्विंग आ सकती है, उन्होंने उसको इनेबल किया, $100 निकाले, निकल गए, राइट। तो उन्होंने ऑन ही उस वक्त किया जब इनको लगा यार वाटर का प्रेशर है, मुझे निकाल देगा। ये कोई जिस तरह कुकी कटर तो है नहीं है कि मैं आपको भी दूंगा। जो फिप है वो कुकी कटर है, बाई करते रहो, सेल करते रहो, बाई करते रहो, सेल करते रहो। 2 पॉइंट तो 2 ना हुआ तो 1 पॉइंट तो दे देगा ना। तो फिब तो उसमें कोई मैथ नहीं है। स्विंग छोटी होगी, फिब छोटा बन जाएगा, स्विंग बड़ी होगी, फिब बड़ा बन जाएगा, स्विंग बहुत बड़ी हुई, फिब बहुत बड़ा बन जाएगा। एक ट्रेड है जो स्विंग का वेट करता है और हम होप करते हैं। अब देखें, 2 ट्रेडर्स हैं, एक कहता है यार स्विंग बड़ी हो, और एक कहता है स्विंग इसमें जाके रुके। देखें, उसने भी तो देखना है ना। अब जो ये वाला ट्रेडर है, ये कहता है यार स्विंग बड़ी हो या छोटी हो, मुझे इतनी स्विंग मिले बस कि इस रेड बॉक्स के अंदर रुक जाए, मेरा टारगेट। Sir, I take it from black candle to the fib long ठीक है, and I get out before. नहीं वो तो निकलना है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आपने ब्लैक लिया, लेकिन क्या पता फिब तक पहुँचते पहुँचते ना बीच में मल्टीपल सोल्जर, मैं कहता हूँ, खड़े होते हैं जो आपको नॉक डाउन कर रहे होते हैं। पहला सोल्जर आता है 15-10 का मिड बैंड, फिर आता है 30-20 का मिड बैंड, फिर कहीं जाके फिब की बारी आती है ना। तो उसके अंदर 2 रेजिस्टेंस पड़ी होती हैं। आपने यहाँ से ब्लैक कैंडल से लिया 30-20 में, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्लैक कैंडल बनी, कई दफ़ा बनते सार नीचे भी आ जाती है ना, तो आप वो लगी, क्योंकि नहीं वो तो ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, फिब तक पहुँचते पहुँचते ना आपका ब्लड प्रेशर 200 दफ़ा ऊपर नीचे होता है कि यार उन ये निकल जाए, 15-10 को भी तोड़ दे, 30-20 को भी तोड़ दे, और फिब में चली। हम उस तरफ बैठे होते हैं, यार फिब तक आ गई है, प्राइस थक गई है, वो अब ज़रा थोड़ी सी तो सांस लेगी ना। फिब गई है, क्योंकि हमें एक फिब के ट्रेड में 80% डीप का वेट कर रहा हूँ यार। मैं कौन सी शैलो पे बैठ गया हूँ, उधर मैं ग्रीन में बैठता हूँ कि यार 23% भी छोड़ दो। कुछ लोग ऐसे हैं हर बॉक्स पे भाई ट्रेड लेंगे, जानता हूँ मैं, वो छोड़ते ही नहीं है। वो हर क्या करते रहते हैं, एक ट्रेड यहाँ डालेंगे, एक ट्रेड यहाँ डालेंगे, एक ट्रेड यहाँ डालेंगे, एक यहाँ डालेंगे। वो कहते हैं यार 23% से मैं 2 टिकट्स ले रहा हूँ, मैं 60% से मैं शायद 1 पॉइंट लूँ, लेकिन मैं 80% की रिप्लेसमेंट में से मैं 3 पॉइंट निकाल सकता हूँ या 2 निकाल सकता हूँ। सो
people have found creative यानी वो ways. टॉप और बॉटम में लेते जा रहे हैं, हाँ हाँ, मीनिंग कि यहाँ पर लेंगे, सेल करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, क्योंकि जितने पकड़ देंगे ऑर्डर फिक्स होते और अगर पहली ही स्विंग में उनको अगले फिब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो कहते हैं यार मैंने येलो का भी बॉटम लिया, येलो का टॉप लिया, रेड का बॉटम लिया, रेड का टॉप लिया, मेरे तो 4 पॉइंट पूरे हो गए, मैं तो डन हो रहा हूँ, राइट? तो मुझे नहीं ज़रूरत कि फिब के एंड तक वेट करूँ, मेरा काम हो गया, पहली स्विंग पकड़ी, 4 बॉक्सेस पकड़े, 23, 31, 78, 61, सो चाहिए कौन पकड़े हैं? नहीं देखिए हिट एंड रन है ना, हिट एंड रन कर रहे हैं फिब के एंट्री से 23, 31. साथ काफी लगे हैं। हाँ मीनिंग वो तो अगर आपका 1 पॉइंट 2 पॉइंट दिन में चाहिए, आप सर $10,000 पर मंथ पे आ जाते हो, 5 अकाउंट हो और रोज़ के $100 बने, फिब के अकाउंट बन जाते हैं और 5 अकाउंट हो, इट्स ओके. अब अगेन मेथड कौन सा लेंगे, कौन सा आपको रास आता है, कौन सा नहीं रास आता, आपको एक ही ट्रेड बार 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 के बाद पता लगेगा यार इस ट्रेड की स्टॉप लॉस इतना है, इस ट्रेड का टीपी इतना है, इस ट्रेड का अब मिड बैंड है 5, मिनिमम 5 लगाना पड़ रहा है आजकल, पहले हम 3 करते थे. आजकल जो ट्रम्प की वॉलेटिलिटी है वो गिरती चली जाती है और फिर रिट्रेस लेती है. फिर हमने कहा यार वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, फिब के ट्रेड में आ जाते हैं, 2 माह से टेस्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट पॉइंट दे रही है, तो हम उसको साथ साथ स्विच करते रहते हैं कि आज जिस तरह अर्निंग्स वाला दिन था, एंड आई सेड प्लीज़ गाइस फॉर गॉड सेक ट्रेंड ट्रेड ना लेना, आज ट्रेंड ट्रेड ना लेना, बिकॉज इसने बड़ी बड़ी मारनी है आज एप्पल की अर्निंग है, FOMC है, दूर दूर जाके बैठो. तो हम हर रोज़ एक ना मार्केट के बिहेवियर की को गैस करके ना अब अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं. एक नहीं है कि अब जो कुछ अगेन क्रिएटिविटी लोगों की देखें, जे भाई की शाम को 6:30 बजे डन हो जाते हैं. देखिए 6:30 बजे ना मार्केट या रात के 8 बजे इतना तंग नहीं करती, जो ट्रम्प के ट्वीट्स उधर कम आते हैं, राइट? या FOMC की न्यूज़ नहीं है, तो उन्होंने खोला शाम को 7-8 बजे, ES में से ऑलरेडी उन्होंने किसी फिब में से 100 करके निकाल लिए, $50 100 बनाने हैं ना, 23 घंटे हैं, किसने काटा है कि 9:30 बजे ही खोलना है. वो ऐसे मेरे सामने ट्रेडर बैठे होते हैं जैसे घोड़े की रेस में वो खुलता है ना जंगला, बट ट्रेड मैं ढूंढ लूँ, लाइक मैं यार ऐसे नहीं होता, उसको 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 बस 9:30 बजे मैं को बटन दबा दूँ जिससे मैं निकल जाऊँ. इट्स नॉट एन ईजी थिंग. आप कई दफ़ा ट्रेड 8 बजे आ जाता है, कभी शाम के 7:30 आ जाता है, मैंने कई दफ़ा ऑफिस पहुँचा हूँ, ट्रेड करके आया हूँ, कई लोग प्री मार्केट में टर्न हो जाते हैं. करते हैं प्री मार्केट. यस यस यस. ये तो जो MNQ है ना, तो ये 30-20 उसका बेहतर एक्सपीरियंस है कि सर 60-40 60-40? थोड़ा तेज़ मार्केट है ना, तो स्विंग पूरी 40 टिक्स की हो जाए ना, फिर देखेंगे. सर ये फिब पे जो ऑर्डर लगाना होता है, हाँ तो ये आप माइक्रो में लेना चाहिए या नहीं मिनी भी ले सकते हैं? अगेन मिनी लें, माइक्रो लें, एक लॉट लें या 10 मिनी डाल दें, उसी तरह जाएंगे उसी तरह आएंगे, राइट? नहीं मेरा मतलब कि यानी इसमें तो वो श्योर होता है कि जो ये- शोर कुछ नहीं, शोर में ये है कि लैपटॉप बंद करो, ट्रेडिंग रोक दो, शोर नहीं, पैसे नहीं ज़ाया होंगे, मैं गारंटी कहता हूँ किसी का नुकसान नहीं होगा. लिक्विडिटी तो श्योर है. स्टॉप लॉस अच्छा क्या होना चाहिए फिर में? फिब का स्टॉप लॉस 3 पॉइंट डैनियल भाई ने कहा है. इसमें कौन कैसे करनी है? 60% इस पर राइट क्लिक करके ये लिखा डेटा सीरीज, लैपटॉप बंद कर दो, फिर ट्रेडिंग रोक दो बस, नहीं नुकसान होएगा, कसमें नहीं होता, गलती होने की तो क्योंकि ट्रेड ही नहीं पा रहे तो नुकसान. वो कहते यार मैं नहाना है ना तो गिला हो जाना है, वो इन्होंने तो नहाया ना करो तो गिला ही नहीं होगी, गल खत्म. ये देखो इसको 40 और इसको 60, तो उसमें सिर्फ आप ये असेस कर रहे होते हो कि मैं हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का ट्रेड ना एवरी डे प्रिडिक्ट करना बड़ा रेयर होता है. एक दिन S3 लिया माइक्रो से, वो S3 भी तोड़ती चली गई, नहीं रुकी. एक दिन R3 लिया, वो एक्सट्रीम हाई पे निकल गई. देखिए वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा है. हम ये कहते हैं अगर आपने दिन में हफ्ते में ट्रेड लिए कितने सक्सेसफुल हैं, 60%, 70%, 80%. फिर मैं आपको क्रिएटिविटी बताता हूँ जो उस दिन हमने की. मैंने जिस तरह कहा कि मैं 830 पे फंस गया, मैं फंसा हुआ, फ्राइडे की जाके सिर्फ स्ट्रीम देखिएगा. मैंने कहा भाई मैं 830 से एक माइक्रो में गया हूँ, शॉर्ट गया हूँ, मैं फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ?
नहीं आ रही प्राइस, मैं देख रहा हूँ 180 $190 का लॉस मेरे खिलाफ गई है। यहाँ पर ES पहुँच गई थी 7300 पे, आपने उधर ले लिया। मैंने उसको वहीं छोड़ा। मैंने कहा यार क्रिएटिव, मैंने वहाँ गया मिनी पे, मैं NQ पे भी जा सकता था। मैंने कहा यार NQ से मुझे ज़रा अभी ऑलरेडी MNQ हूँ, तो आपको किसने कहा है कि आपने उसी ट्रेड से प्रॉफिटेबल निकलना है आपके। मैं गया फटाफट ES में, मैंने 7300 पे सेल किया। वहाँ से मैंने उसको जाके 2 पॉइंट लिए, 160 180 को मैंने थोड़ा सा कम किया, फिर एक माइक्रो छोड़ दिया। मैंने कहा इसको भी लटकते दो, वो भी प्रॉफिट दे गई, वो भी ले गई। तो अब आप कहो कि यार राफे ने तो 830 का था। ओ भाई राफे ने और भी तो बहुत चीज़ें सिखाई हुई हैं, खाली ये तो नहीं है कि भाई। हाँ मैंने कहा थोड़ा सा क्रिएटिव रहें। कई दफ़ा मुझे एवरेज करनी पड़ती है, कई दफ़ा मुझे, तो आपको कोई स्ट्रेट वन मेथड नहीं है। वो तो जाहिर है, जब आप बैठे तो आपको अपने दिमाग में लगाना थोड़ा सा लगाना है कि यार मैं लॉस करूं तो दूसरा ऑप्शन है मेरे पास जिससे मैं उसको एटलीस्ट रिकवर कर सकूं। सिर्फ ये नहीं कीजिएगा कि लॉन्ग शॉर्ट अपोजिट चले जाएगा, ये ना कीजिएगा कि ये ना हो कि आप ES में लॉन्ग है और NASDAQ में शॉर्ट है, वो फिर है नहीं वो, क्योंकि वो आपको हेजिंग पे गलती से मैंने यही किया। मेरे अपने अकाउंट लगे हुए थे, मूविंग एवरेज टेस्ट हो रही थी 5 के 5, दोनों ग्रीन में जा रहे थे हल्के हल्के। मैं ले रहा था NASDAQ में 2-2 पॉइंट, मुझे पता ही नहीं लगा एरिया आया, मैंने वहाँ से भी लॉन्ग कर दिया। और अपोजिट साइड में मूविंग एवरेज वाले वो लगे हुए थे। भाई रात को सुबह 1 बजे ईमेल आई, मैंने कहा लाओ जी। नहीं उन्होंने अकाउंट मैंने लिक्विडेट नहीं किया, उन्होंने काउंटर पोजीशन का रूल डाल दिया ना कि तुमने काउंटर पोजीशन खोली थी, तुम MNQ में शॉर्ट थे और तुमने यहाँ ES में NQ में लॉन्ग किया, तो उन्होंने हेज कर दिया। ES और NASDAQ नहीं कर सकते, MNQ और NQ नहीं कर सकते। गोल्ड कर लो, ES के साथ गोल्ड कर लो, NASDAQ के साथ क्रूड गोल्ड कर लो, क्रूड ऑयल कर लो, तो इससे ES को भी शॉर्ट किया, शायद ठीक है, काउंटर नहीं किया। सर ये जो फ्लिप है इसके अंदर जो स्टॉप लॉस, फ्री पॉइंट और टेक प्रॉफिट आपका, और इस प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर हमने लिखा है, ये 80% ठीक होनी चाहिए, फिर आप सही हो। लेकिन मेरे भाई अगर 3 ट्रेड डाले हैं और 50-50 बन गए हैं, वैसा ही छोड़ दो कि भाई मेरे 3 आउट ऑफ 3 है, 100% बंद करूँ। सो बाकी जो आपकी जो सब्सक्रिप्शन उसके बारे में हैप्पी से बात वो हैप्पी से सारी बातें आपको हैप्पी बताएगा, क्योंकि मैं इस बिजनेस इस डिपार्टमेंट से उन्होंने मुझे निकाल दिया, कहते हैं डोंट केयर। और कोई लास्ट क्वेश्चन जी भाईजान? ठीक है, नो प्रॉब्लम, एंजॉय जी। नहीं लास्ट ही करना था मैं तो आप तो डैनियल के साथ हैं, आपके पास मैं ना उनको जानता हूँ, मैं काफ़ी असर करता रहा। नहीं मेरा क्वेश्चन आपने निंजा उनसे नहीं लिया हुआ? अच्छा ठीक है, मुझे लगा आपने शायद लिया हो। नहीं मैंने तो अभी निंजा अपना खुद ही खोल किया था, मुझे तो यहाँ के बारे में कोई यहाँ के बारे में नहीं पता था। अच्छा तो एक बंदा इनको बोला था लिस्ट, हाँ नहीं हमने उससे उन्हीं का बिजनेस, मैं उधर बैठता हूँ डैनियल भाई के साथ बैठता हूँ। सर ये ES के लिए चार्ट 30-20 का ये 30 नहीं 15-10 का स्विंग बहुत बड़ी थी जी सर। कैंडल है ना, प्राइस ऊपर जा रही है ना भाईजान, इतने बेसिक क्वेश्चन ना मेरे को पूछो। बैकग्राउंड ट्रेंड है, ये प्राइस की डायरेक्शन नहीं गायब हो गया है। ब्लैक कैंडल होगी तो यहाँ से अब अगर नीचे की तरफ आ गए तो फिर यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ ब्लू एंड ग्रीन आ जाते हैं, तो हर स्विंग में वो बॉक्सेस चेंज हो जाते हैं। लूसिड सर देखिए, लूसिड क्या चीज़? लूसिड डायरेक्ट तो डायरेक्ट एक्सपेंसिव है ना। लूसिड का आप अकाउंट ले लो $70 का, 25,000 वाला, एक लेके उसको पास कर लो रोज की। अगर आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, सुपर लिमिट के साथ 60 का मिल जाता है। हाँ पहली दफ़ा पहले उसके बाद 70 का। तो सर बात ये है कि देखें, मैं अगर आपसे कहूँ, आपके लिए मशवरा है, आप करो लूसिड और आप करो उसमें 25,000 विद इन 2 मंथ्स में आपके 650 आने चाहिए। देखिए चले आप यहाँ दे रहे हो $300, ठीक है, आप कहते हो यार 300 है। लूसिड में राउंड 1 की भी टाइम नहीं है, राउंड 2 में 2 माह में 3.5 देंगे। अगर एक अकाउंट भी हुआ तो आपको
अगर आपने राउंड 1 में 1250 करने, राउंड 2 में 1250, पे आउट कितने का ना 650, आपकी पूरी मेंबरशिप भी कवर हो गई, आपको 2 मंथ में ये प्रैक्टिस भी हो गया। तो ये काइंड ऑफ प्लान पेज फॉर इटसेल्फ। अभी जो हम बड़ा टेक प्रॉफिट पुश कर रहे थे, लूसिड ने आके ना एक दो बहुत बड़े काम किए। सबसे पहले लूसिड ने आके कहा एंड ऑफ डे कर दो भाई, इंट्रा डे ना करो। क्योंकि देखिए हमारे जितना ट्रेडर है ना उसको इंट्रा डे से ना दिल टूट जाता है, क्योंकि इंट्रा डे में क्या है, आपने 200 देखे 100 पे बंद किया, आपको 100 का नुकसान बड़ा बुरा लगता है। आप देख रहे थे मिड बैंड भी चढ़ गया ना, तो आप कहते हो होली मैन 100 नजर आया, इसको 50 भी पकड़ लो। लूसिड आया, लूसिड कहता यार एंड ऑफ डे पे ले जाते हैं। लूसिड ने दूसरी बड़ी बात जो की हमारे ट्रेडर के अच्छे के लिए, उसने मंथली हटा दिया। एपेक्स है 1 मंथ में करना है, लूसिड है कोई टाइम लिमिट नहीं है, एक हफ्ते में बस एक ट्रेड डालना है इन एंड आउट का। लूसिड ने कहा 1 मंथ में करो, 2 में करो, हमने आपको टाइम लिमिट नहीं दी। तो और अकाउंट कितने का कर दिया, $70 का, उसके अंदर एक्ट। तो इस वक्त जो टेक प्रॉफिट, एपेक्स रह गई पीछे, बुलनॉक्स रह गई पीछे, टेक प्रॉफिट सिर्फ अब हम कहते हैं टेक प्रॉफिट उनके लिए जो गैम्बलर्स हैं। ये दोनों है। टेक प्रॉफिट में वो है, वो मिनिमम कि आपने एक ट्रेड लेना है 1 हफ्ते के लिए। नहीं यहाँ वो तो हर कंपनी का है, वो तो हर कंपनी। वो 1 हफ्ते में एक ट्रेड लेना है। हफ्ते में एक माइक्रो खोल के इन एंड आउट, पावे प्रॉफिट का हो पावे लॉस का, हाजिरी लगवानी है। हफ्ते में तो एक अब मैंने पढ़ लिया, लूसिड डायरेक्ट सस्ता पड़ता है। अब देखें पढ़ लिया, सारी कंपनी एपेक्स अच्छी थी, हमने 2 साल एपेक्स पुश किया उनसे। अब कल कोई XYZ ट्रेडिंग आ गई तो लूसिड भी निकल जाएगा। तो ये है, ये सारी कंपनी का वाइस पे नहीं पैसा पे करता है। क्यों नहीं, वाइस पे आ जाते हैं, मुझे लूसिड वाइस पे करता है, एक डिफरेंट प्रोवाइडर वर्ल्ड मार्केट के थ्रू पे करते हैं, वाइस पे जाते हैं। लूसिड डायरेक्ट अगर आपको ब्लॉक आउट हो जाता है तो दोबारा लेंगे, फिर ये कम लेगा। अच्छा वो फिर 70 नहीं 70, बट इसमें आपको डे फर्स्ट से आपका पैसे में शुरू कर नहीं आप बैठे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप, एक क्वेश्चन ये है कि लूसिड डायरेक्ट लेने का फायदा क्या? क्वेश्चन देखिए, नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन है 12.5 टू टाइम हाँ। आपके बनते हैं 2,500 रुपये, आपकी मेहनत लगी है। हाँ ठीक है जी, वो आपके लिए मगर हो गया 0। हाँ तो 70 गए ना। मॉडिफाई कर गए, लेकिन अगर उधर डायरेक्ट उस पे डे 1 से तो आपकी जो देखिए उसमें कितना देखिए लगेगा? पेन कितनी होनी है उस पैसे की रेशो है। मैं वंडरलैंड जाओ ना तो उन्होंने फास्ट पास खोला होता है। जितने गरीब होते हैं ना, जो मेरी तरह के खड़े होते हैं, वो बीच लाइन में खड़े होते हैं, एक बंदा आता है फास्ट पास करता है, कहता है मैं जा रहा हूँ। पर्डिया 2-3 और हैं, लूसिड डायरेक्ट है, वो कहते हैं यार एक चीज़ 70 की 3 गुना ज़्यादा प्राइस है, 7 या 21, 7 चौका 28, 4 गुना ज़्यादा, राइट। तो यार पता क्या, अगर लॉस हो गया, मेरी बात सुने, जिसने नहीं ना पास करना उसने डायरेक्ट भी पास नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इसलिए बात, जिसने पास कर लेना है उसको पास कर ही लेना है उसने। पास तो नहीं है ना वो तो। नहीं बेशक, मेरा कहने का मकसद है जिसने 70 का अकाउंट नहीं ना पास करना, समझिए, उसने 250 भी दे खेलना के नहीं आता उसको ट्रेड ही नहीं करना आ रहा। तो आप उसमें कोई लिमिट है कि आपने पर डे सिर्फ इतना मैक्सिमम बनाना है? लूसिड डायरेक्ट में यस है। देखें पास आप कर सकते हैं 2 दिनों में, 50% की कंसिस्टेंसी है, 12.5 650 बनाया, 2 दिन में निकल गए। टेक प्रॉफिट क्या कहता है 5 दिनों में निकलना है। मैं सिर्फ और सिर्फ मेजर कंपैरिजन, टेक प्रॉफिट बहुत अच्छी कंपनी है, इतनी अच्छी है कि वो आपको, मंसूर को उसने 40,000 दिए हैं, लेकिन मंसूर ने सेम दिन 21,000 के प्रो भी रीसेट किए। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए वो क्या करते हैं कि आपको शाम को ही पे आउट दे देते हैं। जिस दिन आपने क्लियर किया उन्होंने कहा भाई मैंने क्या, जिस वक्त आपका 1500 का बफर हो गया ना, अब कुछ लोगों को वो सूट करता है, मुझे कई दफ़ा सूट करता है। बुल नॉक्स यार जितनी लंबी खींच जाते हो ना, 10 दिन बाद मिलते हैं पैसे, तो आपको होता है यार मैं 100 के बाद ना बंद कर दूँ, मुझे कोई, तो आपके या तो आप जाओगे। अब लूसिड आया ना, उसने हमारी एक प्रॉब्लम सड़ी अच्छी कर दी, रिलैक्स कर दिया, बहुत रिलैक्स कर दी। पहली बात तो ये है कि एक मेंटल टॉर्चर होता है अकाउंट का, यार मैंने 30 दिन में करना है, यार बीच में हॉलीडे आ गई, 2 दिन का स्टॉप लॉस लग गया, मेरा डेडलाइन आ रही है, मेरा रिन्यूअल ना आ जाए, मेरा
जिस तरह आपको हमारे रिन्यूअल से डर लगता है ना, तो मुझे आपको उस कि भाई फिर 300 की फटीक पै जानी है, राइट भाई, इधर तो आपको फिर मैं कुछ ज़्यादा। तो दूसरी चीज़ उसने एंड ऑफ डे लिया है, वो ये कहता है कि यार इंसान है ना, वो लाइव ट्रेडिंग के अंदर क्या बेनिफिट हो रहा होता है, लाइव के अंदर होता है आप 100 देखा 0 पे बंद किया, वो कमीशन काटती है। टेक प्रॉफिट कहता है या बुल नॉक्स कहता है हे आई वांट यू टू ट्रेल और लॉक, तो वो एक अननेसेसरी प्रेशर न्यू ट्रेडर पे होता है कि यार पहले तो आधे ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता कि इंट्राडे है क्या, उन्होंने 200 देखा होता है और वो बंद कर रहे होते हैं -300 पे, ठीक है, बैठे हैं। अब उन्होंने कहा कि यार ये आपके हिसाब से आपका नुकसान -300 का है, टेक प्रॉफिट लिख लेता है -500, वो हाईएस्ट पॉइंट से लेता है और उसको नेगेटिव करता है। फिर आपका माइंड होता है राफे भाई ये क्या हुआ जी, मेरा तो नुकसान ही 300 का हुआ था, आपने ये क्यों लिख लिया है। मैंने कहा भाई पढ़ के देखो, इंट्राडे है, जहाँ वर्ड इंट्राडे आ जाए, लाइव ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड आ जाए, आप समझो भाई मुझे यहाँ टीपी लगा के चलना है। लेकिन जहाँ लिखा आ जाए एंड ऑफ डे, आप रिलैक्स रहो, उसमें फिर ये फ़ायदा होता है। मुझे आजकल इतना फ़ायदा हो रहा है, 2 पॉइंट देखता हूँ आराम से ब्रेक इवन पे आ जाता हूँ। अब अगर वो चल पड़ी मेरी फेवर में तो मैं जा रहा हूँ, अगर नहीं है तो मुझे ये स्ट्रेस नहीं है कि अब ये इसने 100 दिखा के 0 पे बंद हुआ तो मुझे पेनलाइज करूँगा, राइट। सो तो ट्रेड प्रॉफिट एंड ऑफ डे नहीं देता सर, इंट्रा डे ट्रेलिंग है, यही तो उनकी इस वक्त। तो लूसिड ने आके उनका इतना मार्केट शेयर ज़्यादा ख़राब कर दिया है कि, बिकॉज एक बात बताऊँ, सिर्फ टेक प्रॉफिट सबसे बेस्ट कंपनी है पेमेंट देने में। सर मैंने 8:20 पे अप्रूवल आया, सुबह 4 बजे वाइज में $800 थे, तो 4 अकाउंट थे, $3200 वाइज में आ गया। तो हमें जब तेज़ खेलना होता है ना, तो हमने कुछ एक वर्ड रखा हुआ है, हम गैम्बलिंग करते हैं टेक प्रॉफिट से और अर्निंग करते हैं दूसरे अकाउंट से। अगर तो छक्का लग गया, विराट कोहली की तरह 2-4 लग गए तो आपका पे आउट अच्छा आ जाना है, क्योंकि हमें क्या है 90 का अकाउंट है, हम उससे कई दफ़ा 4-4 हज़ार निकाल जाते हैं, फिर बर्न हो जाता है। आप जाके अंदर देखो मेरे कितने बर्न हुए हैं, प्रो बर्न हुए हैं, क्योंकि होता ये कि अगर 1.5 लाख का भी अकाउंट है, मेरी कॉस्ट कितनी है $215। मैंने जिस दिन 215 रिकवर करे, मेरा इमोशन ही ख़त्म हो जाता है। मैं फिर जाके 5 मिनी डालता हूँ, और भाई लग गया तो लग गया, नहीं गया तो मुझे कौन सा। लेकिन ये क्योंकि दूसरे वाले आपको प्यार से देने होते हैं, तो इट्स ट्रेड प्रॉफिट उसके $1500 आपने बनानी है 5 दिन के अंदर। नहीं मिनिमम 5, एवेल्युएशन में मिनिमम 5 है। 5 दिन से पहले 1600 बना ली, फिर क्या होगा? तो आपका टारगेट बढ़ा देंगे ना, आपको 1500 बनाना है, एक दिन में आप 750 से ज़्यादा नहीं बना सकते। ओके ठीक है। दूसरे दिन 750 बनाया, हाँ, तीसरे दिन डॉलर का ट्रेड कर दिया, दैट्स इट। अच्छा। तो बस आपको 1500 से ऊपर भी बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक दिन में 750 से ज़्यादा नहीं। लूसिड में तो ये कंडीशन ये तो नहीं है। तीसरे दिन आप डाल लूसिड में ये कंडीशन नहीं है, वो कह रहे हैं ज़्यादा। मेरे पास मसला है, मैंने ट्रेड लिया है ना, अच्छा, मुझे पता नहीं ना। तो तीसरे दिन डॉलर बनाना, वो जान नहीं डॉलर बनाओ या लूज कर, देखिए आपके 1501 बने हुए थे, ये 1530 बन गए, इन एंड आउट डॉलर। बस हाजिरी देनी है कि मैं जिंदा हूँ, बस मैंने आपकी हाजिरी लगानी है। नहीं सर, एक और बात पूछूं सर, 1500 आपका थ्रेशोल्ड, आप 1500 का रिकॉर्ड पास करना है। यस, अगर खुदा रखा था कि 1530 हो गए तो कोई बात नहीं, ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, ऊपर तो 1600 बना दें, 1800 बना दें, आपका क्या, उनको तो आपको मिलने तो कुछ है नहीं है। वो तो आपकी क्या थ्रेशोल्ड क्या बढ़ा देते, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि जब राउंड 2 में आप जाते हैं, हाँ आपने ये पास कर लिया, आपने फिर 1500 के बाद पैसे मिलने हैं ना आपको। हाँ। होता ये है कि आपका 1500 का बफर होता है और 1500 का टारगेट होता है। आपने पहला ही ट्रेड लिया, वो 200 उसने दिखाया और आपने कहा यार ये और ऊपर जाएगी, वो वापस आनी शुरू हो गई और आपने उसको 0 पे बंद कर दिया। आपने कहा यार ये, मैंने कहा यार निकल जाऊँ। अब उसने क्या ट्रेड किया, आपने लेजर क्या लिखा, उसने आपको पैसे तो कुछ नहीं दिए, वहाँ 1500 को उठा के -200 लिख दिया। आपने पॉजिटिव देखा था, आपने पॉजिटिव से उठवाया ना, तो आपके पास 1300 रह गए आप। हालांकि आपने कोई लूज नहीं किया, लेकिन थ्रेशोल्ड लूज कर दिया, क्योंकि आपने प्रॉफिट देखा था, आपने बुक नहीं पहले किया। 5 दिन के अंदर आपने 1600 बनानी है। नहीं आप राउंड ये बता दें राउंड 1 है या 2 है। राउंड 1 में राउंड 1 में आप जितने मर्जी बनाए, बस 750 से आगे बरूद ना डालिएगा, निकल जाता है, काम खराब हो जाता है। अच्छा, वो कैच करते हैं। यस, कट नहीं करते, टारगेट बढ़ा देते हैं। इसके
इसका ये टारगेट बढ़ाने का मतलब क्या क्योंकि वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है टारगेट बढ़ाने का? इसका मतलब होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी 50% से बढ़ गई है। आपने एक ही ट्रेड लिया 1500 बना दिया, ठीक है, ठीक है। उन्होंने आपके अगले दिन लिख दिया ऊपर कि अब आपका टारगेट 3000 है। हाँ, टारगेट बढ़ा देते हैं, मीनिंग कि अब आपको 3000 से पहले पास नहीं करेंगे कि आप तो बहुत अच्छा खेलते हो भाई, ये तो बहुत ही अच्छा ट्रेडर है, इसको तो फिर यानी कि सेकंड लेवल नहीं होगी? नहीं होगी जब तक कंसिस्टेंट। इसीलिए मैं कहता हूँ यार 1000 बढ़ गए ना, 250 लूज कर लो यार, उसको उसके अंदर ले आए, बफर के अंदर, उधर पड़ जाए, उसके एंड ऑफ डे है उसको बफर के अंदर लाएं, फिर आगे ले जाएं। अच्छा ये जो आपने कहा ना 200 प्रॉफिट था, आपने बुक नहीं किया और 0 पे निकल आए, हाँ। ये मेजॉरिटी को नहीं समझ आ रही और होगी। सर मैं अद्धे गंजे हो गए ने, हाँ। मेरे अद्धे बाल एपेक्स ने गंजे कर देता है सानू। एपेक्स तो जितनी ब्रूटल कंपनी एपेक्स होती थी ना, वो भाई मैं हमेशा ये कहता था जिसने एपेक्स से पैसे निकाल लिए ना 2023 में, वो हर तरह का ट्रेड कर जाएगा, क्योंकि वो देते थे आपको एंड ऑफ डे ईए और मीनिंग इंट्रा डे ईए और इंट्रा डे पीए, और सर पता लग जाता था ट्रेड करते करते। अब तो लूसिड ने तो सर ट्रेडिंग कैसे थोड़ा बताएं। सॉरी मैं आपको हाँ जी, हाँ जी, सवाल पूछना हाँ हूँ, जी। थोड़ा मैं नया उसमें ना, थर्सडे वाले दिन मैंने लिया था टेक प्रॉफिट, मैंने उस दिन भी कोई उसके अंदर नहीं ट्रेड किया और फ्राइडे को भी नहीं उसके अंदर किया। कोई बात नहीं, अच्छा, अब आप संडे शाम को सिर्फ इन एंड आउट टेक कर दें ठीक। ताकि आपका हाजिरी लग जाए हफ्ते की, हफ्ते फिर की। पूरा हफ्ता ना ट्रेड करें, कोई बात नहीं। ऐसा मैं- बस एक हल्का फुल्का ट्रेड खोला, एमईएस देखा जिधर भी कि लॉन्ग कर दूं शॉर्ट कर दूं, एक टिक लॉस ले लें या प्रॉफिट ले लें, आपका उनके बाद रिकॉर्ड चला गया कि बंदा जिंदा है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने ना जो फ्लो वार्ड है ना वो लिया ना, जो कॉपियर, हाँ जी। तो वो भी मैंने थर्सडे को लिया था, लेकिन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। नहीं अच्छा, आपके 5 अकाउंट आ गए हैं? नहीं, मैंने एक लिया दूसरे का, एक लिया टेक प्रॉफिट ठीक है, का, ठीक है। फिर मैंने वो आपका नाम क्या है? मोहम्मद अमाद को हो गया है, मेरा ख्याल है अप्रूवल चला गया, मैंने सारी लिस्ट आ जाती है, मैं उसको ओवरसी कर रहा होता हूँ, किसी ना किसी ने संडे 6 से पहले कर देना है उसको। अच्छा ये जो हाँ वो हो जाएगा, फिर तो मंडे को ना हुआ मुझे टेक्स्ट कर लीजिए, ये जो नो प्रॉब्लम। कॉपियर है, ये किसी एक ही फंडेड अकाउंट का ही सेम होना नहीं चाहिए? नहीं, कॉपियर क्या मिक्स एंड मैच भी कर अब सकते देखें इनका एक आंसर है, कॉपियर इन्होंने खरीदा $129 का, वो एक्टिवेट होता है। कॉपियर क्या कर रहा है, आपकी विनिंग्स या आपकी लूजिंग दूसरे पे कॉपी कर रहा है। आपने एक ट्रेड लिया मिडिल पे जाके और आपने कहा यहाँ से मैं बाय करता हूँ, ये मेरा लीडर है, ये मेरा फॉलोअर है, टेक प्रॉफिट मेरा लीडर है, मैं रेकमेंड नहीं है करता, पता होता मैं ये हमेशा रेकमेंड करता हूँ, हमेशा से करता हूँ, कॉपी एक ग्रुप को कीजिएगा। अगर लूसिड के 5 हैं तो वेरी गुड है, एक साथ कर इंटर रेशल मैरिज ना कीजिएगा, पता लगे टेक प्रॉफिट द अकाउंट सी लूसिड ने डेटा नहीं भेजा, उधर पिक हो गया उधर नहीं पिक होया। अगर आपने ग्रुप बनाना है तो 5 टेक प्रॉफिट ले लो, विद इन सेम उसकी टैब्स बन जाती हैं नीचे। आपको यार मैंने किए हुए हैं लूसिड के साथ, एपेक्स भी किए हुए हैं, मैं कई दफ़ा कहता हूँ, क्योंकि आपके कनेक्शन 2 ऑन है और आपका डेटा फीड आ रही है, कई दफ़ा एक से फीड आई एक से नहीं आई, वो डिस्कनेक्ट हुआ था, आपने एक तो क्लोज कर दिया, टेक प्रॉफिट क्लोज नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं लगा हुआ क्या, वो ट्रेड चलता रहा। अब आपको 2 ट्रेडो वेट की भी विंडो खोल के देखनी पड़नी है यार। मैं ये कहता हूँ अगर शादियाँ करें ना एक ख़ानदान के अंदर ही करें कि भाई 5 की 5 हो जाएं, या दूसरी 4 साढ़े को लेके नहीं संभाली जाती दाढ़ी तो पता लग रहा है 5 लेने ये बात तो नहीं पहली ने मार दोगे ना। हाँ ये आप ठीक है। और सऊदी में ऐसे होता है ना, सऊदी ही करते हैं ना, 4 होती है ना, एक को डबल कर दे और 5वीं दे दे, फिर आगे एक कर सर जी सवाल है हाँ आपसे, जी। ध्यान से निकल जाए। मैंने लूसिड में EAPA कर लिया, हमने कंग्रेचुलेशन। एक और नहीं अच्छा मैं क्या सिनेरियो मुबारक तो पहले ले लो ना, पावे कीता या नहीं अब मैं जो मुबारक दे भी के दुआ से ऐड करूंगा एवरी टाइम जो भी सर, ऐड हर कर रहा है EAPA अलग होता है, हर बच्चा पैदा होगा फिर शादी होगी, ये नहीं है कि आपने एक EA का PA किया हुआ तो आगे PA खरीद सके, नहीं। आपने राइट अवे बोनॉक्स लिया था हाँ। लास्ट वीक, नहीं हुआ ये था कि $19 में कुछ था नहीं ना? 19 का लिया, क्लियर किया ना हाँ। मैंने 18-19 में बना। EAPA उसमें किया था? नहीं PA भी तो करना पड़ता है ना। ओ यानी एक बार अगर मैंने लूसिड का एक अकाउंट EPA कर लिए, 2 और ऐड कर रहा हूँ तो वो उन उनको दोनों भी के लिए गुजारना करना पड़ेगा, उनको वो सर हर बच्चे को पैदा करके डिलीवरी दे के शादी करनी है। सर इसमें एक और क्वेश्चन हाँ जी, हाँ जी। साथ में आपने वो 25,000 अकाउंट ले लिया, हाँ कल को आप कहते हैं कि मैं इसको अपग्रेड नहीं, उसको नहीं अपग्रेड होता, किसी भी फर्म का उसका अपग्रेड नहीं होता, आपको
उसका 25 रखना है तो उसका भी 25 रखना है, उसका भी 50 रखना है। तो ये रेकमेंड करेंगे टेबल से हमारी केस में कि 2 अकाउंट एक साथ लेके अब ये बाबा जी एक ते कर लो मेरे भाईजान, एक ते कर लो। मैं उस दिन तुसी क्वेश्चन पूछा स्टाक था, मैं क्या पायन है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ नहीं है, तुसी क्योंकि क्वेश्चन बड़ा डेंजरस ਸੀਗਾ कि है की होना है, मैं क्या नहीं है ये हैप्पी भाई करते हैं, मैंने देखा है, मैं लाइव इनको देखता नहीं देखिए यार, वो हैप्पी के हाँ, I साथ know. बैठने के लिए ना उसको तकरीबन साल चाहिए, जल्दी भी बैठ सकते हैं लेकिन एग्रेसिव आपकी लाइव स्ट्रीम हर खास आम के लिए क्यों नहीं है? हर एक के लिए है। मैं तो live- कोई मैं प्रेजुडिस नहीं हूँ। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ लाइव नहीं, स्ट्रीम इनका point एनीबॉडी दूसरा कैन था। सी। नहीं नॉट एनीबडी कैन सी, ऑल द मेंबर्स कैन Members. सी। That's what I'm saying. मेरी ये तो सारे मेंबर्स के लिए नहीं कुछ पोटेंशियल मेंबर होना चाहिए जो नहीं देखिए वो फिर मेरी जाके सिर्फ फ्राइडे को मैं मुफ्त में खोलता हूँ। लाइव फ्राइडे को हम लोग चैरिटी देते हैं कि यार जिस तरह उत्ते गोश्त थर्सडे ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है ना कि यार ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ फ्राइडे खोलते हैं कि आओ यार देख लो कुछ लेना है लोड। ट्रेडिंग कैफे कुछ बताएंगे आप? अच्छा आप ट्रेडिंग कैफे हम लोग ना 3 हमारी जो हमने पार्टनरशिप की है रणबीर सिंह चौहान साहब के साथ, हमारे मीडिया मार्केटिंग वही वो जो जिन्होंने शो नहीं किया था सामने वो पिंक जैकेट वाले पिंक ना? कोट वाले ई आवाज़ पे हाँ, होते हैं, हाँ, उनके वही। साथ पार्टनरशिप की है। Right. तो वो अब हमारी सुपर एरियाज़ के क्योंकि देखें हम मेरा रोल टेक्निकल रोल है, ठीक है। उन्होंने विजन देखा, हमने ये इवेंट किया सुपर एरियाज़ वाले से 700 मेंबर आया, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। वो कहते हैं यार इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। हमने कहा यार इसको एक्सपेंड किस तरीके से किया जा सकता है। 23 और 22 को मैं कैलगरी जा रहा हूँ, मैं हैप्पी जतन और रणबीर साहब वहाँ एक सेमिनार करेंगे। मैं आपको फिर कहूँ आप पाकिस्तानी जी। पाकिस्तानी जी। पाकिस्तानी 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 90% पंजाबी इंडियन सिख कम्युनिटी है जो हमारी है, सबसे बड़ी है जो इस इंडस्ट्री में आती है। एक तो वो जियोग्राफिक भी बड़े हैं, एक वो कम्युनिटी भी विद इन दैट काफ़ी इंटरेस्टेड लेती है, दिल भी बड़ा हौसले वाले हैं, रिस्क वाले, वाले हैं, risk ठीक है। एक आपकी नेचर है ना, ठीक है। बल्ला साहब केयर ही नहीं करते, 4 महीने कहते तुम देता जी डन हो गया। ए देखो ना मैं 4 बारी सोचता यार मैं नहीं लवा ना लवा बोलेंगे। एनीवे सर 10 एक मिनट दे दो और रैप अप कर दें। एक करो एक्टिवेशन कर लीजिए 3 महीने आ ठीक है मैं आज करता हूँ सारे बिल अकाउंट पास कराना देना है ना, वो बह के या अकाउंट साड़ देंगे या किसी भी सरदार जी को बह जाना या इधर या उधर, वो मिडल वाले है ही नहीं, जिगरा रख देना ना। तो बात यह है कि एक कम्युनिटी ब्रैम्पटन में, एक कैलगरी में, एक सरी में, तो वो ये उसको वहाँ एक्सपेंड कर रहे हैं। ये ऑफिसेस कंफर्म्ड हैं, ये खुल जाएंगे विद इन अप्रैल में। दूसरा कॉन्सेप्ट ये, आप लोग कितनी मेंबरशिप दे रहे हो? $300, ठीक है। आपको अब मिल रहा है, ऑफिस मिल रहा है। हम इसको लेवल 2 पे ले जा रहे हैं। लेवल 2 पे हमने इसका नाम रखा है ट्रेड इन कैफ़े के नाम से रखा है। उसमें यह लेट्स से ब्रैम्पटन में ऑफिस खुलता है या कैलगरी खुलता है, जैसा मैटर आपको ना सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत। लैपटॉप भी हम आपको देंगे, स्टेशन लग जाएंगे यहाँ पर और मॉनिटर भी दे देंगे, कीबोर्ड भी दे देंगे, सब कुछ आपको मैं दे दूँगा। आपने मॉर्निंग सेशन लेना है, आफ्टरनून सेशन लेना है या इवनिंग सेशन लेना है। 30 की कैपेसिटी है पर सेशन की, टोटल 90 स्टूडेंट हम इनरोल कर रहे हैं, एक स्टूडेंट इवनिंग सेशन की क्या टाइमिंग है? सर जो पहले तो मॉर्निंग की अभी बन रही है 8 से लेकर 12 तक, 4 घंटे ये। 1 बजे अगला मेंटर आ जाएगा और वो आपके सामने बैठेगा और आपको एनालिसिस कराएगा। तो वो आ रहा है 8 से लेकर आपका 1 से लेकर 5 बजे तक, 4 घंटे ये हो गए क्योंकि ये सेकंड टर्म 6 से होगा न्यूयॉर्क टाइम का। तीसरा सेशन 6 बजे खुलेगा, वो आपके साथ रात के 10 बजे तक बैठे। उसमें वो गोल्ड देख ले, उसमें वो क्रूड ऑयल देख ले। आपकी क्या जॉब है? आपकी जॉब ये है आपने कुछ नहीं घर से लाना, ब्रेन भी घर छोड़ के आना है, सिर्फ अपनी तशरीफ़ लेके आनी है ताकि, और उस तशरीफ़ के हम कुछ पैसे लेंगे महीने के। आपको लैपटॉप घर लेके जाने की इजाज़त नहीं है। आप घर जाओगे अकाउंट साड़ दोगे। आपको अंडर माइक्रोस्कोपिक करवाना है। मेंटर का ट्रेड आया तो उसने करना है, मेंटर को ट्रेड नहीं आया तो आपने करवाना नहीं है। फारिग बैठा रहे, बातें करते रहें, गप्पे मारते रहें, वीडियो लगा लें, जो मर्जी करें, आपने मेंटर से आगे पीछे नहीं होना।
मेंटर स्टॉप लॉस लेता है, आपने स्टॉप लॉस लेना है, मेंटर टीपी लेता है, आपने टीपी लेना है। आपकी जॉब ये है 8 से 11, 8 से 12 आप बैठ जाओ। हमारा गोल क्या है? गोल ये है कि आपको पहले तो हम 2-3 माह तो आपको लगेंगे सीखते हुए, लेकिन जब आपके पास एक आ गया तो पाकिस्तान में कैफ़े खुले होते हैं इंटरनेट वाले कि यार आओ हमारे साथ बैठो, पर आवर चार्ज दे दो। हमने ये गली गली मोहल्ले में खोल देना। वो सिखाएंगे तो नहीं, कुछ नहीं सिखाना आपको, पेस्ट करना है ना। सर कॉपी पेस्ट है। आपको ये भी नहीं पता ये मिड की बात कर रहा है, वो कहना है ओके ये ऐसे स्क्रिप्ट ऐसे बन रहा है, रमनीक मेरा, ट्यूलिप का, जतन का। आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग 5160, स्टॉप लॉस 5163, आई एम थिंकिंग ऑफ सेलिंग हियर, बाइंग हियर। आपको इतना तो आ जाएगा यार, ना आपको चार्ट्स चाहिए, सिर्फ आपको एक सिंगल चार्ट चाहिए, उसके अंदर डॉम लगा होगा और कुछ नहीं चाहिए, कोई एरिया नहीं चाहिए, कोई मिड बैंड नहीं चाहिए, कोई रिट्रेस। वो शायद खुद देख के फिब करवा रहा हूँ, ठीक है, खुद वो फिब कर रहा है, साथ आपको करवा रहा है, ठीक है। तो आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ आइडियाज आउट देयर टू दीज पीपल हु वांट टू गेट इनटू दिस सिस्टम। तो मेरे कंप्यूटर में क्या होगा? पूरा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में कुछ भी नहीं होगा, कंप्यूटर मेरा है सर। हाँ नहीं, आई मीन जो मेरे पास है, आपके पास कुछ भी नहीं है। नहीं, जो मैं इसको ऑन करके क्यों कर रहे हैं वो, क्यों जरूरत? या फिर आप उस कैफे में जाए ना, या इधर देखिए। आपको मसला ये आ रहा है, हम आपको इतना पावरफुल 40-50 हज़ार की वैल्यू वाला सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, आपसे ऑपरेट नहीं हो रहा, ठीक है। गोल ये है पैसे कमाना, गोल ये नहीं है इसको सीखना। हमने बहुत ट्राई की, हमारा सॉफ्टवेयर अगर 100 बंदा लेता है, वो खुद कह रहे हैं, मेंबर है ना, वो कहते हैं मुझसे नहीं यूज़ हो रहा, बैठे हैं सामने, वो कहते हैं पाइन को आसान या चीज़ दसो, आसान दसो, इस तो आसान मेरे को नहीं होता। मैं क्या फिर इन्हें को वापस कंप्यूटर भी वापस ला लेते हैं, इनको तो कंप्यूटर भी नहीं चाहिए, ये आए। अब हैप्पी क्या करवाता है? अगर आप ब्लाइंडली हैप्पी के पास आ जाए ना, तो और लैपटॉप भी हमारा हो, आपको सिर्फ बाय और सेल और बाय करना आता हो ना, तो हैप्पी आपके रोज़ के 100 बनवा रहा है, ठीक है ना। तो आपको वो चाहिए, ये सीखना है कि मेरी स्विंग कितनी बड़ी है, रिट्रेसमेंट कितनी बड़ी है, एक्सटेंशन कितनी बड़ी है, क्या करना है। देखें एंड में है ये 100 चाहिए ना। तो अभी आपका क्या यार, मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा, मैं लेक्चर देखूँगा, ये आपको एंग्जाइटी भी दे रहा है, ये आपको पैनिक भी कर रहा है। मैं इसका ना टिकटॉक वर्जन बना रहा हूँ। मैं टिकटॉक वर्जन ये है भाईजान, आप आओ शॉर्ट फॉर्म में ट्रेड करो, निकल जाओ, राइट। ये मेरा विजन है कि 10-12-15 हज़ार स्टूडेंट इस तरह हो। आप 3 घंटे बैठे हो, 3 घंटे का सही। देखिए एक के लिए मेरे लिए बिजनेस मेक सेंस नहीं करता, मैंने रेंट भी देना है, मैंने मेंटर भी लगाना है, मैंने बंदा भी बिठाना है, मैं 90 स्टूडेंट होगा तो बात नहीं करूँगा। आप अपना सेशन बुक कर लो, एक भर गई है 90 की, एक और खोल दो महल्ले के साथ, ये वो भर गई एक और खोल दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्वालिटी मेंटर हो। जिस तरह मेरा बेटा कहता है मैं 8 से 11 कर लूँगा, रमनीक कहती है मैं ट्यूलिप कहती है मैं शाम का सेशन करूँगी, मैं सुबह इधर लगाऊंगी, शाम उधर लगाऊंगी। देखिए एक हम कनाडा में बिजनेस भी तो क्रिएट कर रहे हैं ना, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। कुछ हैं 4 फ्रेंचाइज वाले बैठे हैं मेरे पास, वो कहते हैं यार खोल दो बस हमें, मेंटर मेरा, कंप्यूटर मेरा, सब कुछ मेरा, हमसे फ्रेंचाइज फी ले लो और हमें अकाउंट खोल दो। मेरे पास हरनीत है, मुर्ताज़ है, मंसूर है, जतन है, ट्यूलिप है, विक्रम है, क्रूप है, हैप्पी है, मैं हूँ। आपको सिखाने के लिए ना क्या बात को हमारी बुंड लाल हो जाती है। 300 के लिए आप लोग 3000 को जानती रहे हूँ, जो मर्जी 300 की खातर आप लोग 3000 का दिमाग चूस जाते हैं। चलती रहे ठीक है, इट्स ओके, हूँ सुन लिया तो सुन लिया, हूँ की करिए यार, हकीकत ही आई है। देखो ए मेरे अंडरवेयर का हाल हो रहा होंगे, ला लो ला गल पता कि ट्रेड तुसी पाते हो, नहीं चलता रहे फिल बदी चलेगा। नो देखो गल है कि ट्रेड तुसी गलत पाते हो, फिर मैंने कहता सर ये नीचे आ जाएगी, ओ भाई मैं लैके आनी है यार, मैं देखो पंगा तुसी लिया है, तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल मैं क्यों होऊंगा? मेरा आइडिया ये था, आपको फॉलो करना नहीं फॉलो कर रहे हैं तो मेरे साथ बैठे। मैं कई दफ़ा ये होता है, एक गलती हुई, मैंने आपको नंबर दिया था, एक 3 दिन पहले आप देखोगे मैं 90 पे बैठा था, एक नंबर दिया था, मेंटर दूसरे रूम से आता है, दूसरा मेंटर कहता मैं तो 80 पे जा रहा हूँ। मेरे ग्रुप ने जो मेरे सामने बैठा हुआ 80 कर दिया, जिसने 90 लिया था 10 पॉइंट लिए, जिसने 80 लिया था स्टॉप लॉस लेना पड़ा। क्योंकि यार होता ही है कि आप अगर मुझे देख रहे हो ना तो मुझे देखो, हैप्पी को देख रहे हो हैप्पी को देखो, रमनीक को देख रहे हो रमनीक को देखो,
एक को फॉलो करो। आप देखो यार, मैं इसके साथ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हमने आपकी ना बात पता क्या है, आपको इस वक्त में 3 साल 3.5 साल से सिखाते आ रहे हैं और आप लोग कामयाब नहीं हो रहे। बड़ी फ्रैंकली बात है। आप कहते हो यार राफे साहब ने तो हमें हर चीज़ सिखा दी है लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। आपको क्यों ना उतना ही काम करवाया जाए। सर टू मेनी थिंग्स है ना, आप जैसा ब्रेन होता बंदा कर लेता है यार। मैं हम सर लोग एक कितनी सिंपल सी चीज़ें बात भूल भी बताता जाते हूँ। हैं। 2 दिन की सर बात जी है। आप जो 4 एक यहाँ साहब बैठे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। हाँ, वो उन्होंने 4 अकाउंट एक दूसरे को उड़ा दिए पास के। ऐसे? क्यों उड़ाए उन्होंने? कि वो आपको भी सुन रहे हैं। नहीं नहीं, अलखानी साहब है, मुझे पता है। अच्छा, मैं अच्छा, गैरदी की लड़ है सामने क्या देना। यहाँ बैठ के लास्ट सैटरडे मैंने क्या कहा था, मैंने कहा पाइन पे आउट ले लेना। यहाँ बैठे थे, अब मैं पे आउट लूँगा। मैंने कहा मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर हैं। मुझे आपकी मेंबरशिप से भाड़ में जाए आपकी मेंबरशिप। अगर आपके पे आउट नहीं ना आएंगे, देखिए मेरी बात सुनो सर, तुसी लिया ना भाग जाएं। 1 महीना लाओगे, 2 लाओगे, 3 तो बाद भावें तुसी सॉफ्टवेयर खरीदिया होवे या भावें तुसी सॉफ्टवेयर लीज कर रहे हो, तुसी छड़ जाओगे। तुसी कहोगे यार ये कम नहीं है, मैं कर रहा है सिंपल काम। हाँ जी ये स्टार्ट कब हो रहा है और इसके चार्जेस आप कितने? सर मोर $50 ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप मेरी है। ठीक है, लैपटॉप मेरी है तो फिर 300 को जा रहा है 350 में। हालांकि क्योंकि अब आपको मैं कनेडियन ही लूँगा ना, इन पर्सन है ना ये। अब यूएस वाला बंदा तो नहीं आके बैठ सकता ना, तो मेरा तो तो लेकिन जो हम पहले पुराने मेंबर हमारा क्या था? सर आपको डाउनग्रेड करके लैपटॉप आपकी है ना, तो आप आ जाए करें, कौन सा सेशन पकड़ेंगे। अच्छा, मेरी बात सुने ना, अगर यहाँ पर भी मुझे बदलना पड़ा तो यहाँ मैं 3 में डांटूंगा ना, एक सुबह एक दोपहर एक शाम। मैं ये मैं चाह वही कह रहा रहा हूँ हूँ कि जो पुराने मेंबर हैं सर। आपके देखें फ़र्क ये कब तक आ रहा है है? सर, मोस्ट लाइकली मई में लॉन्च हो जाना है। मई के अंदर अंदर हमें सिर्फ देखिए मेंटर्स रेडी हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ विंडोज़ के डेस्कटॉप चाहिए, बिजनेस प्लान सारे सुन लें, सारे खोल सकते हैं। इतनी बड़ी मार्केट है और हम 4 सिटीज़ में ये खोल रहे हैं। इंडिया में जाके 4 सिटीज़ की भी प्लानिंग हो गई। इंडिया में 4, क्योंकि अगेन बहुत बहुत बड़ी मार्केट है, मार्केट बहुत ह्यूज है। तो और अगर आप इंडिया में मेरे साथ बैठ के कर देंगे तो मैं आपसे ले लूँगा $100 महीने का। इंडिया का वीज़ा लगवा देंगे आप? मैं नहीं बिठा पाया। इंडिया का वीज़ा लगवा आसान कर देते हैं। सर जी 2 छोटे हाँ जी, सवाल हाँ जी, दो दो छोटे सवाल हैं। हाँ जी, जो आपने जो बताया ना विंडो 4 आवर्स हाँ। का, तो उसमें कोई लिमिट रखेंगे जिसके मिनिमम इतने बन जाए? नहीं नहीं यार, देखिए हमारा गोल ये है कि एक सेशन में आपके $100 तो बने यार। $100 दैट मीन कि आप फोरकास्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट करें कि 2000 तो महीने यार का 2000 नहीं बनता, 100 का मतलब मैं 10,000 देखता हूँ। यानी आप या 5 अकाउंट लगाओ ना तो 5 यार, अकाउंट मिनिमम 2000 है। अगर एक इंसान हमें 350 दे रहा है तो यार 2500 कनेडियन तो लेके जाए यार। तो मैं तो बल्कि उन्होंने अंदर से क्या ऑफर डाली है, आप फीस भी ना दो, 3 माह आप मुझे फीस दो। अगर तो मज़ा आ रहा है तो करो, नहीं मज़ा आ रहा है ना तो आप अपने पे आउट का 50% हमें कंसल्टेशन फ़ी में दे दो। ये देखो, अब आपसे फ़ीस भी नहीं लेंगे। आपके पास भी इंसेंटिव है, मेरे पास भी इंसेंटिव है। आपके पास है कि यार अगर फीस नहीं है नहीं, लेकिन ये 3 भाई ये ना हो कि हम पहले दिन ही बैंकरप्ट हुए हो, आपको 3 महीने की फ़ीस तो पकड़े ना। तो भाई ऐसे तो नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं, शेख हैं, पक्के हैं। वो 3 महीने की फीस जैसे आपने मुझे $1000 दे हेड देनी है, देनी है ना, 1000 दे दी, आप बैठ गए बिल्कुल। यार। 3 महीने में कुछ रिजल्ट तो आ जाएगा ना। मैं कहता हूँ अगर 3 महीने में एक पे आउट भी आया तो आपका पूरी की पूरी फीस रिकवर हो जाती है। ठीक है, देखो तुम कितनी अच्छी है, कितनी इजी चीजें लेके आ रहे हैं। देखिए हमने देखना था रश की ना कहा। नहीं रश की बात नहीं, हमने इसको स्केलेबल मॉडल कहते हैं। जब करते हैं ना स्केलेबल होती है। नंबर 1, आपका बिजनेस 1 मैन शो नहीं होना चाहिए। राफे भाई नहीं है तो बिजनेस नहीं कोलैप्स करना चाहिए। आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि नहीं, हम लोग सिस्टम डिज़ाइनर हैं, हम लोग सिस्टम्स इंजीनियर हैं, राइट। हम लोग उसका देखें 3 साल लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया ना, अब सिर्फ इसको रेप्लिकेट करना है। आप आओ, ट्रेड करवाओ, आप हमारे आप मुझसे फ्रेंचाइज ले लो। आपको यार ये भी बिजनेस अच्छा है, फ्रेंचाइज बाय कर लेता हूँ। स्कूल का स्कूल खुल गया, मेरे 90 स्टूडेंट लग गए, दिहाड़ी भी लग जाएगी, काम भी हो जाए। सिर्फ मेंटर की ये जॉब है कि 3 मेंटर्स मिनिमम चाहिए। सुबह वाला सेशन, दोपहर वाला, अब रात को अब ट्रेड नहीं आता तो ना हम मार्केट मूव करते हैं ना आप करोगे। आप एटलीस्ट ये तो जानो कि यार बंदा मेहनत कर रहा है, वो लगा रहा है, $100 तो बन जाएगा, राइट। तो मेंटर की चॉइस होगी, अगर मैं कोई चॉइस करता हूँ कि मुझे इनसे सीखना है। नहीं देखें पता क्या, मैं अभी तक तो हमारे एग्जिस्टिंग जो मेंटर कौन है, आप कहो यार मैंने आराफे आपका मेंटर बनना है,
मैं ये चाहता हूँ भाईजान, आपका ईए है, चेक बॉक्स, आपका पीए है, चेक बॉक्स, आपको मेरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है, चेक बॉक्स। ये मेरी क्वालिफिकेशन होती है। इसमें इनके ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड तो नहीं है। ये भाई कहते हैं मैंने ईए कर लिया, मैंने पीए कर लिया, अब मैं किसी को सामने बैठ के ना ट्रेड आपका सॉफ्टवेयर सिखा सकता हूँ। आ जाओ यार, जॉब भी मिल जाएगी। हम $20 देते हैं पर आवर पर मेंटर को। ये इनकी एक स्टैंडर्ड सैलरी है, क्योंकि वो खुद भी तो ट्रेड कर रहे हैं ना। हम कहते हैं यार चलो तुम्हारे घंटे के लिए ना, यार ये तो अब रणवीर साहब बताएंगे। ये मैंने सिस्टम डिजाइन, हाँ जी, वो सारा कुछ सारा टेक ओवर वो कर लिया, सब कुछ वो कहते ने मैनू छड़ दियो। हुण मैं इत्थे ला के ना, मैं घर करों एक राफे कटना है, हर घर च एक राफे दे नाम दा ट्रेडर होएगा। तो वो कहते ने मैं और सर वो 26 साल तो साउथ एशियन फेस ने, लाइक आई मीन यू नो हाउ मच बिग, 700 बंदा इकट्ठा कर लिया सी। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ नहीं नहीं सर, तो साढ़े मैं कहने का मकसद है कि उन्होंने ना बिजनेस का पता है, असि टैक्निकल लोग हैं, सानू ट्रेडिंग का पता है। वो कहते यार गिव इट टू मी, आई विल मेक दिस ए नंबर 1 कंपनी। तो अब इसमें आपका क्या फ़ायदा? अब हमने इनको ये प्रॉब्लम्स प्रेजेंट की हैं कि यार हम जितनी मेहनत हम कर रहे हैं ना, और जितनी टोई हम रगड़ रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपके पास ये पिस्तौल आ गई है और आप चलानी नहीं आ रही, और अपने आप को ज़ख्मी करी जा रहे हो। इधर चला देते हो, इधर गोली लग जाती है, इधर। मैं कहता हूँ यार छोड़ो, आप छोड़ दो इस सारे काम को, ये आपका काम नहीं है। जो एक्सपर्ट है ना वो ख़रीदता रहे सॉफ्टवेयर, हमने आपको लीज पे भी नहीं देना। छोड़ दो, बंद करो यार ये लीसिंग लूसिंग सब कुछ बंद करो। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो सॉफ्टवेयर ख़रीद लो हमारे से 5,000 का। अगर आपको नहीं करना ना, मेरे सामने आके मैं कर रहा हूँ, बस वो करते कॉपी करते रहो, आपके बन जाएगा, मेरे बन जाएगा। हाँ, तो बात ये है कि एग्जैक्टली ये छोड़ दो कि मैंने SRES देखना है, मैंने मिड बैंड देखना है, मैंने ओवरबॉट देखना है, मैंने मेंटर का काम है, वो खुद ही देख रहा है। हाँ, वो कह रहा है यस, एक विजन से। कौन सा सेशन कवर करेंगे सर मैं तो अपना वो देखें, मुझे उन्होंने हायर किया हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे सैलरी भी देते हैं, मैं अपना ट्रेड भी करता हूँ, लाइव भी करता हूँ, फंडेड भी करता हूँ। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में विल लाइफ टाइम के साथ जुड़ा हूँ। एटलीस्ट मेरी कमिटमेंट नेक्स्ट 5 ईयर्स है। मैं सुबह आता हूँ 9 o'clock से लेकर 2 बजे तक, और साल में मुझे 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, और मेरा ये काम है। पेड होती छुट्टी? ये पेड है। अच्छा है वो गल की थी मैंने इत्थों मैंने जुगत याद आ गई, कराची की है ना, वेट करो, फैसलाबाद दी जुगत सुन लो। एक बंदा कहता यार मीनिंग कि ਉਹਦਾ ना ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, सारा फैसलाबाद तो ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਜੰਟ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਰ ਲਗੇਜ ਕਿੰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਗੇਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ यार ਇਹ ਦੱਸो लगेज कितना अलाउड है। फैसलाबाद बंदे पंगा नहीं लेना करेंगे। तो मेरी जॉब सुबह है, देखिए आपको हम वहाँ लेते हैं, जिसने सॉफ्टवेयर ख़रीदा हो ना $150 लेते हैं हम यही काम का, सामने बिठा के। तो आपको एंटरटेनमेंट भी दे देता हूँ, म्यूज़िक श्यूज़िक भी, तो बाकी सारा जो है ना। तो ये है सर। यू बिलोंग फ्रॉम फैसलाबाद। ऑनेस्टली मैंने अपनी लाइफ में जितने भी फैसलाबाद के दोस्त देखे हैं या कम अक्रॉस हुआ हूँ, दे आर ऑल वेरी जॉली। और यार पता है क्या, हम यार ऑलरेडी स्ट्रेसफुल जॉब है, लाइक ऑलरेडी स्ट्रेसफुल जॉब है, इसके अंदर मैं इसको नहीं रखेंगे आप तो जल्दी ये काम ख़राब हो जा रहा है। तो हाँ जी, हैप्पी टू ट्रेड की एक बार जिक्र किया था कि 2 हफ्ते वेट करो, 1 हफ्ते गुजर गया, वो क्या चीज़? क्या चीज़? 2 ट्रेड अ डे Happy to trade। वो क्या था? हैप्पी टू ट्रेड आपने मुझे कहा Happy to था आने trade वाला है, आपने 2 वीक्स का किया था वेट ना? करो। मैं ये कह रहा था कि 2 हफ्ते रुक जाएं, हाँ। तो हमें इस सिस्टम को इस्टेब्लिश कर लें। करेंगे। हाँ, तो ये वाला जो था इसकी बात यही सिस्टम आपको दे रहे थे ना। सारे इंशाल्लाह ताला ये बड़े लोगों को हम रेफर करेंगे। देखिए मेरी बात, आप उसको रेफ़र करोगे ना जब आपके पैसे बनेंगे। यार मैं आपके पैसे नहीं बनवा सकता। देखिए मगर एक और क्वेश्चन है, कुछ लोग जो हैं वो हैमिल्टन है जहाँ भी हैं वो आ नहीं सकते, तो कनेक्ट करें ऑनलाइन, करें। तो उस सेशन में मुझसे आधी प्राइस ले लें, घर बैठ के कर लें। आप इन पर्सन कर रहे हो, आपकी अपनी लैपटॉप है, 200 से घर कनेक्ट कर लो यार। देखो आपको ना सॉफ्टवेयर चाहिए, ना आपको सीखना है, आपने सिर्फ लैपटॉप मेरे साथ खोलनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये लड़का है, हमने इससे आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये टिकटॉक पे जाएं, हमारा चैनल देखें, लोग कितने क्रिएटिव होते हैं।
और मैं उस क्रिएटिविटी के ना अप्रिशिएट करता हूँ बंदे ने क्या किया। इधर आए, आपने इस इन्फ्लुएंसर को ऑनलाइन, ये पीछे स्क्रीन पे चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा बल्कि मैं इधर लगाता हूँ, ये देखिए। आप कहोगे यार बंदे ने ना काम कमाल का किया है। ऐसा बात है? ये नहीं पता, उसने हमारी आके वीडियो की, उसने कहा भाई ये तो काम ही बड़ा आसान है। उसने आके ना सिग्नल ग्रुप खोल लिया, बंदा पकड़ा, गोल्ड का एक ट्रेड देता है $100 महीने का लेता है, एक ट्रेड देता है रोज का। वो चले ना चले, वो कहता है भाई ट्रेड डन, बस खत्म, घर जाओ। या मेरा काम रह गया है कि आपके घर आके सिर्फ वैक्यूम करना रह गया, बाकी हमने यही रह गया है। और दसो की नहीं करते ऐसे यार, ऑफिस आपको दे दिया, किचन आपको दे दिया, टॉयलेट आपको दे दिया, पानी दे दिया। सर जी मैंने सिर्फ इसलिए पूछा है हाँ। कि कुछ कॉलीग्स हैं, को वर्कर हैं, हाँ जी। if he or she they ask, right, is it possible they can turn on from home and they can do it, and how much the charges would be 200? We are thinking 200, Okay. 199। Okay. तो अगर आपने घर से करना है उस सेशन के दौरान तो 199 है। अगर आपने इन ऑफिस आके बैठना है मेरे साथ तो ये काम आपका 349 में होगा। तो लैपटॉप हमारी 349, लैपटॉप आपकी 199। कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलना, सिर्फ सिग्नल मिलना है। सिग्नल चले ना चले, इट्स अप टू यू। मेंटर का आपका सेशन है। सिग्नल का भी कोई होगा कि मिनिमम इतना मिलेगा? नहीं यार देखिए, 4 पता क्या, आवर्स में देखिए कोई लिमिट? लेट्स से रमनीक बैठती है, हाँ। मैं आपको एग्जांपल देख रहा हूँ, वो फिप का ट्रेड देख रही है और आपके 2 फिप के ट्रेड लग जाते हैं और आपको वो अच्छा यार इतना तो आपको बाई सेल करना होगा ना, ये तो पता लग जाए कि हूँ ए तो मैनू ना चढ़ो चढ़ो। हाँ हाँ यस। नहीं वो देखें, अब कुछ लोग ये गारंटी भी नहीं देते कि स्टॉप लॉस रिकवर करवाएंगे, ठीक है। बाहर हर तरह का ट्रेडर बैठा है। हमने आपको ना असल में जो हमने 3 साल इस लगाया, ख्वाब बाय करो ख्वाब ना बाय करो, आपके हाथ में ये जो दे दिया है ना, ये पावरफुल बहुत है और आप लोगों को समझ नहीं आ रही इसको यूज़ कैसे करना है। इसकी पावर जो तो कर गए हैं 3% है, मुर्ताज़ है, ये सारे जो लड़के हैं जो लाख सवा लाख डॉलर पे चले गए हैं, वो तो एक्सेप्शनल है, लेकिन हर कोई इस ब्रैकेट में आता भी नहीं है। हमने आपको इसको आसान करना है कि यार आपको किस तरह हम आपके रोज़ के $100 अप्रॉक्सीमेटली उसकी एनालाइज कर दें। अब जो वर्ड आता है, हमें यहाँ मुझे लीगली बोलना पड़ेगा, हम आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे कि आपके 100 बनेंगे। हम आपको ये भी नहीं, आप अपने पैसे के खुद रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपना अकाउंट ट्रेड करते हो। हम आपको एक डेटा एनालिसिस का काम कर रहे हैं। हम देखेंगे यार ठीक है यहाँ से मेरा ट्रेड बनता है ना, हम आपको लाइव अकाउंट भी रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि लाइव अकाउंट को ट्रेड करवाना इलीगल है। ये भी सिर्फ एक आप जिस तरह किसी पॉडकास्टर को ज्वाइन करते हो तो हमें ज्वाइन कर लोगे, उससे हम आपकी फ़ीस पकड़ें। और इतनी मैंने ये फ़ीस सस्ती करते करते देखिए वॉल्यूम पे चलना है। मैं अगर आपको 2 ट्रेड दिन में भेजने हैं और आपके सही रहे तो देखिए ये कोई गारंटी नहीं है। उसने फिब कराया, 2 फिब फेल हुए, शायद आपको निकाल दे कि यार आज नहीं चला। देखिए 300 तो रीजनेबल है ना। देखिए अगर एक बंदा है, हमारा काम यह है कि अगर वो बैठा है, अब हाशिर है बेटा मेरा, वो एरिया के बगैर बाहर आता ही नहीं है। वो आप शायद 3 घंटे बैठो, वो आपका एरिया ही ना आए। ठीक है, बात ये है कि आप एरिया ही नहीं आया, वो कहेगा यहाँ घर चले नहीं है ट्रेड, आज कोई ट्रेड ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है मार्केट के अंदर है। मीनिंग कि चले जाओ, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। एनीवे उसकी एक की स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग हो सकती है, एक की स्ट्रैटेजी एरिया। अब जो मॉर्निंग वाले हैं वो ज़रा जल्दी क्विकली डन होंगे क्योंकि 9 से 11 में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होती है। आप आए, ट्रेड लिया, एक्स्ट्रा लिया, निकल गए। जो आपके हैं जरा आफ्टरनून वाले, शायद उनको गोल्ड में स्विच करवाना पड़े या नैस्डैक करवाना पड़े, नैस्डैक का फिप करवाना पड़े। अब जिस तरह हैप्पी की स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट की है, वो कह रहा है यार मैं 3 माह से टेस्ट कर रहा हूँ, $60 या $80 तो बन रहे हैं। ठीक है, नाइट सेशन, क्योंकि हमें नाइट सेशन भी चाहिए, तो वो कहता है यार 80 तो बन जाते हैं। वो क्या ले रहा है, 2 पॉइंट ले रहा हर ब्रेकआउट में। ठीक है, आपने लिए 2, 2, 4, 2, 6 और वो उसमें अगर आपके रेशो 90-10 है तो चांसेस आर के स्टॉप लॉस अगर 1-2 लगे फिर भी रिकवर हो जाएंगे। तो लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको इन पर्सन बैठ के ये डिसाइड होती हैं।
अभी ये बिजनेस प्लान है, अभी ये हाइपोथेटिकल चीज़ें, रियलिटी डिफरेंट होती है, थ्योरी डिफरेंट होती है, इसको मटेरियलाइज होके लेट्स से हम फिब ट्रेड कराते हैं और बहुत अच्छा चलता है, राइट, ठीक है, 90% भी है, अगर आपको 2 पॉइंट ही दिलवाने हो, कहते हैं ES में 2 पॉइंट कुछ कोई भी दिलवा देगा, $100 बने, आप लैपटॉप बंद कर दो, आपने अब उसमें 2 माइक्रो लगाए हुए थे तो आपके तो 10 ही बने ना, तो भाई हमने तो 2 पॉइंट दिलवाने हैं, हम तो पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं कर रहे। मैं ऑनेस्टली आज आपको कोई 100 कॉन्क्रीट% आंसर नहीं दे सकता, लेकिन इस तरह क्या होता है, हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है ना, इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि इस वक्त स्ट्रगल्स क्या आ रहे हैं, इसलिए ये लाइव कॉस्ट भी चल रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी पे हैं कि इतना महंगा सॉफ्टवेयर देने के बाद भी हमारा यूज़र कह रहा है मुझसे सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम उसको एज शेव करना चाह रहे हैं, चीज़ें करना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हाशमी साहब है ना, इन्होंने 1 साल सॉफ्टवेयर किया, इन्होंने समझ आया यार मैं सिर्फ एरिया करता हूँ, इन्होंने डाउनग्रेड कर ली मेंबरशिप, ये 150 पे आ गए, वो कहते हैं यार मुझे सिर्फ एरिया चाहिए, मुझे कुछ आपसे नहीं चाहिए, ना मैं सॉफ्टवेयर देख रहा हूँ, ना मैं मेरी एरिया के मेरी सॉफ्टवेयर के अंदर भी वो एरिया ही कर रहे थे, तो उन्होंने कहा यार मुझे तुम ना सिर्फ डाउनग्रेड कर दो मेरे सॉफ्टवेयर को, मुझे आपसे सॉफ्टवेयर स्कैल्पिंग के लिए नहीं चाहिए। हम उसको भी और रिफाइन कर रहे हैं कि यार आपको सिग्नल्स, तो सिग्नल है जी, सिग्नल ये अगला है, तो अब आपने कभी हैप्पी की क्लास में बैठे हैं? लाइव नहीं बैठे, आप कभी बैठे, कल मंडे को बैठे, क्या के देखें, आपको क्यों नहीं अलाउ, आप मेंबर हो यार, क्यों नहीं करेंगे, ऑनलाइन बैठ के बैठो, आप लॉग इन करके तो बैठ सकते हैं ना, तो लाइव देख लें ना, उसको लॉग देखें और देखें वो ट्रेड कैसे करवाता है, और शाम को रिजल्ट देता है रोज़ के, तो 750 को नहीं तो वो डिफरेंट था, बैठे रहो हाँ मैंने अटेंड किया सारा लाइव, आपने देखा फ्राइडे वाला देखा, तो उसने बल्कि नंबर दिए थे कि 800-900 से शॉर्ट करना, 750 तक बैठना, वो भाई अब जिसने कहा है कि भाई ये भाईजान तो तुक्के लगाते हैं, भाई आके देखो चार्ट कितना पढ़ते हैं, नहीं बड़ी देखिए, एक प्रेशर होता है, एक प्रेशर ये होता है कि आप देखो, आप सिग्नल भेज दोगे ना, आपको नहीं पता कि उसने EA लगाया है, PA लगाया है, लाइव लगाया है, कॉपियर लगाया है, क्या किया है, आपकी एक जिम्मेदारी होती है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि यार मैं जो डिसीजन दे रहा हूँ शायद इसमें कितने बांधे हुए हैं पीछे, तो आई सेड होपफुली देयर इज नो मेजर लॉसेस अलोंग द वे, सो ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नो टाइम, प्रॉब्लम, और आप भी फैमिली वेट कर रहे हैं, नो वरीज, थैंक यू, ओके, सोते तो है ना, एक दफ़ा ही सोएंगे, मैं तो अपनी कवर भी बुक करा दी है, मैं अपने मेरा स्टेटस देखा, और नहीं मजाक नहीं है, देखो मेरी गल सुनो, मैं पता क्या तबीयत है ना, तो कितने नहीं जा रहे, नहीं हम और जिन्ने मैं गुनाह नेक बंदे जानते ने, गुनाह वाले नहीं जानते, नहीं चलते, तो फिर दैट मीन कि यू गोना बी हियर, नहीं मेरी बात हुआ ये कि ना देखें, एक फियर निकालना हो ना, मैं आपको किसी बड़ी स्टडी मैंने किया इसके बारे में कि आपके इंसान के ना फियर कैसे निकलता है, और ज़िंदगी में फियर निकलता है, अगर आपका सबसे बड़ा इंसान को फियर होता है मौत से, इससे बड़ा फियर नहीं होता, मतलब कि मैंने मर जाना, ठीक है, एक फियर था ब्रदर इन लॉ, चले यार वो फियर जा नहीं रहा था कि यार हम लोग जो काम कर रहे हैं, एक एज है 80-90 100-200 साल थोड़ी रहना है, नहीं रहना है, मैं आपको कहा 800, आपके पास सिर्फ हफ्ते महीने होते हैं, सो नहीं वो ठीक है, लेकिन सदका जारिया उस वक्त है भाईजान अगर आपके पैसे बने, देखिए अगर नहीं बन रहे ना, तो चीज़ें लेके आ रहे हैं फ्यूचर में, वो तो और ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी और ऐसा कौन सा बिजनेस है सिर्फ आपका टारगेट $100 का है, सर बाकायदा बुक हुआ है, कथा भी लग चुका है, नेम भी आ चुका है, रियलिटी पता है, देखिए मैंने इतना क्रेजी गया हूँ, इट्स ऑल दे स्टेक्स, देखिए इधर के लिए इधर ये है क्योंकि बच्चों ने मेरी कवर पे जाना है, पाकिस्तान कहाँ जाते रहेंगे, वो यहाँ से मैकडॉनल्ड चले जाएं, बड़ी बात है, तो बात ये है कि दिस इज़ ए प्रॉपर ग्राउंड, रीज़न क्या थी, ये $9,000 आपको मरने की कॉस्ट आती है कनाडा में, याद रहे $9,000 पे आप मरते हो, जब आप मरोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने 3 दिन रोना है, फिर हाथ झाड़ के देखें, जैसे ही आप किसी की मैयत पे जाते हो सबसे कहते हो ओ माय गॉड जूतों पे कीचड़ लग गया यार, देखें रियलिटी ये है, आप कहते हो यार मर गया तो चला गया है, खाना शाना खाओ, खाना खोलो तो फिर गप्पा लग रही होंदियां, सब कुछ होंदा है, तो तुसी देखो मैं क्या यार 9,000 है ना, ऐ तो रिजर्व करिए ना, ऐ तो बुक करिए ना, इस तो पहले प्लॉट ही महंगे हो जाना, तो मैं बिजनेसमैन है, मैं 9,000 तो बुक कराया, ये जो आप करवा रहे हैं, अल्लाह करे सबसे
ये आपकी $100 फ्यूचर बाइंग कर रही है। हाँ फ्यूचर मैंने आप ट्रेड डाल दिया ना तो $100 आपका टारगेट सिर्फ हाँ। एवरेज 5 अकाउंट कहना आसान है मंडे मॉर्निंग का ना 100 निकालते निकालते जरा अखां बाहर आ जाती हैं कि यार ये हमने कहाँ से ट्रेड भी नहीं लगवाएंगे फाइव आपको, करें, भी टाइम नहीं फाइव लगवाएंगे करें, हो गए। शायद। 2 जल्दी पॉइंट फारिग करा दिया करेंगे। तो जब आपको ये फियर खत्म हो गया जी। कि यार मारी जा रहा हाँ, है फिर नहीं, नैस्डैक ये क्या fear ईएस क्या सिल्वर क्या जब गोल्ड क्या हर एक जीरो पे आनी है तो फिर फियर कैसा, right? We gotta go when time comes, right? अब इसे ऐसे पागल के साथ मुकाबला भी कोई नहीं करता वो कहता यार इसको मरने से भी पहले ही मरिया ए, है। पहले ही मरिया है, पहले ही मरिया अपनी की मारना है। इन्हों की मारना है इन्हों तो छड़ दे हो यार तो एनीवे एंजॉय करो Thank you, sir. बहुत शुक्रिया। टेक केयर जज़ाकल्लाह। एंजॉय ईमान अल्लाह। तो बंद कर दिया? हुण बंद कर दियो सर ये जो हम लोग जो सऊदी अरेबिया से आए थे ना सऊदी अरब हाँ जी हाँ जी तो हम लोगों ने क्या ऑब्जेक्शन खोली थी कहता है नो मेमोरी कार्ड कैन नॉट हाँ। रिकॉर्ड नहीं वो ऊपर